colleges. So we all now have our own LMS. So every college, whichever colleges I visit as external and as examiner and as, let's say, expert in the research labs and all, what I find is there are two things according to NEP that has changed. One is LMS. Every college has the LMS now, and the teachers now use LMS for their attendance. The students enter the class using the biometric, the retina being studied, and then the attendance being recorded. And then the teachers can enter the marks. Teachers can upload the contents on LMS. They can conduct the test on LMS. So everything is happening through the LMS. The teacher's task has really been reduced. So if you happen to look at LMS anyway, please do attend it. Then provide technical support and learner guidance. After implementation, we are going to do the training part. Example now. So every now and then we have been talking about example of every step. ADDIE, ADDIE. So I is here and the example is launch the course online. So once we are satisfied, we have done our job, we have been able to design it, the prototype, the sample of it, the beta version of it has already been discussed with the colleagues, with peer to peer and the students. Now there's time to launch the course online. So launch the course online is implementation. Implementation in dictionary meaning would be once we have done the thing, we have developed the software, now we have to implement that. So we are launching the course online with weekly live sessions and discussion forums. So these are the steps that we are discussing. So implementation, and let's see what E is, and then we see how it fits everything. So evaluation is E. So purpose, measure effectiveness and improve. Now, definitely, once you have uploaded the material, once you have made it online, अब आपका काम खत्म नहीं होता है. You will have to measure the effectiveness. You'll have to use the metrics and you'll have to evaluate how effective is my system, how effective is my material and improve. So key activities in evaluation is formative evaluation, ongoing feedback during the design and development. We can always have the feedback during design development phase of AD. Summative evaluation, assess outcomes after implementation. This point is important. Collect learners' feedback, performance data, and analytics. As I said, हमारे time में we used to wait for 6 months or a year. But now, if we are having the LMS, I have gone to one college, one university, Sharda University, Agra. Then I have been to one college in Ghaziabad, IMS Ghaziabad, and there we saw after every session that we take, instantly, after every session, the feedback goes to the individual teacher. Your class has been 8 on 10. It has been 7 on 10. These have been the problems, and the students, if happy, you get that they are being shared. So collect the learners' feedback, performance data, analytics. Example of evaluation is use surveys, exam scores, engagement metrics to refine the course. So once you get the feedback, keep on refining the course, your SWAYAM, your MOOCs that you have already developed keeps on improving in a cycle. So Eddie, this was we are talking about Eddie. So how Eddie fits digital pedagogy? Now this is a question which is important. Now talked about Eddie and last half an hour we've been together. So analysis, understand digital readiness of learners. So if you remember, I said we studied the problem. So in analysis, we understood the digital readiness of learners. Are the learners ready for it? Design, incorporate digital tools, AI tutors, AI agents, gamification, development, build multimedia rich modules. अच्छे से presentation बनाना है with multimedia. Implementation would deliver online platforms, deliver via online platforms. उसके बाद we are delivering it via online platforms. Evaluation using learning analytics dashboard. So as I said, Tableau, if you happen to do Tableau or a Power BI, course kahin milta hai, kahin session milta hai, please attend that because you're going to learn how you can create dashboards, how you can create visualization tools. Because as I said, understanding a picture is always easy to rather than understanding 1,000 words. So first model, Eddie.
Second model, we are going to discuss about SAM, Successive Approximation Model. If I can just request the coordinator, sir, sorry, I'm disturbing you again and again. Just please let me know if I'm audible and visible both so that I can move with energy. So Yes, sir. visible and audible both, sir. Visible. Audio is there. Okay, sir. Thank you. Right. So we are already 40 minutes into the session, and we'll have last 15 minutes for the face-to-face interaction also. We are going to discuss things. I'm going to tell you about my discussion, my problems, and I'm going to ask you about your problems. So, moving ahead, SAM, Successive Approximation Model. Either we can choose the ADDIE model. We can also choose the SAM model. Definition for SAM would be an interactive and iterative, sorry, not interactive, the iterative instructional design model that focuses on rapid prototyping and continuous feedback. So this is going to be iterative. Iterative is, if you pronounce it as a iteration or iteration. Now, I have the habit of calling it iterative. So an iterative instructional design model that focuses on rapid prototyping and continuous feedback. It's like a builder going for a housing society. So how you are going to convey that we are building it? They build a model out of the entire complex. And that model you would find, you go to a builder and you find a prototype there. And he's going to explain you on the prototype, we are going to do this, and do this. So similarly, Sam uses the prototyping, rapid prototyping tools. We're going to talk about tools. क्या tools हम इस्तेमाल करेंगे to develop it. How we are developing it, we'll discuss at a later session, in the later part of the session today. So those from computer science background, they would immediately say, sir, that was a waterfall model. This is the prototype or iterative enhancement problem. So iterative instructional design model that focuses on rapid prototyping and continuous feedback. What would be the philosophy? Instead of rigid step-by-step process like Eddie, a rigid step-by-step process, Sam encourages successive approximations, refining the design through cycles of testing and improvement. So, suppose a developer is developing the rapid prototyping. What he'll do, he'll develop a prototype, and then we will call the person concerned, the stakeholders, and show this is the model I am working on. So once you see that model, you would say, I want some slight changes in the model. And then the model is refined. And then again, he'll, after 10 days, a week or 10 days, 15 days, he's again going to call you. Sir, I have made certain changes to the prototype. Now you can come and see. So this keeps on moving in an iterative manner. Iteration 1, 2, 3. And finally, the uh, I would not say the customer, the teacher would be satisfied. Yes, this is the content I want. So the philosophy here is, instead of a rigid step-by-step process like Eddie, Sam encourages successive approximations, refining the design through cycles of testing and improvement. You keep on testing and improve according to the user's feedback. Best for projects needing flexibility. It is best for projects needing flexibility, quick turnaround, or heavy stakeholders involvement. So if you just talk about agile computing, those who understand about agile marketing, agile computing, agile concepts. So agile is, you need flexibility. You need to be changing. ऐसा नहीं है 6 महीने के बाद ही change होगा. You will never tell the person 6 महीने के बाद ही change हो सकता है. I'm not going to change this now. So flexibility in changes, quick turnaround, and heavy stakeholder. So the stakeholders are heavily involved in the process, and you see Netflix, you see Hotstar, you see different kinds of social media sites. You see the contents are changing every now and then based on the feedback. So it's like the cutthroat competition that is forcing them. अब ऐसा नहीं है, नहीं मैं तो 3 महीने के बाद ही वेबसाइट बदलूंगा, अपना पेज होम पेज बदलूंगा. It's like just as my competitor is doing, I'll be doing it too. So Sam has basically two versions, Sam Basic and Sam Extended. So Sam Basic, we are all adopting these days. Preparation phase, gather background information,
define goals, identify the constraints that can come on us. Iterative design phase, as I said, design the prototype, then review the prototype, and then keep on repeating, keep on coming back to the meetings. And then finally, the implementation phase would come, deliver the final product after successive refinements. So keep on refining the system until the user says, yes, I am satisfied with the system. This is what I was looking for. So somewhere he would say, yeah, yeah, ruk jao. This is what I really wanted. So the SAM process is going to be very handy in the design of this. So this chart is basically the comparison between ADDIE and SAM. Approach is ADDIE is linear, where SAM, as I said, is iterative, is agile. According to the cutthroat competition, the SAM is working. Flexibility, less flexible, and SAM is highly flexible. Speed, ADDIE is slower, more formal. SAM is faster, rapid prototyping is involved, stakeholders' role limited after analysis. So, after, let's say, stakeholders have the analysis, they will now sit back and they will meet after 3 months, 4 months. But here you see it's active throughout design and development. Stakeholders are active throughout the design and development. And best use case, large scale formal training programs. So large scale formal training programs, they're using ADDIE, and dynamic projects needing quick iteration, they are using SAM. So we'll take examples on generative AI tools very quickly. We are going to take that also. It's 10:50 according to 10:48 according to my mobile. So example in practice. Now forget about the last 40 minutes. We are going to start afresh, and we'll take the you make the word introduction of generative AI apart from artificial intelligence, and there we'll see the difference between them. So imagine designing a blockchain training material for corporate learners. So suppose there are corporate learners. We are going to design a blockchain training module. Blockchain is a latest buzz. AI gives you accuracy, whereas blockchain is giving you the security. Hacksters आपके system को tamper नहीं कर सकते. We are using blockchain. अगर मैंने smart contract बनाकर अपनी book upload की है, no one can tamper that. So similarly about the banking account. So imagine designing a blockchain training material module for corporate learners. Let us take this example. And ADDIE, what it will do? ADDIE will analyze the needs, design the course, develop the material, implement, and then evaluate. But Sam, you would start with a savvy start workshop, build a prototype material, say a gamified blockchain simulation, test it with the learners, refine based on the feedback, and iterate until it is polished. So it's like making a small type of a simulation, showing it to the user, and the user will say, I want some changes. And then in further iterations, this blockchain training module would be launched using SAM. So, so far, we never talked about AI. We never talked about generative AI. We were talking about how NEP 2020 advocates the use of digital pedagogy and instructional design, and how are they important to us. So, moving ahead, AI is transforming digital pedagogy and instructional design by enabling personalized learning. As I said, Tare Zameen Par, the kid might be very slow in learning, might be having some problems. So if we can have personalized learning, automated routine tasks, creating adaptive content, and providing real-time analytics to improve the teaching effectiveness. So all these are the pillars of this personalized learning, automated routine tasks, creating adaptive content, the content that we need according to the scenario of the market, according to the scenario of the colleges, education, providing real time analytics to improve teaching effectiveness. So, this is going to be interesting. AI. When AI was first introduced by Alan Turing was scientist, and what Alan Turing did was Turing. You can search the name on Google. Alan Turing, and Alan Turing, what he did was he designed a smart machine, and what he did was he put that smart machine in one room and the human in the other room.
and gave the same set of questions to the smart machine and to the human. And then it was evaluated whether the smart machine that Alan Turing has developed could match the human or perform better. And that was the first test that Alan Turing did. So Turing is a name that you would find in so many clubs that we are having, in so many books that we are reading. So moving ahead, how AI supports digital pedagogy. We have already been in 40, 50 minutes. We have already been talking about personalized learning. AI tailors content to individuals' pace, style, and needs. Adaptive assessments, intelligent systems would adjust difficulty based on learners' performance. अब टॉपर वाले assignments आप एक average student को दोगे तो obviously the results would be bad. So adaptive assessment according to the student's capability. This is where AI is helping. Intelligent systems adjust difficulty based on learners' performance. Then the engagement tools. Chatbots. We are comfortable with chatbots now. Every now and then, whenever you're doing something, buying something from internet, there's a chatbot which comes and pops up. Sir, may I help you? So chatbots are being used, gamification engines are being used, AI tutors provide interactive support. Then accessibility. Talk about accessibility, AI-driven tools, speech to text, translation, adaptive interfaces are making learning inclusive. Alexa. Alexa is a household name now. Alexa, what is 2 plus 2? Was one kid asking the Alexa, and the mother comes in and gives a nice scolding to that kid. What are you doing? And switches it off. So we are using Alexa in every walk of life right now. So accessibility, we are going to talk about AI driven tools. The next 15, 20 minutes would basically be on these tools only. So quickly moving ahead, evidence-based teaching, AI analysis, large data sets to recommend teaching strategies that works the best. So the best part about AI is AI can work on large data sets. बहुत बड़े डेटा सेट्स पे एआई काम करके आपको एक्यूरेटली रिजल्ट देता है। यही चीज आप अगर कैलकुलेटर से करने बैठते हैं, आप मैनुअली करने बैठते हैं, टेक्स टाइम। वन गुड एग्जांपल आई गिव यू ऑल्सो, which made every Indian proud, Chandrayaan landing. So Chandrayaan landing on the moon, it was made possible because AI was the scientists were able to use AI perfectly on large databases. Other countries failed, but Indian scientists were able to do it. So how AI enhances instructional design then, the content creation. This content is the word which Gen Z is using. And Gen Zs are crazy about content creation. So AI can generate training videos, quizzes, simulations quickly, a 30-minute video in 10 minutes. AI. Now we are all using PPTs. Suppose I come to know I have a session after a half an hour. I can quickly make it using AI tools. I'm using Gamma, I'm using Claude, I'm using so many tools. Chat GPT we are using. So AI can generate training videos, quizzes, simulations quickly. I'll talk about the pros and cons also. I'll discuss about why it is important and what would be the what would be the dangers involved. So AI enhances instructional design and automation. Routine tasks like grading, feedback, and scheduling are streamlined. Now, AI-based LMS that I was talking about, they are creating the timetable. In most colleges and universities, timetables are generated by your LMS. Then the feedback and grading, they are all done by the LMS, giving the time to the teachers to do the research part. And never before in India, we have seen so many SCI Scopus papers being filed. Never seen so many patents and copyrights and designs being filed. This is because now the teachers, with the help of these LMS and AI tools, now they have the time to do it and take it to a next level and next trajectory, in fact. So prototyping, AI helps instructional designers build rapid prototypes for testing, aligns with SAM model. We look at the tools very quickly. Let's 5 more minutes and we'll be talking about the tools, data-driven decisions, learning analytics, guide improvement in course design. So this analytics part, now when analytics, data science, analytics can be used in politics, parties are winning elections after elections using analytics. Why not use analytics in colleges, in learning system? Why not use analytics in LMS? So an LMS is making perfect use of analytics to guide improvements in the course design and the course curriculum. Then efficiency saves time on research, development, repetitive tasks, allowing the designers to focus on creativity. As I said, now we can focus more on the research work,
we can focus on something important. So, if you see the comparison table about traditional approach and AIN's enhanced approach, content creation was manual in traditional. It was time intensive. AI now is helping you to automated generation of module, videos, and quizzes. Static materials were there. Now we have interactive chatbots, gamified learning, plus more things. Assessment in traditional approach, fixed tests were there. Fine, हमारे टेस्ट होते थे and then we used to get that they were fixed. But now we have adaptive personalized assessments according to the capabilities of the students. Feedback, it was instructor led, delayed. I said about 6 months or a year we used to get that delayed feedback. And then in AI based, you get the instant AI driven feedback. Example I took was as soon as you end your class, you're getting the feedback your class was on how many stars did your class have, or did the class needed anything to be, sorry, was there any concern during the class, or how you can improve the next class. So traditional approach, they were basically using the linear model, ADDIE, and this one is using iterative, rapid prototyping, SAM, and the use of artificial intelligence, as we're going to discuss in very shortly. We are going to discuss that. So benefits we see on the screen is scalability. AI allows instructional design to scale across large e-learner population. So सबका साथ सबका विकास, going taking this learning to a large population. Customization, learners receive unique pathways instead of one size fits all. एक teacher सब कुछ पढ़ा सकता था, one teacher. But now one size fits all is not a theory. We are looking for customization, efficiency, faster developed life cycles, and reduced workload for educators. Continuous improvement, real-time analytics would refine the pedagogy and instructional design. So if you look at this code, before I get into, I'll take 15-20 minutes for the next presentation, which is only talking about the tools. This is going to be important. So e-learning just doesn't happen. E-learning just doesn't happen. It requires careful planning and implementation. So e-learning just doesn't happen. It requires careful planning and implementation. And that's what the last 1 hour we were discussing. We were talking about digital pedagogy. We were talking about instructional design, how they are important, which models they are using. And then we are talking about, uh, so let's just take this one. So this is one figure, which is after that, I'll move to the second presentation. You see ADDIE, analysis, design, implementation, evaluation, then SAM, design, prototype, evaluate, design. And then you see digital pedagogy framework. So there are certain frameworks, design and enactment framework, digital pedagogy and teaching skill framework, UNICEF's. So these are the different frameworks, digital pedagogy frameworks. They are being discussed, they are being taken care of while doing this AD part. So, and then you are developing, going for the design, prototype, evaluate, and then design and development using the SAM model. I'll pass on this presentation to everyone through the coordinator. I'm just stopping this part here. I'll take just 1 minute of a break, just 1 minute, and then I'll come back with the second part of it. Next 15-20 minutes we are going to have, and then 15 minutes for the discussion. Just a minute for me, sir. Okay, sir. Okay, sir.
Yes, sir, I'm back. Are we ready, sir? Yes, sir. Okay, sir. So this part is going to be interesting because we are going to talk about the tools. And it's good to see there are 332 participants now. Wonderful to address people, to deliver expertise to people who already know this and who are professors from wonderful universities. So thank you everyone for being a part of this initiative. So moving ahead, last 30 minutes that we have. Generative AI is transforming digital pedagogy by offering tools for personalized learning, rapid content creation, adaptive assessment, and immersive engagement. Educators now have access to wide ecosystem of AI-powered platforms. There is one session on ecosystem, AI-powered ecosystem. This is going to be very important. That is streamline instructional design and enhance classroom practice. So let we are going to talk about. So far, we were talking about AI. Let us talk about generative AI also. We are all, and in fact, somewhere we would see that our Excel, the word that you are using, MS Word, MS Excel that you are using, your PowerPoint you are using, they are all making use of generative AI tools. And it's not like you would say, sir, मैं तो use ही नहीं करता. Now all these tools are there right into your machines, right into your softwares that you're using. And whenever I'm going for a session and I don't have the time, I take the help of Copilot. I take the help of Meta. I'm taking the help of, let's say, Grok and getting some highlighting points, and then I can elaborate those points. So somewhere we would say that generative AI is here to stay, and we are all making use of it. So let us see how we are making use of it. So the key categories of generative AI tools for digital pedagogy. Number one, chatbots and AI tutors. ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot. As I said, I've been using Copilot every now and then. Copil Gemini, Google Gemini for education, which is helping you for conversational support, queries, question and answers, and personalized tutoring. So, as I said, teaching the student according to their personal skills. So this Khan is another product. So these are the products we are talking about: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini. Then Khan AI tutor integrated with Khan Academy for guided learning. So this is one very important tool here, Khan. Then your Pi and then your Perplexity is helping you for research and explanation assistant for students, doing the research and explanation assistance for users. And somewhere this Airtel and Geo, they have given this Perplexity for free. So this is really, we are all using this. So if you look on the second screen, lesson design and content creation. So we said we are going to create lessons, we are going to create the material content. So you see here QReport, Defet, magicschool.ai, eduaid.ai. These are the tools which are generating lesson plans, slides, and differentiated content. Then we have another tool, School AI, Brisk Teaching, Curriculum Jenny. It's automating curriculum design and adapt material to learner profile. Google Notebook LM is a AI-powered research and note organization for educators. So these are the tools, and we have already know the names. You can go to their sites and you can gather different information. You can start working on them. Now it's a time when I would focus on prompt engineering. This is the keyword here. This is the buzzword, prompt engineering. You get the chat GPT prompt, you get the Grok AI prompt, and then on the prompt, if you are able to write your question properly, what you want from the system, if you can explain properly to the system, it will do the task for you. Suppose you are generating a synopsis on smart healthcare along with the references and citations according with bibliography. If you write properly in that prompt engineering prompt, on that prompt, you will get precise answers. So it depends on how you are posing your questions, how you're writing on the
prompts. So these tools are really very helpful. As you can see, the slides will be with you. You can always go to them. QReport, Defit, magicschool.ai, eduate.ai, School AI, Brisk Teaching, Curriculum Jenny, Notebook LM, AI powered research and note organization for educators. Then we have the third category, visual and design tools. So we are all making use of Canvas. We are all making use of Canvas, Adobe Express, Microsoft Designer, Prezi AI, Gamma. As I said, I am making most of the sessions, most of my PPTs using Gamma and Claude. So creating engaging visuals, infographics and presentations. So visual tools and design tools, if you have to make, you can move to any of these tools. Some tools are free of cost, some tools they do charge money. So we are moving towards tool which are let's say free of cost for us. But this LMS and all, they can spend money on that, and they are using these tools for the betterment. So ideogram, auto draw, beautiful.ai, Visme are AI assisted diagrams and creative teaching tools. So these are the tools. These are the then on fourth, if you see quizzes and assessment generators. So as a teacher, as a professor, if you wish to create the quizzes for the students, assessment generator for the students, we can use Questionwell, Formative AI, Conquer, Ghibli, TUI, generate MCQs, adaptive quizzes, and formative assessments. So there is plenty of names here. We can always Google one or two and find how they work. Then Wayground, AI driven test creation aligned with learning outcomes. Then we have five feedback and collaboration tools. If you need to develop something on feedback and collaboration, got feedback, mirror talk, class comparison are AI powered feedback loops for students. We were talking about getting the feedback loops. Parley Jenny, Grammarly, Quillbot EDU, writing support and collaborative learning. Fig Jam, Jambot, Snorkel, intelligent ऐसा नहीं समझना है कि ये सब fiction है. It's all happening and people are making intelligently the use of these tools. So if you compare it, generative AI tools, I'll take up the question answers. I understand that in chat bots now, in the chat box, we have certain questions there. It keeps on popping every time. But I'll come face to face in the last 15 minutes. I'll come face to face with you. So, if you look at the generation AI tools by function, chatbots and tutors, examples, ChatGPT, Khan Miko, Copilot, use case, personalized question answering and tutoring, lesson design, we can use QReport, Magic School.ai, auto lesson planning, differentiated content. If we want visual design to be created, Canva AI, Canvas, Prezi AI, slide ready visuals and infographics. If we need something on assessment, the tools are Questionwell, Conquer. We can generate MCQs, adaptive testing, feedback collaboration. If we want got feedback and class companion, we can have the student reflection, peer collaboration. These are the use cases. So the comparison table uh, would compare what tools we are using for chatbot tutors, lesson design, visual design, assessment, and feedback and collaboration. So, what would be the risk and considerations? Bias and accuracy. AI generated content may reflect training data biases. So, this is always a worry, but then a good professor is who can manage that, who can control that biasness, who can remove that one. So AI generated content, if you generate it, please go through it thoroughly before uploading it online. Make sure that you're happy with the content, the contents are right, there is no biasness. Then over reliance, as I said, student risk reduced critical thinking if AI is used passively. हम यही सब कहते हैं, अगर आप सिस्टम ही यूज कर रहे हो तो अपनी थिंकिंग आदमी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ओवर रिलायंस कैन बी बैड फॉर स्टूडेंट्स. सो गुड टीचर इज जो दोनों का एक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करवाए. सो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड
faculty training. Educators need orientation to integrate tools effectively. Now, why are we having, as I said, why are we having so many MMTC sessions and all these sessions? Leave aside that the colleges are having their own FDPs, and it's really helping. They're trying to train the faculty, and this comes as one of the pillars of NEP 2020. So, talking about digital pedagogy, now you see the tools for instructional design with generative AI. So, AI augmented EDI, we are all having now. AI augmented EDI. EDI के बारे में बात की थी हमने. Design, development, implementation, and evaluation phases. जो manually कर रहे थे, now we are doing it with the help of AI. SAM and iterative prototyping, using AI for rapid prototyping, feedback loops, and iterative design. So SAM is also making use of it. We'll talk about the tools very shortly. Then Hortagogy and self-directed learning, empowering learners to co-create paths with AI support. So content creation and delivery, rapid module generation, auto creation of quizzes, case studies, and multimedia lessons, scenario-based learning, AI generated simulations for management, healthcare, or governance training, multimodal then analytics and feedback, learning analytics, AI dashboards for tracking learners' progress. So your voice is not audible. Ma'am, I think sir is out of the meeting. Someone has to get in touch with him. He's disconnected.
Hello. पैलेट बनाया था नया, उसी को क्लिक करता हूँ, उस पर क्लिक करने के साथ Hello, sir. Am I audible Yeah, now? so Yes, sir. So my network got disconnected in between. Just a moment, sir. Coordinator, sir, if you can just tell me if I am audible and visible both. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Okay. I'll quickly take you through this and then I'll take up the question answers. Please put the mic on mute, please. So generative AI, we were saying these are the tools that we discussed. Key categories for generative AI tools. We are using ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Khan Migo is using Khan Academy is using Khan Migo, then Pi and Perplexity. We are using lesson design. We are using the tools QReport, Diffit, School AI, Brisk Teaching, Google Notebook ALM, Canva AI, Adobe Express. These are all tools that we are using. Question well. This summary I took up. So for chatbot, lesson design, visual design, assessment, and feedback, we are having the examples here, the tools that we are using, and where are we using it. So it's no longer a fiction. We are making use of these tools in our daily life. Every one of us is making use of Copilot, Meta, and they are helping us create our sessions properly. We are basically working on reducing the biasness and creating the accuracy. Over reliance is a worry. Ethics and privacy, we are working. Faculty training, that's why there are so many sessions we are conducting. So, similarly with instructional design, we have AI augmented Eddie and Sam. They are making use of AI. Uh, Content creation delivery, rapid module generation, scenario based learning, multimodal content are being generated using the use of generative AI. We are getting the feedback and analytics in time. So ensuring fairness and transparency is a basic word. Collaborative intelligence, making the human and AI co-create the things would be important. Future of assessment, AI enabled formative and summative evaluation. I'm stopping the sharing part here. Come face to face with you. Just a moment. So I'll look in the chat window if there is any question there, or I'll take it on the mic. Yeah, the messages I see, it was because I got disconnected in between. I'm really sorry for that. This was some Airtel problem. I connected using Geo now. So if you have any question, please, chat window, I can't see any because I logged in the second time. Hello, sir. Excuse me. Yes. Can I ask something? Yeah, please. Sir, you told earlier that we can create our timetable with the help of AI. Can you please suggest any specific AI tool for that? Hello. Yes, sir. Am I audible, sir? Yeah, my connection is slightly, just give me a time. Just give me a minute. Okay, sir. Okay, sir.
Am I audible? Is a question here. You're audible, Yes, sir. sir, you are Yes, audible, sir, sir. you are audible. Yes, sir. Sir, am I audible now? I Hello, hello. Yes, Someone asked. sir. Yeah, Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. really sorry with the network. Someone Yes, just sir. asked me about how any tool which we can use to make a timetable master. So timetable master is one of that tool. Please look into this tool. This is going to be very important. This is most popular for the schools and universities. The timetable master is a generative AI tool, and it is being incorporated straight into the LMS also for most colleges. Then another tool, ACTS timetable. So this is important ACTS timetable. Then we have template.net class schedule maker. So we have certain tools. Please go through the presentation once more. I'll pass it on to you. So any other questions, sir? I'm really sorry about the network issue right now, especially at the end, again. Any other questions, sir? Hope you got the answer. Table Master is one of those best tools available. Yes, sir. Thank you so much, sir. Yeah, good morning, sir. Thank you so much, sir. Yeah, Praveen sir, good morning. Yeah, this is Ji. Praveen. Yeah, sir, I had one question. Obviously, it is slightly deviating from the topic that you were speaking about, and thanks for the wonderful session. So the question is regarding the assessment. So when we say that AI can help us in adaptive assessments, wherein depending on the capability of the student, the questions might change. But then, how do we go about measuring attainment of course outcomes? Because in the conventional models that we have a set question paper which is given to everyone. Then we have COs aligned to those questions, and we end up calculating course attainments. But when it comes to adaptive assessments, don't you think it will be challenging with respect It to is the challenging. Yeah, it is challenging, and that's where the people are really working. Universities and experts are working on this. So right now, definitely, when we are doing sessions on AI, we are talking about the benefits of AI. But if you see the kind of struggle CBSE is having right now, and also it makes us believe that things are very difficult right now. But definitely, with the framework in mind that the government of India is wanting us to do, so we are working on this, and inshallah, very soon we should be able to overcome all such and may definitely be working on these outcomes because outcome-based education is important. We'll have a tailor-made system also very shortly. Praveen sir, definitely Yeah, we are thank you, looking sir. for that, and every one of us would want India to be the Vishkru. So Yes, we are yes. all working in that direction. And the onus is on us, professors, the mentors, and we are working and we should be doing it very shortly. We shall overcome very soon. Sure, sure. Thank you, thank you.
But definitely we have to be in the race, because being in the race is important, and that's where India is doing very well. 100 smart cities development, the smart education. So that's where NEP 2020, we have to take it forward. So it's the responsibility that is on us. So what I said, Praveen sir, mostly the LMS. The users are not supposed to worry, because the LMS, if perfectly made by the university and college, they incorporate all these tools in between. The teacher is entering the marks, and the assessment is being done. The teacher is doing the putting the feedback, and then the instant things are being done. So definitely it's like, I have seen foolproof systems also. I talked about IMS Ghaziabad. I've seen the system. I haven't seen 0.1% error in that system. Then Bharatiya Vidyapeeth, BVICAM in Delhi, is another college which is running the LMS on a perfect note, and the systems are good. The time here is, it's time that we should be using AI, generative AI, to develop the tools. So we are being trained now, and this is the part. So inshallah, we will overcome all of the issues that are coming, creeping in, and very shortly, it everything would be fine. Thank you, sir. Thank you, Praveen bhai. अस्सलाम वालेकुम सर। Yes, Shoaib bhai, assalamu alaikum. जी शोएब सर भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं ये इन सारे टूल्स की, उनकी कितनी हो सकती है? फॉर एग्जांपल 2, 4, 6। सर मैं समझ नहीं पाया, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन एलोबरेट करें। हम मैं सब अच्छे मेरे टीचर्स कहने हैं का माशाल्लाह, और हम सब अच्छी तरह से, मतलब वी आर ऑल क्वालिफाइड एंड लर्नेड टीचर्स। जी, आप क्या पूछ रहे हैं सर, वो प्लीज पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए जी आज के हिसाब से, जिस तरह से एनईपी 2020 का जो है कहते हैं डिमांड है या उसका जो है एम है, तो जी। हमें कम कम से कम कितने जो है क्या कहते हैं ऐप्स के या इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तो मिनिमम नंबर्स कितने होने चाहिए जो हमें जिन पे कमांड होना चाहिए, जिसकी मदद से हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं? शायद साहब, शोएब साहब, जी सॉरी सर। वो दूसरा नाम दिख रहा है। शोएब साहब, एक अच्छा टीचर अगर आप हैं, आप अपने नॉलेज पे कमांड रखिए, और आप नॉलेज पे कमांड रखेंगे तो आप अपने जो स्कॉलर्स आपके होंगे, आप उनकी मदद ले सकते हैं इन टूल्स पे काम करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको ही करना है। दूसरा, मैंने कहा कि हर कॉलेज के, हर यूनिवर्सिटी के पास अपने सिस्टम्स हैं, आप लर्निंग मैनेजमेंट जी सिस्टम, जो ये सारे काम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए करके देंगे। जी ठीक है ना? तो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग ह्यूमैनिटीज के भी हैं सर, मैनेजमेंट के भी हैं, कुछ और फील्ड्स के भी हैं जो कंप्यूटर्स नहीं आता। ठीक है जी ना? सर। तो बेस्ट पार्ट ये है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोलैबोरेशन करिए, इनोवेट करिए, क्लास के बाहर का पढ़ाइए। ये अच्छा करिए कि क्लास जो भी पढ़ाइए, आप अच्छा टीचर बनने के लिए इनोवेटिव टीचिंग फॉलो करिए। जी सेट एग्जाम्पल, जो दुनिया आपको ये याद रखे शोएब साहब, कि हाँ वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये एड्स तो ऐसे ही हैं। देखें, मेरी मदर हैं, शी कैन यूज these tools very effectively on her mobile। अगर आप किसी ऑटो रिक्शा वाले को देखें तो वो भी स्मार्टफोन चला रहा है। तो सर, विद जी सर। प्रैक्टिस दिस इज ऑल वेरी इजी। लेकिन जो आप एक अच्छे टीचर हैं, तो ऑब्वियसली आपकी अपनी नॉलेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अ जी सर। टीचर इज ऑलवेज जो इन चीजों को ओवरकम भी करेगा। टेक्नोलॉजी देखिए आई है और बहुत जरूरी है। देखिए, कोरोना में अगर ये सब नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, जी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल पेडागोजीज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, और यही देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री इतने सारे लोग के साथ में सेशंस करवा रहा है, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा रहा है।
हम लोग को गाइड कर रहा है. वी आर ऑल्सो अटेंडिंग द सेशंस. ऐसा नहीं है सर टुडे आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर अ सेशन, आई एम ऑल्सो अटेंडिंग सेशंस. तो ये सर नॉलेज बढ़ेगी और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वील बी द नंबर वन डेफिनेटली. और हम सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, यकीन रखें. हम मैक्सिमम हमारे पास पेपर्स हैं, SCI पेपर्स हैं, हम बहुत अच्छे स्कोपस पेपर्स हैं. आई हैव 52 पेटेंट्स, आई हैव 2 सऊदी अरेबिया प्रोजेक्ट्स विद मी. तो मेरे साथ ऐसा होता है शोएब भाई, जो बच्चा अच्छा काम करके लाता है तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके पेटेंट भी उसका फाइल करता हूँ अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है. तो अच्छा टीचर बनने के लिए सर ज़रूरी नहीं है कि हम ये टूल्स के ऊपर ही जाना है. वी कैन टेक द हेल्प, पीयर टू पीयर हेल्प ले सकते हो आप, अपने साथी कंप्यूटर साइंस टीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो सर. ठीक है शोभ भाई. तो हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, एंड वील बी डूइंग बेटर, इवन बेटर. ठीक, थैंक यू सर. ओके शोभ भाई. पंकज भाई, यू आर आस्किंग समथिंग. Sir, good morning. Very या डॉक्टर, या nice and डॉक्टर. informative session, sir. जी डॉक्टर पंकज. Sir, as we have seen, sort of, yes, sir. Am I audible? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल. Am I audible, sir? यस सर, यू आर ऑडिबल. Sir, very nice and informative session, sir. थैंक So यू. much for that. My question is, we have seen a sort of interface between law and the technology. Because many times we have seen the issue as a सर आप, सर आपकी when it आवाज़ comes बहुत, to elements. सर आवाज़ बहुत ब्रेक कर रही थी, फिर से रिपीट करेंगे सर यहीं से. जी. जी सर. जी. So I was talking about the interface of law and technology, sir. So जी. जब हम LMS use करते हैं, we have to share certain data, and we are not bit sure as to how the technology is going to use that data carefully. So when it comes to the issue of privacy, how we are going to address that and how we are going to handle this when we are implementing such sort of tools, especially in public education sector. Sir, half of the question I could understand. The voice was breaking. So you're talking about important student data that we have, this data privacy issues. So definitely the frameworks are being planned. They are working on these frameworks and platforms to make the data privacy and security important. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इस पे काम चल रहा है. They are working on it. And very shortly, as I said, the system is in initial stages. लेकिन हमें very quickly, very shortly, we assume that things would improve. लेकिन आपने कोई पर्सनल इशू फेस किया हो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, डेफिनेटली वी कैन डिस्कस दैट. Uh, no, sir. It was very general question that generally educational institution used to face. जी. And I mean, we have seen sort of repercussion that could be encountered at the end of students at large. सर प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ में इन्होंने सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं. दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन इन एडिशन टू AI, which is making your systems even secure. Though AI would give you accuracy, blockchain-based systems, they're giving you security of also of your data. So somewhere they're working. 2020 के बाद से सर कोई rules and उस तरह के नहीं आए, but definitely they are working on it. Very shortly we are expecting कि इस चीज पर भी issue address होगा. Thank you, sir. Thank you so Thank you, much. thank you पंकज भाई. May I, sir? अस्सलाम वालेकुम sir. शाहिद भाई please. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. I have a query, sir. Like if we create any content like video or audio or anything using any AI tool, so do we have the copyright of that particular content? Means it comes under IPR board, और ये मतलब ये इसका बेनिफिट मतलब मैं ले सकता हूँ क्या मैं इसको, या फिर वो कंटेंट जहाँ क्रिएट किया जिस पर्टिकुलर टूल से उनका वो प्रोडक्ट रहेगा, उनका वो कंटेंट रहेगी. Am I audible, sir?
Hello, Sunny sir. Yes. Sunny sir, I think कुछ network issue हुआ है ना sir की end से? No, ma'am, there are no network issue from my end. It's working very fine. नहीं, एहतराम sir, मतलब मेमुना ma'am also has joined ना? Ma'am, just let me check. Give me a minute. हाँ. I think कोई question पूछा था शायद sir हैं अभी login है? Somebody asking question ना? मैम आई थिंक आंसर तो अवेलेबल नहीं है, मीटिंग अभी में नहीं है। और मैम ना अख्तर मैम ने ज्वाइन कर लिया है। सर फिर अपन अभी स्टार्ट करा सकते हैं ना मैम का? यस मैम, वी कैन स्टार्ट। ओके, participants, before we start, I request you all to please open up your cameras. I think Dr. Khan has faced certain connectivity issue. That's why he's not available in the meeting. Hello. Hello. Am I audible? Yeah, Karmakar, I'm sir, you're Dr. audible. Dhiman. You're clearly audible, Yeah. sir. Yes. So, can I start the introduction? Sir, just a minute, just a minute. Dr. Okay. Akhtar, with your permission, shall we start? Ma'am, you're on me. Yes, please. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. I need Ma'am, to understand how to share my PPT. ma'am, you just need to click on the share icon on your device. There is a share icon is there. An upward arrow icon is there. That click on that share icon. But I need permission. Sir, ma'am, I have given permission. I don't. We don't block any permission thing. Just let me see. Yeah. Now, is it visible? Ma'am, it has. Yeah, it's perfectly visible. Can you please shuffle between your slides so that we can check the slides are moving? Just. Is it moving now? Perfect, ma'am. Perfect. So, ma'am, with your permission, shall we start? Yeah, please. Thank you so much, ma'am. Participants, welcome to the second session of day 3 of short-term course on generative AI and its integration in teaching learning. For this session, we have Dr. Maimuna Akhtar ma'am with us. Ma'am, on behalf of all the participants, on behalf of our institute, on behalf of our director ma'am, our coordinator ma'am, I'd like to welcome you to the group. And before we start, I request Dr. Karmakar to please to present a very brief introduction of yours. So over to Dr. Karmakar. Thank you very much. I'm Dr. Dhiman Kormukar, Assistant Professor, Surendranath College. Now let me start the introduction. Professor Maimuna Akhtar is a distinguished academician and researcher serving as professor in the Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmaceutical Education and Research, SPER, Jamia Hamdard, New Delhi, and is also Director of Center for Teaching Support and Innovations. She holds an M.Pharm and PhD in pharmaceutical chemistry and has made significant contributions to medicinal chemistry, computer-aided drug design, antimicrobial resistance research, anti-cancer drug discovery, and Alzheimer's disease therapeutics. Professor Akhtar has an extensive research portfolio with over 90 publications, more than 4,000 citations, and a strong international research presence. Her work focuses on the design, synthesis, and molecular modeling of bioactive molecules for addressing critical healthcare challenges
She has guided numerous postgraduate and doctoral scholars and actively contributes to academic innovations, research mentoring, and curriculum development at Jamia Hamdard. So, thank you very much. Now, I cordially welcome Professor Apta to deliver the speech. Thank you so much, Dr. Karmakar, for the introduction. And I would like to Thank you. take this opportunity to first thank the MMTC DAVV Indore, because this is a unique opportunity for collaborations, and having such kind of events, upgrading the knowledge of the knowledgeers, I would say, the who deliver the knowledge, is one of the important aspect of teaching and learning. Because once the teacher learns, it's easy for them to actually transform the same to the generation. Though I would say it's very difficult in this period, like during this era, where every student has, can say, the smartphone in hand, and teaching them is become a literally challenging, because you need to know new methods and new techniques to make them not understand, I would say, but to have some focus on particular area. Nevertheless, it's a good opportunity for me to interact with, I would say, more than 300 participants, 343 participants, if I saw it correctly. And like having interaction, I would like to thank the director, madam, for giving me this opportunity. I have a different, comparatively different topic, which is more of a research rather than a direct teaching learning, because research is one of the important aspect of our teaching learning process. And this topic, since I being from the pharmacy background, and I have taken this opportunity to share with all the participants what is going on in the pharma field. And this, I'm sure this will give you some insight, and may help you realize that how you can connect, like all kind of healthcare and would say computer science people, life science people, how you can actually connect, collaborate with each other to develop such kind of things, which could be amazing. Because science or developing drugs is not like one kind of science, it's a multidisciplinary. It requires all kind of knowledge these days, and any single person cannot have that kind of knowledge. It needs the understanding of biology, it needs the understanding of chemistry, it needs the understanding of formulation, it needs then the understanding of you can say computer science if you're using some tools. It also requires the understanding of those clinical side of the healthcare system, where in clinical trials are being developed, right? So it's a huge a mixture, I would say, wherein we can connect with each other, collaborate with each other, and can do wonders. So coming back to my topic, as the topic, or you can say the context for this whole session, FDP is about AI. So I would say AI in pharma is not just an advancement, it's a revolution. Because in pharma was one of the sector which took long, I would say comparatively, and when it's say long, it's comparatively long to accept the changes, because the pharma is highly regulated market. Pharma has a huge amount of regulations all over the globe. It's not only in India or US or Europe, it's everywhere. It's a hugely regulated sector when it comes to you can say healthcare or delivering drug. So for the first time, we have this power of transformation, transforming the entire drug life cycle. Earlier, we used to have in parts, like helping or getting help from computer-aided drug discovery, from using certain tools to discover targets, to discover new molecules. But this is for the first time that we have this power to transform the entire drug life cycle. So these possibilities are unimaginable. And I would say just a decade ago, you will all agree, we didn't have this kind of a privilege. And but we need to understand, why do we need this transformation, since we all already working in area. So you already know the answer, right? Because
the drug discovery process is a slowest process. Like, for example, if you go into automobile is someone has designed a car, and they are developing certain features, and it comes into like after manufacturing, it comes into market. But when it comes to the drug development or drug discovery, it starts from the scratch, and when it comes to the market, almost billions of drugs and 10 to 14 years of time has passed, which is a huge time and money involved. So drug discovery was, I would say was, because there are some improvements. Very slow process. So we needed to transform in this process. So because traditional drug discovery, so it is slow, expensive, and uncertain. Because we say if 10,000 molecules, you start with 10,000 molecules, only 5 to 6 molecules enter into preclinical trials. And from there, only one molecule, if possible, like if it happens, is successful. The traditional drug discovery being slow, so we need to improve upon. It's expensive, we need to cut costs, corners, and where we can actually reduce the cost. And uncertain, we need to reduce that uncertainty, because we want to see those molecules like long before they enter into the market, if they are if they are likely to fail. So because apologies for interruption, ma'am. Ma'am, could you please put your slide on slideshow mode? It is not visible, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Yeah, I have some. Just give me a Excuse me, ma'am, you're on mute. yeah, sorry for this interruption. There was some, I get some nag in my system. I'm presenting it again.
Is this okay? Is it coming? Yes, ma'am. Can you please press F5? Yeah, this Yeah. is coming now. Yeah, perfect, ma'am. So we have this need for using AI into the pharma market because AI helps us reduce the attrition rate long before we fail in the clinical phase. And the timelines are reduced. And we have a long history of using traditional drugs, and this also helps us to understand the various facts where in these traditional drugs, we didn't have understanding that how they interact with the biological systems. We can also understand that. So we know that India is emerging as a global hub for AI-driven pharma because it has been discussed for so many, like in so many lectures and in so many forums that India has to lead into the AI, and as a result, the government has also initiated National AI Mission for that. And we are, like I would say, we are a leader in everyone, only we need to know our the potential, realize our potential in that sense. So, but this slide gives you some basic understanding why we are into AI in pharma and why so late, I would say. So earlier, as I mentioned, there was some parts of the AI that was used in the research and development only, like in where we used to identify targets, then in the different chemical substances. Now the involvement of AI is in each and every field, right? And you could see the increase in use of AI in the pharma sector, which is represented by these purple boxes. And this is research and development only. And you can see it has been increased. The 23 data is like it was up to June only. That is why the data is not so much. And we could see the collaborative research and product license. That is also increasing. And in 22, 23, it's the highest kind of thing. In academics, we already are using all these kind of tools to understand, to make the skill workforce. So that when they go into the industry, they are better equipped. वही तो मुझे भी ध्यान था मुझे यही याद था कि पीछे वाले करे थे अच्छा करे ठीक है So coming to like AI to AGI progression, so we understand AI is narrow, and when you have advanced AI systems, you need multiple domain integrations, as I mentioned, chemistry, biology. In AI only, we had some limitations earlier that when we used to identify new chemicals or new molecules, new drug molecules, we had certain limitations with respect to identifying these new molecules. And when I come into chemistry terms, we had to understand the structure activity relationship, and which was limited to a series of molecules. We couldn't use different structures and correlate their structural features with the biology. So, but with the advent of these techniques, we are now able to actually understand the structural features of vast amount of chemicals and then their effect on the biological activity in that case. And by using advanced AI systems, we could actually integrate the biology into the chemistry. And when it comes to further advancing, we could actually design, predict, and act. And wherein we could say AGI is like systems. And we will be having more automated systems in future. So when it comes to drug discovery target pipeline, so you have a target ID where in AI you can use only AI you can use, I mean, and when it is hit discovery, that means the drug molecule discovery. When I say target, and that means a protein, DNA, a biomolecule which is being targeted in the body.
I'm not sure how many of you are familiar with the terms we are using in computational chemistry, or you can say in silico chemistry. So please, you can interrupt me if I need to explain more. So when I say target means you are talking about any biomolecule which is being targeted to improve upon any disease conditions. And when I say hit molecule, hit means any chemical which has shown some effect, that which has shown some promising activity that can be developed into a complete drug molecule. So you can use AI as well as generative AI for identifying these hit molecules. These need to be further optimized, because when we say optimization of hit molecule, it means that you have to work around 360-degree of this molecule, because this drug molecule has to interact with the target, but before reaching the target, it has to pass certain hurdles. Because if I am taking an oral dosage form, or for example, we commonly know we take a tablet. The tablet has to dissolve in our stomach, then it has to be absorbed by our stomach or intestine, go into the first pass metabolism, get metabolized and being excreted, and then some part of the molecule reaches to the target site. So all these factors, that is absorption, this distribution in the body, excretion from the body, then its toxicity as well, they all come under lead optimization, because unless and until a drug is absorbed from the system, it cannot reach to the target site. So you have to have those optimized features. And moreover, it is believed that most of the drugs which fail in the clinical trials is not because of the efficacy of the drug. It's because of these properties. So we need to have such properties which will not lead us to failure in the later stage. So these techniques, all these techniques help us to identify those molecules which may fail in the later stage of the development. Then once you have all the feasible features of a molecule, you need to develop it into a formulation and develop your data. And you need to get into the preclinical studies. By preclinical, we mean we have to have certain in vitro data studies that yes, it is binding to the particular target. Then we need to have animal studies wherein you can actually observe when a drug is given to the animal body, how it is being handled by the body. So one thing is that what drug is doing to the body, and second thing is what body is doing to the drug. So they are called PK/PD studies. So you need to have that understanding. And nowadays, due to the availability of data, large amount of data of the already existing drugs, whether failed or successful drugs, the data is there, and you can actually develop models which can help you understand whether your molecule will cross the preclinical studies or not. So once it is done, you need to file those molecules. You need to file documentation with the FDA of any country you are working in. So they need each and every data. In today's world, now the FDA has actually accepted the AI generated data, or you can say the model data. Earlier, it was not there. So this has allowed us to develop more robust systems which will have minimum errors, and with the availability of data, you can improve and you can use specific model for specific diseases, and can produce that data, have minimal kind of experimental data to support your claims. And once you file those data, then only you are allowed to go into the market, right? You are allowed to perform the clinical trials. So once in clinical trials, again, you need to have lot of things to be done. And this is the longest period of your drug development, because you first need to have clinical phase 1, then clinical phase 2, phase 3, and then post-market surveillance. And all these things take a lot of time. And we are I would say fortunate that we could actually use these techniques and tools to develop upon these all these softwares which could help us in reducing the time.
And that, of course, helps us reduce the, you can say, resources. So, this slide is itself a very, you can say, elaborative, right? And you can actually see what all is being done in different phases of the drug development. I have given a clear markation what is about drug discovery and development cycle. So it starts from the target identification, because when you are working on any particular disease, I selected disease, for example, diabetes. So I need to first understand the pathophysiology of the diabetes. What is going wrong when a person is getting such kind of particular kind of disease? So then I can need, there are already some known targets, right? There are some already existing information which you can either use, or you may choose to identify a new target. So what you can do, you can integrate multi-omic data, which is already present due to huge human genomic and proteomic transcriptomic data which is available these days. So you can integrate these multiple omic data and use network biology, deep learning tools to uncover novel targets. And you can validate these targets. By validation, we mean that when you are blocking that particular target, you need to have the improvement in the particular disease condition. If the blocking a particular target is not leading to any improvement, that means this target is not good enough. You cannot target. So we call them druggable targets also. So you need to first identify the target and validate that target. Then you can use a generative AI to actually generate AI design novel molecules. Because again, there are a number of ways where you can use these tools to design new molecules. Number of peoples may be well aware about the chemistry, and they understand that what molecule is and how molecules can be designed. You can have wild imagination while developing a molecule, but at the end, you need to understand that that molecule has to be produced physically, because that molecule has to be given in physical form. It cannot be in virtual form. So while you are designing these molecules, you need to keep in mind that they are not beyond the chemical space. They exist in libraries which are synthesizable, which we can synthesize in lab. Then you can predict, when once you are done with that, you can predict the binding affinity of these molecules with the target you have identified in first phase, and then check the drug likeliness. As I said a few minutes back, that your molecule has to be absorbed in body, it has to be metabolized, it has to be distributed in the body. So those features which are most likely for a molecule to be a drug-like is called drug likeliness features. So you have to understand those drug likeliness features. And this generative AI, if you give it a correct information, this will help you identify molecules with such molecules which will be drug-like. Then once you have such molecules, you can further optimize that. Optimize in terms of its potency, its selectivity, its admit properties. Admit is again absorption, distribution, metabolism, elimination, and toxicity. So you will have to optimize it in those lines. Then you can have multiple objective optimization also. Because earlier what we could do, we could optimize one by one. First for absorption, then for distribution, then for metabolism. Now you can have you can have tools which can give you multiple objective optimization at one time. And due to this, you can have reduced iterative synthetic cycles, right? Then once this is done, the next step comes with preclinical development. Preclinical development where it predicts PK, that is pharmacokinetics, what drug does in the body. And body does to the drug, and then pharmacodynamics, what molecule do to the body. And this also involves toxicity studies, because toxicity is one important parameter. No matter how good your drug is, if it has a certain kind of toxicity, it's of no use.
right? There are a number of drugs which were withdrawn from the market because it was in clinical trial 4. That means when it was open to market, that it was realized they had some cardiac toxicity, right? So you can have this kind of study well beforehand now using these tools so as to avoid the later failures, right? You can simulate dose response mechanism by using the previous knowledge, previous data. And you can use this to support decision making and reduce animal testing. So then once you are done with this, you need to go to, once you have identified that, yes, this molecule has good PK/PD properties, it is safe to be taken, right? You go to the clinical trials. And in clinical trials, one of the biggest challenge is finding the patient. The first clinical trial is okay because that is done on normal patients, right? But as soon as you move from phase 1 to phase 2, you need to have patients of the condition, which condition you are dealing with. So it becomes a huge task for the companies, for the doctors to actually recruit patients for that particular condition. So AI helps in identifying eligible patients and optimize recruitments. But for that, we need to actually develop a system at different hospitals wherein a proper patient electronic records are maintained with all the details, with all the kind of privacies. Because unless and until you have data of patients in some form, in some computational form, you cannot use that. Even if your patient data is on paper, it is very difficult to look into those papers and identify patients. And you don't get all the details from these papers. So you need to first have a robust system at different hospitals also to develop such data. Because we all understand AI is nothing but data, right? So adaptive trial design and real-time data analytics can be used, right? And it can improve trial efficiency and reduce cost and timelines. Then once your trials are done, you have set foot that the molecule is safe, and you are actually launching in the market, the drug into the market. So after launching into market, the drugs, the doctor is prescribing to the patients, because a clinical trial is always limited. No matter how big it is, it's always limited. Because even if it is done in India, it may not suit to the patients which are in African countries. It may not suit to the patients which are in Europe or Western countries. So the post marketing data is very important, right? So real world data analysis for safety surveillance. So once the drug is into market, the certain responses are very small, certain adverse responses, I would say. The adverse reactions are very small, but that also needs to be recorded for the further understanding. So early detection of these adverse drug reactions, identifying those single signals is very, you can say, important. And with the help of AI, it has become comparatively. And all WHO has set up all kind of vigilance centers, and for every country. And from every country, those pharmacovigilance centers have set up their own further sub-centers, wherein a patient can report these adverse side effects, or they have also developed now tools, those apps, wherein a patient can download that app and can upload its adverse reactions on site itself. So what it gives us, right? It gives us faster discovery. We have reduced to months from years, right? And it has also helped us reduce attrition, and which has reduced the cost of the total development of the drug. And we have expected higher success rate. I would show you some examples wherein drugs have been developed completely using AI technology.
This is patient-centric technique, because although it may not be completely today, but we will be able to deliver right drug to right patient at right time in near future. And this is a resilient system, strong preparedness for future health challenges. We will be having a lot of understanding of the healthcare system, and will be developing specific systems to address those issues. So we all understand the countervailing winds of change are constant in biopharm industry, and they are picking up speed. Novel treatments based on innovation science. Novel treatments, when we say, we have come up with more rare diseases in recent years than ever that happened, right? And we have new modalities, and which are emerging faster than ever, right? We have intensified competition, declining R&D production, payer pressure, and steep patent cliffs. You would see in next few years, we'll be having more than 20 drugs going off patent. And off patent going drugs means that a lot of generic will come into picture. And those companies who have invested a lot of money, they will be losing their share completely from those drugs. So this means that biopharma is a high stake business, very high stake business. So whenever we see such kind of initiatives which can help reduce the cost, time, that is always taken up very positively. This gives us an idea why is like AI getting more into now pharma, right? We can see a combination of better understanding of causal biology these days, which was not earlier there, right? Lot of innovative tools, artificial intelligence tools, they have actually helped us understand the causal biology. And novel modalities is fueling the growth of first-in-class products. Because earlier we used to have Me Too kind of drugs, right? Someone developed sitagliptin, a number of drugs came into picture. But now, with the understanding of this causal biology, lot of first-in-class products have been identified, and we could see, and the first-in-class has doubled in past 20 years. The number of drugs, that means new drugs, new indications have doubled. And we could also see this expenditure in has hugely increased, and it will account for 15% of the total market by 2030, the new modalities. This is growing at the highest pace, because it's 28% CAGR, right? The people in business can actually understand what does it mean. That this is a like you can say huge, we can say percentage that is actually showing that how the market is going to change in the coming years. So I have taken up, you people can actually help me that should I take one by one all these where AI has been used in target identification, then optimization, or should we cut it down? Because this is a huge, you can say, understanding, because every phase of drug discovery is itself a huge topic, right? Or I can go through these slides so that you can have some understanding of which techniques are used in different areas of drug development. Or if you have any queries so far, if you are you able to catch up with the pharma market? We can always have this point in between. So can I have any input from the audience? Can you give a cursory look at all these applications? Maybe going in a depth might not be useful to everyone. Right. But then how, deep learning perhaps or NLP is being used, or, how DeepMind's AlphaFold has been used, something like that. Right. Maybe a cursory look. Right. That's what I actually wanted to know, because there are people from different fields. It may not be they may not be able to connect deeply with this. So when it comes to target identification, as I mentioned, target is the protein or DNA that is biomolecule in the system.
And the techniques that have been used is deep learning, NLP, network biology, and they help us understand the novel disease targets. As I mentioned, for example, if I talk of any Alzheimer disease, for example, we already know amyloid beta is a target where in number of drugs, cholinesterase is a target where in drugs are already existing there. So we want to see what other targets, what other proteins are involved in developing this Alzheimer disease, and we can use these techniques to identify those targets and then use. And tools which we have been using is DeepMind's AlphaFold. You must have heard about the AlphaFold, which was actually in it was excellent in predicting the protein structure based on the previous knowledge, because identifying the protein structure is a very difficult job. There must be people from structural biology, they will understand that how difficult is to identify the protein structure. And this technique, this is an AI technique, AlphaFold, it has predicted the protein structure of unknown proteins to a great, you can say, precision, right? So we have in India CSIR and IIT Delhi collaborations which work on tuberculosis, which we have a national target, tuberculosis, and COVID-19 targets. Right. So what deep learning does, it learns complex biological and chemical patterns from large omic databases, which are already there. And what natural language processing NLP does, it extracts those information from scientific literatures and clinical data. They all together can use and develop a new understanding. So model biological systems and interconnected molecular network, that how these proteins, how the expression of a gene to the protein to the actual change in the disease happens, can be studied by network biology. Right. So this is again, this deep learning is used to predict protein structures, molecular binding, and disease targets. And the tools used are AlphaFold and AtomNet, right? And similarly, NLP is used. Literature, जितना भी हम पेपर पढ़ते हैं जैसे, ना, तो आप कितना पेपर पढ़ सकते हैं? हम एक पेपर पढ़ सकते हैं 1 घंटे में, अगर बहुत कोई अच्छे से पढ़ लेगा, है ना? और दिन में हम 10 पेपर पढ़ लेंगे, but NLP can read thousands of papers and can get you the information, right? So the tools used are IBM Watson, BioBird, ScienceBird. You can use this NLP in all kind of, you can say, your fields, right? So this is used for literature mining. And network biology, it helps us analyze molecular interactions. There are tools like String, DAVV, Cytoscape, which helps identify the key nodes, or you can say a particular gene or a protein which is connected to a number of genes and proteins. And those genes are called hub genes or hub proteins, which are actually responsible for number of, you can say, networks involved. You have integrative application, right? So you can use all the things collectively and use. You have NLP find links between these genes and neurodegenerative, which you have identified the deep learning. And from the network biology, you can get that hub gene. For example, in this case, it is APP. Which was not earlier identified as a drug target for Alzheimer's, right? So you can use all the 3 techniques in simultaneously or in connection with each other and develop a target molecule. Similarly, in drug design, when you say hit molecule, because when we say drug, it's a small chemical molecule. And nowadays, we also say peptides, wherein we have immunogenic drugs, immunomodulators. So those are, most of them are protein molecules, small protein peptides, right? So you can do hit identification, then lead identification. Hit means you have just identified that, yes, this molecule has some activity. Then you actually perform those experiments and see, yes, it is working in experimental model also. And then you optimize those molecules. So you can use generative AI, reinforcement learning, graph neural network, and they all help us design novel molecules with optimized ADMET properties. You have also in silico medicines chemistry 42. This chemistry 42 is a tool
which can help you design completely new molecules on the basis of existing information, right? So again, India has some, I have given some examples vis-a-vis India, because you also need to have that confidence, yes, what in India we are doing, right? So what how it actually goes, generative AI pipeline, you get a data from, there are chemical databases, which are known database bioactive compounds. This is called ChemBell, PubChem. They're all known databases. And you get those data and you model your train your model, and then develop your latent chemical space, help molecule generation. This is completely de novo. That means you start from the scratch. It has nothing to do with the database that was used. On the basis of that information, you are developing these molecules. Then you go for multiple objective optimization. That means activity optimization, admit optimization, and toxicity optimization, right? Then you screen those molecules with the targets you have identified and see which molecule is binding best and can rank molecules according to their affinity. Then you have a selection of hits and you synthesize and validate these molecules. So this is the complete pipeline which we can do by using these generative AI tools. And you can have a completely new molecule which has not been actually identified till date. This is about the same thing which I mentioned, the chemistry 42. It is a part of in silico medicine. In silico medicine is a company's full, we can say, program, and their chemistry 42 is a part. It is designed, it is used for design of de novo molecules. That means which have not been developed till date. And it's a again platform which uses generative AI model, autoencoder, GANRL, and all physics based and medicinal chemistry tools, which are physical chemistry people may understand, that free energy banding prediction, retrospective route planning can be done, admit modeling, all kind of things can be done by just one simple tool. This is, you can say, a representation of generative adversarial network GAN. The generator, this network tries to invent a new molecule that looks like a real drug effect, and discriminator will act as a critic. It will help you understand by comparing the generated molecule against a database of known successful molecules, that whether this molecule is going to act, is going to be successful or not. And this generator will keep on improving until discriminator can no longer tell the difference between the fake AI invented molecule and the real one. It is as good as you are developing your pictures, right? And you are using some information, you're developing that and have identification that whether this picture, how real this picture looks like. So by doing that, you can find actually new candidates, and those candidates you can synthesize and then check experimentally. So people from computer science can actually understand this, what variational autoencoders are. They map molecules into simpler coordinator system, and AI can walk through this space to find gaps where no known drug exists, but where a potent new one might be hidden, right? And they can allow the system to take two different molecules and blend their best features together to create a hybrid kind. So we can see, for example, I want to develop some kind of fancy chair. I can think of number of chairs and take best features from them and can design. They are doing the same. They're taking the best features from the molecule and designing a new molecule. And reinforcement learning actually rewards it whenever they get a new molecule, and that is non-toxic and easy to manufacture. And this kind of continuous improvement is being done, and unless and until model identifies that, yes, this is the perfect molecule for C. But we need to understand here, the result is only as good as your data.
So you have generative chemistry modules, which defines criteria, system generates novel molecular structures, and molecules are then filtered and ranked, right? And this integrates algorithms for computing relative binding free energy. Then you can have ADMET studies for those molecules. Retrosynthesis and synthetic accessibility is it's a tool. For example, I have a molecule and I want to synthesize it. I need to first understand by breaking down this molecule into smaller fragments that from which small molecules it can be built up. So it will take me a number of days to understand that, because I need to go into literature that how these kind of molecules are built, what catalyst may be required, what fragments may be required in that case. So these tools, they already are built on certain databases of small building molecules. And you feed your structure into that, and it will help you how to synthesize this molecule. You can finally customize it, and because it cannot be absolutely okay, but it gives you the most perfect route of synthesis of the molecule. That means, for example, if you have a molecule, from where it should start. You start with it, then toluene, then add this molecule, then add ethanol, then do reduction, for example, like that. So it will give you all the steps, right? And then give you final molecule. Yes, this will be formed in few steps. Because human intelligence is more than these AI tools, and because AI tools as of now is still dependent upon the data. So you can always improvise upon this synthetic route that is proposed by the system. And this is another tool that does the similar kind of job, AtomNet, Atomwise, right? They use deep learning for structure-based small molecule drug discovery. When I say structure-based, that means they are using the information of the protein. Because I'll give you a brief explanation about how drugs interact. When you have a small molecule, it has to bind to a protein to produce some effect. So in protein, it binds to certain amino acids at certain distances. These kind of tools, they actually map those amino acids which are important for binding to drug. And on the basis of that information, they develop small molecules. So this is an example of DDR1 kinase inhibitor, right? So it has the target identified was DDR1, that is discodine domain receptor 1, it's an anti-cancer target, right? Fibrosis. The challenge is that limited selective inhibitors are available, and a novel scaffold beyond kinase chemotypes are required. That means the already existing kinase inhibitors are not sufficient. We can develop few more novel drugs which may be more effective than the existing ones. So what can be done? Generative AI can be used to design novel small molecules with higher binding affinity and better drug-like properties, and with synthetic feasibility. Because as I mentioned, the synthetic feasibility remains at the top, because at the end of all this study, we have to synthesize that molecule. We have to get this molecule in a physical shape. So what it will do, it will train on large data set of biomolecule compounds which are available, and can use GAN to learn these chemical patterns. From these, they can generate molecules, optimize those molecules in terms of these activities, novelty, and then you can have docking of these molecules. That means this white part actually describes your protein, and this purple part describes your small molecule. That on the basis of, then you can use you can see which molecule is binding good, and then this needs to be screened for the ADMET properties, and then finally you synthesize these molecules. And this can be done in one single go by using these techniques, tools now. It's not that we start it and on the next day we'll get all those drugs, but yes,
they help a lot in identifying the new molecules. Okay. So this is this similar kind, like you had AI generated completely novel scaffold, right? This helped you identify the or expand the chemical space. And the molecule was actually generated in 46 days, as I mentioned. This is itself you can say history, because it has never happened before. In 46 days, you get a molecule and you can test that molecule. Okay? So it has helped us in speeding up novelty and integrating all the facts of the drug discovery processes. So second, as I mentioned, that we need to have preclinical data. Preclinical data means you need to understand what drug does to the body and what body does to the drug. And again, lot of data is available related to this depending upon the previous, can say previously developed drugs. Okay? So predicting toxicity, predicting pharmacokinetics and pharmacodynamics, all models are there present now. So for toxicity, two tools have been used very commonly. That is TOX21 and eTOX, right? And for clinical patient recruitment softwares or tools have been developed. Virtual trials have been developed. In virtual trials, you'll say a similar kind of virtual person is developed, and first all kind of things are done with that virtual model, and then on the actual human being is tested. So you use all deep 6 AI, unlearn AI and bioaxial therapeutics. And in Indian context, we have AI 4XR, Cure AI, and Regan Biosciences for predictive and analytical trials. So how do you predict toxicity? So they analyze the chemical structures. It's like analyzing your chemical structure for activity, whether it is good for biological activity or not. Similarly, they analyze these molecules for being toxic or not, and they can predict toxicological outcomes. And it also helps us model pharmacokinetics and pharmacodynamics. That means it has predictive models for absorption, distribution, metabolism, elimination, and toxicity profiling. Then when combining with all these, getting all this information, you can actually have safety profiling. Use tools to integrate diverse data sets, which is chemical, genomic, and experimental, to identify the off-target interactions. Because if it is off-target, that means it is having some side effects. So about TOX21, a brief about it, that it uses AI and machine learning on large-scale HTS data to predict chemical toxicity pathways. Integrates genomic, transcriptomic, and proteomic data sets to understand the molecular mechanism of toxicity. You can employ QSR, that means quantitative structure activity relationship, and deep learning models to identify toxic liabilities early in drug discovery. So अगर पहले ही पता चलेगा कि टॉक्सिक है, हम उस पर आगे काम करेंगे ही नहीं. So prediction of hepatotoxicity, cardiotoxicity, endocrine disruption. It enhances risk assessment before your in vivo testing, right? And you can screen thousands of molecules at a time. eTOX is similar tool which uses the database of 8,000 compounds. That means those compounds are known to be toxic, and you can see if any of these features are there in your molecule, it is likely to show toxicity when administered in the, you can say, animal or patient. Right? So it developed AI-powered predictive tools like organ toxicity. It can help you identify organ toxicity, which is involved to liver, heart, kidney. It can also help you understand off-target toxicities, right? And it results in your predictive tools like eTOX system, a platform integrating all these features. They are itself the different tools, QSAR, PB, PK, and AI-based classes. So they are an integrated system which will help you understand the toxicity of the molecule. Then you need to understand the recruitment of patients for clinical trials. Once you have preclinical data, you need clinical trials.
So Deep 6 AI is one specialized AI platform which focus on accelerating and improving clinical trials by using AI and NLP. How we can use that? But as I mentioned, we need to have EMR data, electronic health, EHR data, electronic health data, or medical records, you can say. And that has to be robust system, because unless and until you have that EMR data, you cannot use any tool to screen those data to find promising patients for clinical trials. Because for each trial, you need to have specific patient which can be tested upon. Unlearn is again another similar kind of tool that applies machine learning and causal inference to clinical trials, right? So Cure AI is a tool that comes from India, which has been widely used these days. So you get information from all X-rays, which are converted into AI model, then diagnosis and clinical decisions. You get all these kind of information from these steps. So when I said a drug molecule, the drug molecule has to be manufactured in the manufacturing unit. So AI has been used in manufacturing also, because when you say automation, automation can be done each and every step. So there are Pharma 4, which is predictive maintenance and anomaly detection and process optimization software. I'll help you understand first that what normally it goes in manufacturing. So when you say a tablet, it's not as simple as getting your dal and cooking it. It requires lot of information beforehand before you get the API. API is your, for example, paracetamol tablet you are manufacturing. And at a time, you are manufacturing lakhs of paracetamol tablets. Any company, for that matter, preparing paracetamol tablets, they are preparing lakhs of paracetamol tablets. And that means you have quintals of paracetamol in your factory warehouse, mixing all those excipients, wherein you can have taste enhancer, you can have a disintegrator, you can have a binding agent. All those are mixed in perfect ratio so that each tablet that actually is punched at the end is of 500 milligram, right? So it's not a very simple task, right? And from there, from mixing of this material and converting it into granules, those granules then punching into tablets, and those tablets being packed into strips, blister strips, and different kind of strips, right? It is a huge process and requires a lot of, you can say, precision, right? Unless and until precision is there, you cannot work. So when you are doing this by machines, those machines need maintenance. And maintenance means in pharma, it has to be absolutely cleansed, because it cannot leave any kind of traces of the previous thing that happened on that machine. And when it is normally done, the process is stopped for more than 24 hours. And if it happens all of a sudden, for example, if the company didn't take care or didn't notice, or some fault came at a certain point, and it disrupts all the process. So these kind of tools help us that, yes, when this machine needs maintenance, right? And you can actually properly plan that maintenance and check those any kind of anomaly that may be possible. This can help you avoid those breakdowns, right? So there are techniques, machine vision, predictive analytics, and digital twins, right? So which help us understand that how this pharma manufacturing unit works, right? And should work, and you need to have a close eye on the process that is going on, because the quality control is very important in pharmaceutical manufacturing. So what does this predictive maintenance do? It minimizes unplanned downtime, reduces maintenance cost, ensures continuous compliance with GMP. And anomaly detection, which helps you to detect deviation from any expected pattern.
because it has the pharma manufacturing has to be very precise. So anything which is not expected is deviation, right? So these tools help you to understand, yes, they are going perfectly right or not. Okay. So you use these neural network random forest classifiers to do these kind of things. Similarly, CNN is used to identify these any kind of changes that is happening in there. Process optimization again involves these predictive analytical tools to identify how the proper process optimized. So digital twin is you're actually creating a virtual replica of all the physical manufacturing system and see how it works. If there is anything you can improve upon or needs to be changed, you can actually do that first in virtual mode and then can do in the physical mode. So this is one thing which you need can understand that in healthcare system you have lot of things like clustering together, right? So they involve data integration, predicting in predictive intelligence, automation, data report, and why this is required. We need to be we need not to be reactive cares. We need to be predictive, resilient systems, right? So you can have because like we saw in COVID, it was a reactive situation. Had we have a kind of certain systems wherein we knew that yes, if such certain kind of situation happen, how to react, how to handle that situation. So that only happens when you have real-time data, right? And you have certain systems or biosecurity systems. You have smart hospitals. This is still going on, and we can expect better things happening in future. So you can have to help this to happen, you can have data infrastructure, right? Where you can have multi-omic clinical real-world data integration, right? You can have AI platforms wherein you can use scalable and secure ecosystems. And that helps you understand what all kinds of challenges can be there, right? And it is related to pharma innovation, policy and regulation, because when it comes to any new thing, we need to understand the policy regulation also, right? And over and above that, we need to have skilled workforce, right? I recently heard a story about a use of AI tool by a kid who was bullied during the school, and he used ChatGPT to converse with, and the ChatGPT actually made him understand that suicide will be your only option to save yourself from that bullying. We need to have those can say people also who develop these systems responsible. There should be some ethics beyond this. We do not need just developing systems. Like we see these days, all kind of AI data is being created without sensing how bad it is, I would say. I once asked this question also, like when it comes to drug, we are very, very cautious that it has to cross all these hurdles before reaching the patient, because it is believed that it will hurt a huge amount of population if it goes into market, right? But doesn't that apply to the AI also? If I am developing one wrong AI model, right, isn't it affecting a huge amount of population at the same time, because it is not being monitored and no one realizes what damage it is doing. So we need all kind of these policy and regulations, and I'm sure this is being worked on, and for that we need to have skilled workforce. But this is we cannot see only the greener side of the problem. We have challenges still in AI related drug driven discovery processes, because there is a huge data, but this data is not standardized data. It is not, you can say, consistent data. The quality of the data is not good. So we need to understand the data issues. Then we can have regulatory concerns.
because there are a lot of regulatory clarity is required, as I mentioned. Like, we need to understand what is ethical use of these AI tools. Then we need to have a technical understanding, like your black box model. This lacks interpretability, right? Generalization across diverse population. It's very difficult. You cannot have general understanding that what is good for this population will be good for the other population also. The high computational requirement, right? The computers, the high-end computers, computational power is required. These all needs to be understood in addition to the ethical, I can say, accountability for AI-driven decisions, right? This is highly unclear and is very risky at this time, because there are a lot of outcomes which are not really good with these AI tools. And we need to understand that we are responsible for each and every action we do. So we see this as the future of the AI, right? We can have AI in accelerated drug design, and this can be led to the personalized medicine, right? Personalized medicine means like you are targeting a small population which will have specific genomic driven therapy, right? And very rare cases, like when in cancer patients, you can have patient specific therapies. And which will be ultimately the vision of this AI is that you can have autonomous drug discovery system. It's starting from the scratch to the end, you can have all the system automated. Thank you so much. I hope I have make some sense and put some information and give you some insight into the pharma market, and give you some idea that how it goes. So I'll be happy if people would like to interact that how it goes, because I understand that people will be from different backgrounds. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Thank you for your session. Actually, I'm from engineering background, so I would just want to know from where we can get data sets, on which we can build these models. Because obviously, being from engineering background, I won't be able to create, experimental results, and it requires a lot of data for obviously training the models. So, from where can I get these data sets? Don't need those data sets, because there are there's different set of scientists who work on generation of data. The data is already available. Like if you go to a site PubMed, right? Okay. You get all kind of biological data. From PubChem, we will get all kind of chemical data, right? You have tools like BLAST, wherein you can get all information about the protein structures that have been resolved till date. So this data is already there. Campbell is the data set, which is all about small molecules which are effective in nature. Okay. Lot of databases which is already there. Only thing is you have to have that understanding of biology and chemistry, I would say. That basic, I would not say don't deep, but basic biology, how proteins interact with the small molecules, so that you can use these tools. You can always integrate with people, collaborate with people. For example, a bioscientist can work with a chemical engineer to develop something new that actually works best. Sure. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Thank you. I'm happy to hear you and to see you. Your presentation was very well explanatory, and your wisdom of knowledge is very good. I'm happy to hear you, ma'am. And I'm happy to listen your multidisciplinary approach that is required right now in our field. Thank you, ma'am. Thank you.
I would suggest here that you do please connect with some chemist or some bio scientist to look how these things work together. That will be interesting thing and new thing to actually explore. Yes, ma'am. Yes. Myself, Dr. Meenakshi, I'm in Sarda University. So we always think about this to collaborate with the hospital and other pharmacology departments. So, Right. but we need some structural collaboration plan. This will be great thing actually because you have pharmacy in Sharda also. Yes, yes. So the people must be using these kind of tools. Yeah, the people are doing. Thank you, ma'am. Thank you. May I, ma'am? Yes, please. Good afternoon, ma'am. I'm Dr. Shahid from Jamia Hamdard itself. I would like to know that what is there any tool available for doing getting the activities for herbal drugs, as we have multi-compound drugs, multi-components are there, polyherbal formulations. No, Dr. Shahid, that is still to be, like I would say, to come with. Because till now you have only one drug, one target, or you can have multiple target interactions, or you can have a number of drugs, but it is not the formulation that has been actually tested in silico. It is not there. Because herbal drugs are always a combination of active constituents. And it is not possible. You can see individually. For example, if I have a drug X, we can say a herbal drug X, I know this has component A, B, and C, which are active. And I can check the activity of A with any target, any number of targets, the activity of B with any number of target, and I can say bottleneck them to a few targets only, that these molecules attached to these targets. But you cannot see the number of molecules like at the same time, checking with all the targets. That is not possible right now. Maybe we see someday that also. Thank you. And Dr. Shiri, if there is no other comment or question, then we can wind up. Am I audible? Yes. Yes. So if there are no questions, I would like to propose a vote of thanks. So I'm Dr. Priyanka Prabhu. I'm working as an assistant professor at SIS School of Pharmaceutical Sciences, Nerul, Navi Mumbai. So ma'am, on behalf of all the participants who have enrolled for this short-term course on generative AI and its integration in teaching learning, I wish to thank you profusely for your informative session. You took us through the entire process of drug discovery and product development and how AI can actually revolutionize or transform it. You took us through all the techniques used and you gave examples of the Indian context. So it was really very, very useful. And currently, even Pharmacy Council of India has revised the syllabus. So they have also introduced all these in the syllabus. You spoke about digital twins in pharma manufacturing, pharma automation and all. So all that has been integrated now in the new PCI syllabus for the PPharm course. So it was really very useful. So thank you very much, ma'am, once again. Thank you so much.
भाई इसमें हमारे यहाँ से गया है वो ना।
नहीं करेंगे तो हेलो सनी सर। हेलो सनी सर। Sir, Manoj sir has joined. Hello, Sunny sir. Manoj sir has joined. So shall we start? Manoj sir, are you there in the meet? yes. Good afternoon, ma'am. Yes, I'm here only. Okay, good afternoon, sir. Sir, I'll just ask Sunny sir and we'll start in 1 or 2 minutes. I'll just That's connect okay, with it's okay. I'm just waiting my tayari also. Don't worry. Okay. Sure, sure. Hey, Javed sir, are you there?
So participants, our speaker has already joined. We'll be starting in 1 or 2 minutes. Javed sir, you will be introducing our speaker. Are you there? The participant who is aligned to introduce the speaker, are you there? Hello. Hello. Participant, am I audible? Yes, Sunny sir, Manoj sir has already joined. Okay, sure, ma'am. I think I'm not visible. My camera is giving certain issue to me. Okay, so participants, I request you all to please open up your cameras. So Manoj sir, with your permission, shall we start? Sir, I am not able to locate you. Sir, Very well, I am here only. Sir, very good afternoon. With your permission, shall we start? Yes, it's up to you. Yes, sir. Sir, I'd just like to inform. So firstly, sir, on behalf of all the participants, on behalf of our institute, MMTTC, on behalf of our director, ma'am, Dr. Namta Sharma, ma'am, our partnering institute, Jamia Hamdard, our course coordinator, Dr. Shireen, ma'am, I'd like to welcome you to the group. Sir, before we start, we'd just like to present a very brief introduction of yours for our participants. So for that, I request Dr. Majid to please start with sir's formal introduction. Over to you, Majid sir. Sunny sir, before Majid sir start, thanks to Manoj sir. He is one of the most prominent speaker for all our events. And sir has such a busy schedule. He is currently in Supreme Court of India, but still he is here to deliver for all the participants. So sir, special thanks from Jamia Hamdard and MMTTC Indore team, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Majid sir, please start. Yes. Shall I start, sir? Yes, please. Yes, please. Yeah. Good afternoon, everybody. Dr. Javed Majid Pandit here from Jamia Hamdard. So it gives me immense pleasure and with deep gratitude, I would like to introduce Manoj Kumar sir, who is an IPS officer and he is currently working on intelligence fusion and strategic operations unit of Special Cell Delhi. So recently he has been transferred to security establishment of Supreme Court of India. So while he is serving in key security and administrative roles, sir has a vast experience when it comes to dealing with AI integration, when it comes to policing, and also when it comes to cyber security. As ACP Supreme Court of India Security, it reflects his transition from Delhi Police's special cyber and intelligence assignment to the security framework of nation's highest judicial institution. So with humility and gratitude, sir, I welcome you to this MMTC program by DAVV Indore and Jamia Hamdard. Sir, you can continue, sir. Thank you. I will take 1 minute. Actually, I'm facing some connectivity issue. So just hold on, please. Yes, sir. Sir, meanwhile, I'd just like to brief you about this group. So this is quite a big group. We have around 480 registered participants, out of which around 350 plus are joining regularly. And all the participants are from participants are faculty members only of higher education. We have and they are from very diverse field: education, sciences, regular sciences, social sciences, arts, literature, every part of say we are available over here.
and all our participants from 25 different states. So if we go in a bilingual mode, that will be more beneficial for our participants, sir. Okay, bilingual. Okay. My screen is visible to all? So it's perfect. It's perfectly visible. Perfectly. Okay, fine. Thank you. Yes, sir, visible. Okay, just a minute. Let me check. Okay, if anyone has a issue, just you can post in chat box. Okay. Okay. So, good afternoon, everyone. I am ACP Manoj Kumar. Recently, I have posted to Supreme Court of India. So, actually, I was working before that. I was working in IFSO unit of special cell, which is meant only for the cybercrime. So, I worked here more than 7 years. So, from my little knowledge, I will try to share some points to you. The subject is today cyber secure educational ecosystem through generative AI. Generative AI, if you see, just a minute. Yes. So what is generative AI? It's nothing. It's a type of artificial intelligence. So that creates a content of its own. Actually, the human body has some limitations, but in computer, in cyber, if you will see that it has no boundary. Likewise, you can put many data into that, and it will give you a result. But it's a very pre-stage. If you'll see, it's a very pre-stage. Sorry, मैं bilingual पे आऊँगा. So it's a very pre-stage. If you'll see, अभी what we are getting, but it's depend what we are feeding to our systems. तो जो भी हम सिस्टम्स में हम सर्च करते हैं, हम कुछ चेक करते हैं, हम कुछ डाटा एनालाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में वो डाटा स्टोर हो रहा है. वही डाटा को एक कुछ सर्टेन कमांड्स देने के बाद उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिमांड, हम कुछ भी उससे डिमांड करते हैं, वो फिर डाटा प्रोसेस करके हमें वो देता है. इट्स ए वेरी वाइड सब्जेक्ट एंड वेरी डीप सब्जेक्ट. तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको रखूंगा, बट माय सजेशन इज बिफोर गोइंग इनटू दैट वी शुड नो हाउ दिस सिस्टम वर्क्स. उस लाइफ में पहले आप कैसे सेफ रहेंगे, बिकॉज सेफ्टी इज प्राइमरी कंसर्न. अगर कोई चीज सेफ नहीं होती है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसको बहुत कम हम लोग यूज करेंगे, या कोई अगर हमें लगता है कोई ऐसा प्लेस है विच इज नॉट सेफ, तो सर्टेनली वी अवॉइड दैट प्लेस. सो एआई के अंदर भी फर्स्ट वी हैव टू सी हाउ एआई वर्क्स, रादर एआई क्या साइबर वर्ल्ड वर्क. बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अभी हम लोग साइबर वर्ल्ड में वी आर नॉट साइबर लिटरेट. डिजिटल लिटरेसी इज ए बिग इशू. अभी हम लोग नहीं जानते हैं. रादर इफ वी आर डूइंग सम गुड वर्क ऑन आवर मोबाइल, वी आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी और हमें उससे वहां से कुछ मिल जाता है, हमें लगता है कि हमें साइबर का बहुत कुछ आता है. बट आई थिंक इट इज नॉट 0.001% ऑफ द साइबर वर्ल्ड. साइबर वर्ल्ड इतना वास्ट हो चुका है, इतना ज्यादा ये चेंज होता जा रहा है. सो यू विल सी कि इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है. टेक्निकली मैं बताऊं कि अगर मुझे अभी ये कुछ भी चीजें हमें बनानी पड़ती हैं, हम देखनी पड़ती हैं, तो हमें भी बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमें खुद जाकर अपने आप को अपडेट करना पड़ता है. तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो कि इसको हम कैसे करें. सो माय रिक्वेस्ट इज टू ऑल, बिकॉज आप लोग सारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, आप लोगों की मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, साइबर को डेली आपको अपने आप को अपडेट रखना, अवेयर रखना है. कैसे रखना है, दैट आई विल लेट यू इन द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. बट प्लीज इसको करिए. अदरवाइज सी फर्स्ट थिंग इज आप लोग इस वर्ड पे काम कैसे करेंगे. जस्ट होल्ड ऑन.
I got some message there. Okay, sorry. So हम इस वर्ल्ड में काम कैसे करेंगे? वी हैव टू, बिफोर दैट वी शुड बी capable to do that. We should be capable to understand that. So that is the reason. अभी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम लोग बहुत जगह जाते हैं, वहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फिजिकल वर्ल्ड में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ समझ लिया, पर डिजिटल वर्ल्ड की हमें नॉलेज नहीं है। और हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं तो वी ट्रीट डिजिटल वर्ल्ड एज ए फिजिकल वर्ल्ड, विच इज फार फार अवे। आप डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में, सॉरी, डिजिटल वर्ल्ड में बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, डिजिटल वर्ल्ड में वो चीज पॉसिबल है जो फिजिकल वर्ल्ड में हम सोच भी नहीं सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर फिजिकल वर्ल्ड में आपको जीना बहुत अच्छा आता है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत आपकी बहुत एक डीप नॉलेज है, बट डिजिटल वर्ल्ड में ये जाकर फेल हो जाती है। उसके दो बड़े रीजन होते हैं। फर्स्ट, द ओवर कॉन्फिडेंस कि वी नो ईच एंड एवरीथिंग। सेकंड, इफ वी थिंक कि ओके अगर हमें कुछ नहीं आता तो वी विल आस्क चैट जीपीटी या एआई टूल से पूछ लेंगे। सो माय सजेशन इज, ये एक ऐसी चीज है जो जो क्राइम है या जिस तरह का अटैक्स आते हैं, उनको भी पता है, क्रिमिनल्स को भी पता होता है कि जो अटैक्स हम करेंगे, कोई ना कोई एआई टूल उसको डिटेक्ट भी करेगा। तो दे ऑलवेज क्रिएट ए न्यू सॉर्ट ऑफ टूल टू अटैक द विक्टिम्स। सो अभी हम इसको थोड़ा सा, इसीलिए मेरी बेसिक में आपको इसलिए बता रहा था कि अल्टीमेटली हम आएंगे थोड़ा अवेयरनेस साइड पर आगे, बट आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसके अंदर ये बता रहा था मैं आपको कि जनरेटिव एआई आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल हो चुका है, पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड में। एवरीवन इज डूइंग सर्चिंग एवरीथिंग। आई वाज टॉकिंग टू वन टीचर ऑफ ए वन कॉलेज, तो हमने पूछा कि आप पेपर कैसे सेट करते हैं, तो आपको भी तो बहुत होगा, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। तो लिटरली क्या कि हम तो एआई का सहारा लेते हैं, कभी कभी हमें भी ले लेते हैं। अगर आप सी, एआई नो हु यू आर, you are a teacher, you are studying, giving, you are a lecturer in some college, you are doing this and that। आप जो जो चीजें पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो रख रहा है। एंड इफ आई एम स्टूडेंट, इफ आई आस्क व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर माई दिस एग्जाम, तो क्या वो एग्जाम नहीं देगा? बिकॉज आप इस चीज को सोचिएगा कि अगर जो जो चीजें आप किसी एआई से पूछ रहे हैं, क्या वो एआई उसका, अगर कोई स्टूडेंट उसको पूछे कि मुझे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, तो क्या वो नहीं बताएगा? बताएगा। तो एज ए टीचर यू शुड नो कि जो साइबर है वो आपकी हेल्प भी कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं डेंट भी कर सकता है। बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। अब आपको कई पीछे कुछ ऐसे केसेस हुए हैं सीबीएसई का, या कई और ऐसे हुए हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि साइबर में किस तरह का, साइबर की वजह से किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी आपको पता होगा, कल की न्यूज है कि जब सीबीएसई के सर्वर पर 2 मिनट में 15 मिलियन अटैक्स आए हैं, डॉस अटैक आया। सो these are the things which are very very challengeable, particular for a student, but I'm not saying कि आप एज ए टीचर आप लोगों के लिए डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट है, पर अगर कोई स्टूडेंट उससे इफेक्ट होता है तो सर्टेनली दे विल अप्रोच यू फर्स्ट ओनली। सो फर्स्ट माय focus will be on the awareness part of more, because ये जो टेक्निकल चीजें हैं इसमें बहुत सारा जो काम होता है वो एक पीछे बैठे कोई टेक्निकल आदमी कर रहा होता है, एंड यू हैव ए लिमिटेड एक्सेस। और आप उस लिमिटेड एक्सेस से कैसे इस चीज को आप करेंगे, तो उसके लिए पहले आप यू शुड बी साइबर अवेयर। तो ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एआई का यूज कितना करना है, जनरेटिव एआई का भी कैसे यूज करना है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय यू ओनली, नन अदर देन यू। आप लोग खुद डिसाइड करेंगे मुझे कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है। सो वो आपको एक बार समझना पड़ेगा
बिकॉज बहुत, देखिए आप कुछ भी उसको डाटा फीड कर रहे हैं, वो डाटा अपने पास रख रहा है, उसको वो प्रोसेस कर रहा है, वो उससे आपकी थॉट प्रोसेस को चेक करता है, वो उससे आपके लाइफस्टाइल को जज करता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अगर आपने किसी ने भी अगर कोई एआई का कोई भी टूल आपने इस तरह का ले रखा है और आप उसको अपनी डिटेल में कुछ भरते हैं, तो वो आपको पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन देगा। वो आपको तो पर्सनलाइज देगा, लेकिन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी कहीं ना कहीं जाकर वो बेचेगा, अपने आप को इनरिच करेगा, और उसके बाद आपको आगे क्या कहते हैं उसको, अपने आप को ट्रेंड करके किसी को भी देगा, तो वो आपका यूज होता है। इसके अंदर आप आगे देखेंगे, जो मैं आपको चीज बता रहा था, हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए, रिसर्च के लिए भी कर रहे हैं, कोडिंग के लिए भी करते हैं, ड्राफ्टिंग के लिए भी करते हैं। सपोज आई एम राइटिंग ए लेटर टू समवन एंड आई आस्क माय AI tool to redraft this, so he will understand ki what I am doing, what is my intention, why I am writing this letter, to whom I am writing this letter. So this thing you have to see. So what you are feeding, just please be careful about all these things. So now another thing is something, if you are asking from tool, maybe it's a so it may create some gap. Gap means, suppose what was in physical world and what is in digital world. So कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आती हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं which are not you can say correct. So first you have to see, we cannot do all these things blindly. अभी ब्लाइंडली में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए हैं, इवन लॉ में अगर आप देखेंगे, कुछ जगह भी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये किया कि कुछ उन्होंने पिटीशन तैयार करी गई, उस पर जजमेंट्स आई, वो जजमेंट पता किया तो उन्होंने फाइल कर दी कोर्ट के अंदर। जब फाइल कर दी गई तो पता लगा कि वो जजमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो दीज थिंग्स आर गोइंग इन इन ड्यू टू दिस, आपका जो भी जनरेटिव एआई है, इन सब इश्यूज से हो रहा है। तो फिर वी हैव टू सी वेरी, वी हैव टू बी रिमेन वेरी केयरफुल while using all these things. So again, suggestion is, if you are doing something personal work, if you are doing something important, secret, or some research work, please don't share this data to any AI tool. If you share, it will not become your own property, it will become the property of others also. तो पता लगा आपने जो भी किया, जो भी आपने क्लास में किया, टीचर्स ने किया, सब कुछ किया, वो सारा का सारा जाकर कहीं ना कहीं जाकर वो आपकी जितनी मेहनत है, जो भी आप मेहनत करते हैं, स्टूडेंट मेहनत करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपका नुकसान हो जाएगा। सो माय सजेशन इज, प्लीज use this AI on all these things very, in a what you can say, it's a in a very safe environment and with great cautions. तो अगेन मेरा यही, इसी के अंदर भी यही था। बहुत सारे फायदे होते हैं। वी कैन आस्क, सपोज इफ एज ए टीचर हमें कुछ पूछना है, कुछ देखना है, रादर हमें कुछ भी चीज तैयार करनी है, वी जस्ट आस्क चैट जीपीटी या और ऑल एनी एआई टूल की भाई हमें ये बताइए, वो अपने आप बना के दे देगा, 2 मिनट में बना के दे देता है। हम लोग भी कई बार यूज करते हैं, पर हमें पता किस चीज को यूज करना, किस चीज को यूज नहीं करना है। स्टूडेंट्स के लिए भी कितना अच्छा है कि आप 24/7 आपके पास एक ट्यूटर है, टीचर्स हैं, उसके लिए आपको क्या क्या आप उस पर काम कर सकते हैं। किसी कोई क्वेरी है, किसी भी टाइम आप उससे पूछ सकते हैं, बट हमेशा वो क्वेरी का रिप्लाई सही देगा जो भी आप पुट कर रहे हैं।
जो आप प्रॉम्प्ट क्या लिख, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट क्या लिख रहे हैं आप। अगर वो प्रॉम्प्ट आपने कुछ गलती थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया तो उसका रिप्लाई भी चेंज जाएगा। आप एक कोई भी क्वेश्चन जिसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं, अगर आप प्रॉम्प्ट आप देखिए 3-4 तरीके से लिखिए, 3-4 तरीके से एक ही प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आप देखेंगे उनका रिप्लाई, जो भी टूल का रिप्लाई अलग, हमेशा एक अलग आएगा। ऐसे रिसर्च वर्क के लिए, रिसर्च वर्क के लिए हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं है कि रिसर्चर्स के लिए वो जो आपको डाटा दे रहा है तो वो एक डाटा सही दे रहा है या गलत दे रहा है, दैट यू हैव टू सी। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम में, हमारे जो एआई इकोसिस्टम के अंदर ये एक बहुत बड़े बड़े, मतलब फायदा भी है नुकसान भी, इट्स डबल एज वेपन। आपको एक तरफ अच्छा भी चीज दे रहा है, एक तरफ आपको वो नुकसान भी कर सकता है। अगर कई बार तो होता है नुकसान करना तो बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकता है, तो दैट यू हैव टू सी, दैट दैट इज ओनली यू हु कैन डिसाइड कि मेरे को कितना कब क्या यूज करना है। इट इज लाइक फूड, अगर आप कहीं पर जाते हैं आपको फ्री में कहीं खाना मिल रहा है, कितना खाना आपको खाना है, ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और आदमी डिसाइड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप अपना कोई जो सेंसिटिव डाटा है या कोई भी स्टूडेंट आईडी होती हैं, उनके कोई भी आपकी आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है, प्लीज उसको कभी भी आप लोग इस तरह के यूज ना करें। इन सब चीजों को, इन सब को अगर आप यूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यूज उसका नुकसान कर सकता है। डीप फेक्स है, कई बार देखा गया है कि मॉडल पॉइजनिंग है, कि कई बार आपका कोई डाटा है, कोई आपको अटैक करता है और आपका जो सिस्टम इंफॉर्मेशन को करप्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को करप्ट करने से ये नुकसान हो जाता है कि आप जो रिजल्ट चाह रहे थे वो नहीं बन पा रहा है। तो ये एक बहुत सारी चीजें हैं विच इज वेरी वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट, ताकि आप लोग एज ए, क्योंकि आप सारे टीचर्स हैं एंड आई डोंट नो कि आप लोगों के पास डिजिटल दुनिया की कितनी नॉलेज है या क्या है। मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में होती है, पर कितनी अपडेटेड है ये एक आपको देखना है। अभी हम लोग देख रहे थे लास्ट ईयर 2025 में करीब करीब हम देखे थे कि साइबर वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड पेटेंट कितने हुए, तो ये पता चला कि करीब करीब डेली 10,000 पेटेंट फाइल होते हैं साइबर वर्ल्ड में। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर एक टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है डेली, मैं ये मानता हूँ 10,000 में तो हो सकता 50% पास नहीं हुए या उनको अप्रूव नहीं हुए, तब भी 5,000 इट्स ए बिग नंबर। तो आपको ये देखना है कि आपको कैसे करना है। जो टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है वो उसको आप कितना उसको अडॉप्ट करेंगे, कितना उसको आप समझेंगे, इट्स अप टू यू। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो भी किताबें पढ़ी थी अपने, आप सारे बड़े बड़े प्रोफेसर टीचर्स हैं, तो आपने जो जो बुक्स पढ़ी थी अब वो बुक्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंज आता है। इवन मेडिकल की बुक्स में नहीं आता, पर साइबर इज ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग ऑल दिस थिंग। और ऐसे ही सेम थिंग बट आपको जो बच्चे हैं वो जो उनको भी आपको ये बताना है कि वो बहुत ज्यादा डिपेंड ना हो जाए। उनके नुकसान क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ये पिछली बार भी हमने बनाया था, अब इस बार भी थोड़ा सा उसी तरह से मैंने ये अपना प्रेजेंटेशन बनाया है। नाउ कम टू द, अब ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं इसके लिए वी नीड ए अवेयरनेस, प्रॉपर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो ये बहुत बड़े चांस है कि आप कभी ना कभी स्ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे, स्क्रैम के अंदर फंस जाएंगे। ठीक है। सॉरी। तो मेरी आप जो मैं आपको सॉरी ये बताना चाह रहा था कि ये जो चीजें हैं आपके पास है, अभी ये क्या हो चुका है, हम लोग सोचते हैं कि साइबर अभी आ रहा है और साइबर अभी हम लोगों के पास मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक्चुअल ऐसा नहीं है। इफ यू सी, साइबर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बुरी तरह से उसने, जैसे ना वर्ल्ड वाइड वेब, इट्स ए वेब, तो उसने पूरी तरह से जकड़ लिया है। अगर आप देखेंगे कि हम लोगों को थोड़ी देर अगर हमारा मोबाइल
छूट जाए तो हम कितनी परेशान हो जाते हैं। वो छोड़ो, जो बोल रहे हो वो समझो। आज से घर की सब्जी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज डॉक्टर पापा साहब, जाएंगे तुम्हारे डॉक्टर साथ, मुकेश जी, तुम्हारे साथ तुम्हें जाओगे। यार पापा हमें सब्जी अपनी लेंगे कहाँ थी? मुकेश जी, देंगे यार। आपका माइक ऑन है मुकेश जी। थैंक यू। तो अभी मैंने बताया कि इतना ज्यादा हम लोगों को फिजिकली और मेंटली ये टेक्नोलॉजी परेशान भी करिएगा, क्योंकि अब जहां पर ओवर होती जा रही है, उन सब चीजों से कैसे निकलना है उसके लिए विल डिस्कस ऑल दिस थिंग। सो अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना है कि देखिए क्या होता है कि आइडेंटिटी क्या है इन डिजिटल वर्ल्ड में। कुछ ना साइबर स्पेस के रूल्स होते हैं, वो रूल्स को अगर आप मानेंगे तो ये आपको ताउम्र यानी लाइफ लॉन्ग आपको ये बड़ी हेल्प करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत कई बार ना जो टेक सेवी पर्सन हैं या टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग भी साइबर के अंदर किसी ना किसी तरीके से विक्टिम हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो टेक्नोलॉजी में काम तो कर रहे हैं, पर उनके जो कुछ रूल्स होते हैं जो साइबर सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, साइबर स्पेस पे सेफ रहना है, वो नहीं उनको पता होता है या वो उन चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम कुछ चीजें बताएंगे आपको, वो बिल्कुल है, ये बिल्कुल टेस्टेड है और एक्सपीरियंस बेस्ड है ये सारी इंफॉर्मेशन, और ये वर्ल्ड वाइड इनको माना जाता है। अब हम आते हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड में जब हम होते हैं तो वी आर डिजिट्स। जैसे हमारा फिजिकल वर्ल्ड में नाम है कि बता के मेरा नाम मनोज कुमार है, ये बताते डॉक्टर मुकेश साहब, ऐसे एक फिजिकल वर्ल्ड में नाम होता है। ओके, और भी आइडेंटिफाइएबल बहुत सारी चीजें होती है, पर डिजिटल वर्ल्ड में जनरली अगर मुझे आप देख रहे हैं, अभी तो हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, वो आपको क्या पता कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं ही हूँ या कोई मेरा डीप फेक चल रहा है, तो या कोई अलग इमेज बना के रखा जा रहा है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग बात करते हैं, अगर आप देखेंगे कि इस तरह के क्राइम भी हो चुका है जहां पर आपका, जैसे अगर मैं इस तरह से बैठ के बात कर रहा हूं, आप मेरे इसी वीडियो को उसको डीप फेक बना के मैं किसी से पैसे मांग सकता हूं, जबकि मैं मांग नहीं रहा हूं, लेकिन क्रिमिनल मेरे डीप फेक वीडियो को मिसयूज करके मेरे मुंह से वो शब्द करवा सकता है जो मैंने बोले ही नहीं है। इट्स ए डीप फेक। डीप फेक आप सबको पता होगा, नहीं पता तो ये है कि इसीलिए आज के टाइम में जो वीडियो कॉल्स भी होती है, हम उन वीडियो कॉल्स को भी बिल्कुल भी उसको हम क्या कहते हैं, बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। अब डिजिटल वर्ल्ड में एक चीज और भी है कि ये विश्वास कब आपको, बात आप कर रहे हैं, ये नहीं कि हर चीज पे आप मतलब कि शक करना शुरू कर दे। आपको शक कब शुरू करना है? जब शक शुरू करना है वो मैं आपको जगह बताऊंगा कि आपको किसी भी डिजिटल वर्ल्ड में कभी भी शक कब शुरू करना है। ये एक है। सो विल स्टार्ट कि हम डिजिटल वर्ल्ड में हम डिजिट्स हैं। डिजिट मतलब कि मेरा एक मोबाइल नंबर है, मेरा एक आधार नंबर है, एक मेरा पैन नंबर है, ये सारी चीजें इस तरह की हमारी डिजिटल आइडेंटिटी होती है। हम क्या करते हैं, सपोज मैं किसी को कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, सपोज आपको कोई कॉल आता है एक 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 टीचर से दूसरे या उनको अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली से, तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं मोबाइल नंबर से। ओके, तो मोबाइल नंबर हमने देखा मोबाइल पे आया तो नाम भी आ गया। लेकिन आज के टाइम में ये बहुत मतलब कि बेसिक की टेक्नोलॉजी है कि मैं किसी के नंबर से भी किसी को कॉल कर सकता हूँ। मैं आपके नंबर से आपको कॉल कर सकता हूँ। क्रिमिनल ऐसा नहीं करेगा, उसको कहेगा ये कैसे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी आदमी किसी भी नाम से उसको कॉल कर सकता है। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो क्यों, और हम आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं डिजिटल उसके नंबर से। तो हमें अपने आप को ये मानना है कि जो नंबर से कॉल आ रही है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी डिजिटल है, डिजिट्स है। लेकिन उसमें कब हम उस कॉल को ये माने कि वो कॉल फर्जी हो सकती है या कोई स्पैम हो सकती है या कोई क्रिमिनल कर रहा है, ये कंफर्म है कि एक कॉल किसी के नंबर से कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है बताऊंगे आपको। ये मैंने आपको ये थोड़ा सा उसका एक बताया है, एक क्या कहते हैं, एक्सप्लेन किया है। पर
हम इसको आगे और आगे बढ़ाते चलेंगे। इसमें डिजिटल आइडेंटिटी को जो हमारे क्या क्या हो गए हैं, हमारा नाम, जो भी हमारा पर्सनल ऑनलाइन हमारे यूजर नेम पासवर्ड हो जाते हैं, ईमेल हो जाते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी कीज हैं। उसके बाद आपको कहते हैं कोई इस तरह का कुछ हमारे बायोमेट्रिक डाटा होते हैं, जो भी इस तरह की चीजें होती है आइडेंटिटी है। अब हमें इनको बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि हम अपनी पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन, अपने घर की चाबी, अपने लॉकर की चाबी, अपने जो भी हमारा पर्सनल चीजें हैं, हम दूसरे को सौंप रहे हैं। ये आप सबको बहुत ध्यान रखना है। इवन जैसे अगर आपका जो भी सर्वर का भी बहुत सारे जगह इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है जहां पर लोग अटैक करते हैं आपके कॉलेज स्कूल के सर्वर पे। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि उस डाटा का भी कितना मिसयूज हो सकता है। सपोज आप एक कॉलेज के, आप क्या कहते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बच्चे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन है। सपोज आपकी ड्यूटी लगती है एग्जाम के अंदर, आपकी डेट शीट आ गई है कि भाई आप एग्जाम में ड्यूटी लगी है, ये लोग एग्जाम में ड्यूटी देंगे, टाइम है 9 से 12। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब फोन, उस वक्त आप कोई फोन अलाउ नहीं करते हैं, ना स्टूडेंट करते हैं, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है टीचर्स को भी मना किया जाता है। क्रिमिनल को ये पता लग गया, उसने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या अपना जो भी आपकी डिजिटल आइडेंटिटी थी आप चुरा कर आपका पता कर लिया कि आप सुबह 9 से 12 बजे तक स्कूल के अंदर, सॉरी कॉलेज के अंदर आप लोग क्लास में होंगे और वहां कोई आपका फोन नहीं होगा। उसी टाइम पर वो आपके फोन के साथ आपके घर वालों को कॉल करके आपको ये बताकर कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका कुछ भी ऐसे इश्यूज हो गए हैं, पैसे ले सकता है। आपको उनको किसी तरह से भी चीट कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? ये सर्वर पे थी आपकी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। पब्लिक डोमेन में डाल दिया तो क्रिमिनल को पता लग गई। तो पब्लिक डोमेन में क्या क्या चीजें डालनी है वो तो हमें, अब आप कहेंगे कि बच्चों की जो मोबाइल नंबर है या उनकी डिटेल, वो या वो तो एक सर्वर में होती है। अगर उन सर्वर को भी एक्सेस करने के लिए किसी ना किसी के पास कोई ना कोई क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो क्रेडेंशियल बड़े आराम से चलाए जा सकते हैं। उसके बहुत सारे मतलब क्यों बताऊंगा कि मेल भेज के अगर जो रैंसमवेयर अटैक्स आते हैं, कैसे आते हैं? वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि हम लोग अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को, हम पर्सनल आइडेंटिटी को या कोई भी सर्वर की आइडेंटिटी को, हम लोग उसको संभाल के नहीं रखते हैं। तो ये आपको बहुत संभाल के रखने वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम सोचते हैं चलो मैं कर रहा हूँ, बहुत सिक्योर सर्वर होगा, लेकिन क्रिमिनल के लिए बहुत ईजी है। वो एक सिंपल मेल भेज के, उसे ये भी पता होता है कि जो सर्वर से कनेक्टेड मोबाइल, जो जो आपके सिस्टम लगे हुए हैं, वो किसके पास, वो एक आदमी को मेल भेजकर आपका पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज कर सकता है। तो वो इसीलिए है कि कोई भी आपकी, हम ये बोलते हैं, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक डाटा या कोई भी पासवर्ड, इन सब चीजों को आप खुद से मत दें। उसमें हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगवाते हैं, बहुत सारी सॉफ्टवेयर अपडेटेड रहना चाहिए, ये सारी चीजें रहती हैं। आपको, अगर आपको मैं देखूं कि आप कोई समझदार सा आदमी हो, वो आपकी जितनी इंफॉर्मेशन आपकी, हम सबकी, मतलब आप ही क्या, हम सबकी जितनी इंफॉर्मेशन आपके, हमारे जो डिजिटल वर्ल्ड में होगी, कोई आदमी उसको बड़ा इजीली एक्सेस कर सकता है। क्रिमिनल के लिए बहुत इजी है क्योंकि बहुत सारे टूल्स आते हैं जो पेड टू, जो डाटा हमारा बिकता का है। हमारा पर्सनल डाटा भी कहाँ बिकता है? सबका डाटा बिकता है, हमारी बैंकिंग क्रेडेंशियल और जो चीजें होती हैं, हमारे पासवर्ड्स होते हैं जैसे ईमेल के या और चीजों के, कहाँ कहाँ होते हैं। हर बार आप देखेंगे कहाँ का कंप्रोमाइज, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे उनको पता कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद ऑल दिस थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो
हमें फिर मैंने आपको बताया शेयर क्या करना है, ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें शेयर क्या करना है, क्या अपलोड करना है, क्या डाउनलोड करना है, वो जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका बिहेवियर क्या है, वो पायरेटेड है या कौन सा है, ये बहुत सारी चीजें थी। मुझे तो अभी बड़ा अजीब सा लगा, कई बार मैं कॉलेजों में या कहीं उधर स्कूलों में जाता हूँ कि उनके बहुत सारा जो डाटा है, वो सॉरी सॉफ्टवेयर है, वो पायरेटेड है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर देता कौन है? क्रिमिनल ही देते हैं। उन्हें पता होता कि पायरेटेड है, जहां जहां डलेगा उन्हें पता लग जाता कि इस सिस्टम पे डला है। वो सिस्टम किसका है? माई रिक्वेस्ट इज कि आप जितने भी स्टूडेंट सॉरी आप प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, एक बार जरूर चेक करिए कि आपके किसी सिस्टम पे भी जो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है वो पायरेटेड नहीं होना चाहिए। पायरेटेड का मतलब हेलो। यह है कि आप अपने घर की चाबी ऑलरेडी किसी को दे रहे हैं, वो बैक डोर से हाँ आकर आपका बड़ा ध्यान से आपका ये काम कर सकता है, आपका डाटा चुरा सकता है। तो अगेन ये तो सब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है कि हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज के अंदर थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि जैसे कुछ इंफॉर्मेशन आती है कहीं पर भी, हम बड़ी जल्दी उसको मान जाते हैं या उसको हम सर्कुलेट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। उस जिस भी इंफॉर्मेशन को किसी भी ऑथेंटिक वे में सर्च करें, चेक करें। जब वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा उसके बाद आप इसको कहीं ना कहीं आप सर्कुलेट करना चाहें या कुछ करना चाहें। तो ये आपको पता ही है कि अभी पीछे मैं क्या बताऊं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती, बाद में पता लगा हम सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, बहुत कुछ आता है। उसके बाद हम पता चला, बाद में पता लगा कि ये तो फर्जी था। तो डोंट डू दैट, क्योंकि ये भी अगर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना भी जो आईटी एक्ट के अंदर एक क्राइम है। मैंने फिर आगे हम आते हैं जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। मैंने इसके बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी मीन कि आपको डिजिटल वर्ल्ड में जीरो ट्रस्ट रखना है। जीरो ट्रस्ट वो शुरू कहां से करना है, इसको आके मैं आपको बताता हूँ कि जीरो ट्रस्ट मीन जीरो ट्रस्ट। सपोज मैं भी आपको कॉल कर रहा हूँ कि मैं था, मैंने आपको लेक्चर दिया था, ये था, थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद कहूंगा जी कुछ पैसे दे दो, ये दे दो या कुछ इन्फॉर्मेशन। प्लीज डोंट डू दैट। कोई इस तरह का हम डिजिटल वर्ल्ड में हमें ट्रस्ट रखना ही नहीं है। और कहाँ वो शुरू होगी वो लाइन मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपको पता लगे कि हम बहुत अपने आप को समझदार मानते हैं, पर एआई आने के बाद मिस्टर जेफरी हिंटन का ये आपने सबने सुना होगा कि उनका वर्ड्स क्या थे, जिनको गॉडफादर माना गया। ये बहुत हम सेकंड उस पर जा रहे हैं, सेकंड प्लेस पे जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी डेंजरस थिंग, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये साइबर लिटरेसी का मैंने बता दिया आपको, और इसको हम आगे हम करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो ना अब आपको पता है कि साइबर लिटरेसी में हम इस चीज को थोड़ा सा आने के बाद हम डिजिटल व्हाट इज साइबर क्राइम। तो मैंने बता दिया आपको साइबर क्राइम आर दे आर द इलीगल एक्टिविटीज हैं विच इन्वॉल्व कंप्यूटर मेलवेयर, मोबाइल और नेटवर्क। ओके, ये इसको यूज भी हो सकता है, ये टारगेट भी हो सकता है। कंप्यूटर से आप किसी को अटैक भी कर सकते हो और वो टारगेट है, तो बोथ विल कम अंडर साइबर क्राइम ओनली। साइबर क्राइम को हम आईटी एक्ट 2000 और हम तो बीएनएस जो नया हमारा आ गया है, ये सब इसके अंदर ही हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगेन कोई भी आप कोई ऑफेंसिव, मैंने बताया ऑफेंसिव मटेरियल है, ऑब्सीन है या मिस इन्फॉर्मेशन है, मीम्स हैं, ये दीज आर ऑल व्हाट यू कैन से कि ये सारे क्राइम है साइबर के अंदर। नाउ द पॉइंट इज कि हमें कहाँ पर जीरो ट्रस्ट पॉलिसी है, कहाँ पर अलर्ट होना है, साइबर वर्ल्ड में अलर्ट कहाँ होना है। ये एक तीन आपको बताता हूं। ये एक ऐसी तीन स्टेज है जहां पर जब ये आपको कभी भी साइबर वर्ल्ड में दिखे, वैसे तो फिजिकल वर्ल्ड में भी कहूंगा, आपको अलर्ट हो जाना है। जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता लगा कि कुछ डर सा लगा आपको, तो आपको अलर्ट हो जाते हैं। वैसे ही साइबर वर्ल्ड में काम करना है। साइबर वर्ल्ड में अगर आपको कोई फियर दिखाए, कोई अरेस्ट का फियर दिखाए या कोई किसी तरह की पनिशमेंट का फियर दिखाए या कोई किसी तरह का मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा उसको नहीं करके कि अगर कोई भी फियर आपको दिखाए,
माई सजेशन इज प्लीज कट द कॉल। कोई फियर है, फियर को भी आप थोड़ा सा जान पहचान सकते हैं कि ये कर सकते हैं कि ये किस चीज का फियर दिखा रहा है और वो आपसे मांग क्या रहा है। आपको ये, आपका माइंड तभी अलर्ट हो जाना चाहिए जैसे कोई फियर दिखाए या ग्रीड दिखाए। ग्रीड मतलब आपको कोई लालच दे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर लालच की वजह से ये विक्टिम बन जाते हैं हम लोग। अर्जेंसी दिखाए कि अभी करो, इमीडिएटली करो, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया अभी पैसे दो, आपकी गैस कटने वाली है अभी पैसे दो, अभी आपका कोई क्या कहते हैं हम, बिल कटने वाला, फोन कट जाएगा, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है। कोई एजेंसी ऐसा नहीं करती है। पुलिस से बोल रहे हैं, कस्टम से बोल रहे हैं, ईडी से बोल रहे हैं, सीबीआई से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ वारंट है, कुछ भी हो, कोई एजेंसी इतना जल्दी कोई रिएक्ट नहीं करती। पुलिस कितना कितना जल्दी रिएक्ट करती है आप जानते हैं। उसके लिए मैं क्या बताऊंगा। ये तो चलो आप लोगों का वो था, बट रिएक्शन टाइम हमारा अच्छा रहता है। पर आपको ये बता रहा हूं कि कोई अर्जेंसी, कोई ग्रीड और कोई फियर हो, प्लीज आपको जीरो ट्रस्ट पॉलिसी याद रखनी है। उसी वक्त जीरो ट्रस्ट पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये आप एक मूल मंत्र मान लेंगे तो मैं आपको बिल्कुल, जब भी अगर आपको, तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि 99% आप साइबर क्राइम कहीं भी, अपने घर पे, ऑफिस में या किसी जगह भी, आप जो भी अपने डिवाइस को भी हैंडल कर रहे हैं, कभी आप साइबर के विक्टिम नहीं बनेंगे। फियर, ग्रीड और अर्जेंसी, जहां ये तीन दिखे तो जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को एक्टिवेट कर दीजिए। ये आप सबको पता है कि हम लोग एज ए इंफॉर्मेशन जो आप कहते हैं, हमारी एक तो सरफेस वेब होता है, डीप वेब होता है, डार्क वेब होता है, जिसको हम पब्लिकली एक्सेस करते हैं, जो सर्च इंजन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये सरफेस वेब में आती है। डीप वेब जनरली वो इंफॉर्मेशन होती है जहां पर हमें क्रेडेंशियल यूज करके रहना होता है, जैसे बैंकिंग की चैनल है, मेडिकल इंफॉर्मेशन है, कोई लीगल की कुछ, हमें जैसे जहां पर हमें यूजर नेम, पासवर्ड, अदर हम यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन जो होती है या अथोराइज आदमी को भी होती है, वो डीप वेब में होती है। डार्क वेब आप जानते हैं इसका पर्पस कुछ और था बनाने का, पहले सिक्योर चैनल थे बनाने का, पर अब ये हो चुका है डार्क वेब। डार्क वेब में इलीगल वेबसाइट बहुत सारी चलती है, एक पूरा एक अलग है, ये जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए। पर हाँ, ये बात है जो हमारी अधिकतर इंफॉर्मेशन जो बिकती है वो डार्क वेब पे होती है, पर वो कैसे उसको करना है उसको हम आगे एक बार देखेंगे। माई सजेशन इज, हमें टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अपने सिर पे हावी नहीं होने देना चाहिए। ज्यादा टेक्नोलॉजी का हावी होने का मतलब है कि हम उस पर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ ना करें। बहुत सारी दिक्कत आ रही है। ये मैंने ये मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला एग्जांपल कि एक ये इस तरह की एक मैप था, क्योंकि अभी आप है नहीं, तो ये मैप से देख के कुछ लोग, तीन बच्चे जा रहे थे, शादी से वापस जा रहे थे, मैप ने दिखाया क्लियर रहा था, वो चलते गए चलते गए। हुआ क्या कि वो एक ये पिछले साल की बात है, यूपी की बात है, बरेली की, कि वहां से आगे नदी आई थी, पुल टूट गया था और वो सारे तीनों बच्चे नदी में गिर गए। और ऐसा ये नहीं कह रहा कि एक तरह के इंसिडेंट की आप वेब देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऐसे इश्यूज आए हैं जहां पर लोगों ने इस तरह का भी, एक मिनट, तो सॉरी, सो वहां पर बहुत ऐसी ये टेक्नोलॉजी को में कई ऐसे प्रॉब्लम्स आई हैं जहां पर आप देखेंगे कि उसकी वजह से हमारी लाइफ पे भी एक बहुत सारे इश्यूज आए हैं। इस तरह की हम चीजें आपको आगे थोड़ा सा बताते रहेंगे। अभी ये थोड़े से टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम है, किस किस तरह से इस दुनिया में साइबर का क्या कहते हैं क्राइम कौन कौन सा चल रहा है, ये बड़ा छोटा छोटा सा बताऊंगा। ड्रग्स, आप बिकॉज आप टीचर्स हैं, आप भी देखेंगे स्टूडेंट्स आजकल इन चीजों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत है, क्रिप्टो जैकिंग है। क्रिप्टो मुझे लगता नहीं आप लोग बहुत ज्यादा करते होंगे, पर बहुत रिस्की चीज है। मेरी सजेशन ये है
क्रिप्टो के नाम, क्रिप्टो जैकिंग जो एक अलग है, मतलब कि आप क्रिप्टो का मैं बताऊंगा, क्रिप्टो जैकिंग में थोड़ा सा अलग आएंगे, वो आपसे बहुत ज्यादा नहीं है, कि क्रिप्टो एक बहुत ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट मैं नहीं मानता हूँ, मेरा अपना मानना। पहली बात तो यह है कि एक फ्लक्चुएट बहुत होती है, दो चार पांच क्रिप्टो हैं जो अच्छी चल रही हैं, बाकियों का पता नहीं कब क्या हो जाए, कब जीरो से 1 रुपया 1 रुपया हो जाए, या 1 लाख हो जाए, या 1 लाख से जीरो हो जाए, कभी पता नहीं चलता है। ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा है, स्पाइंग जो होती है, एस्पोनेट जो होती है, ये भी एक इस तरह का, ये जनरली आप लोगों से बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये जो सेकंड वाला स्लाइड है ये आपके लिए है। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। बुलिंग, इट्स completely, इट्स ए प्योर क्राइम। अगर आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, जहां पर भी आप हैं, बच्चों में कभी कुछ होता है, तो यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट टू पुलिस, और उसके लिए कहीं आपको थाने में जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है। साइबर क्राइम के लिए बता दो, कोई भी क्राइम हो जाए आपको किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली रिपोर्ट, रात को 2 बजे 5 बजे कभी भी हो, इमीडिएटली करें। इवन यूर ट्रैवलिंग, इफ यू आर आउट ऑफ दिल्ली, सपोज यू आर आउट ऑफ योर प्लेस, कहीं पर भी आप हो, पूरे इंडिया में हो, आपको कहीं से भी आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आके आपको बता दूंगा। इवन स्टॉकिंग इज द बिग इशू। मैं जाता हूँ कॉलेजों में, स्कूल्स में, तो वहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे को टीचर्स का भी कई जगह आया कि भाई हमें लोग स्टॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के अलावा है, तो माय रिक्वेस्ट इज, स्टॉकिंग, इन केस ऑफ स्टॉकिंग, आप इमीडिएटली कंप्लेंट लॉन्च करें। प्रॉब्लम क्या होती है, वो बाद में इतनी चीज होती है, जो स्टॉकर होता है उसका जो मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वो धीरे धीरे वो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आपके वो मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसके बहुत सारे इंसिडेंट हमारे पास हुए हैं। अभी आपका टाइम का भी थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि ये एक एक चीज पर मतलब हम एक एक घंटा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। साइबर ग्रूमिंग जनरली बच्चों के लिए होता है, यंग होता है, तो माई सजेशन आप लोगों का इतना नहीं है, बट हाँ, किसी के घर के अंदर अगर बच्चा है, और वो छोटा बच्चा है, 10 12 साल, 13 साल, 15 साल, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट आ रहे हैं। बच्चे डर के मारे बताते नहीं कि माँ बाप कैसे कहेंगे, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, बुलिंग में भी, ग्रूमिंग में भी, स्टॉकिंग में भी, वो बेचारे या तो रहते हैं। तो एज ए टीचर आई थिंक इट्स योर ड्यूटी। आप कॉलेज में भी आप देखेंगे, या आपके परिवार में भी, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, नॉट आपके कॉलेज के लिए नहीं रख रहा, कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में देखेंगे, तो थोड़ा सा आप बच्चे देखेंगे, वो या तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा, या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बोले अजीब सी हरकतें करेगा। दीज आर द सम विच यू हैव टू एनालाइज कि ये कैसे क्यों कर रहा है। उसको प्यार से बात करें एंड रिपोर्ट इमीडिएटली। दूसरा भी, जो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, लोगों को, उन्हें सब पता है, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरीथिंग, कि आप कैसे कैसे आप लोग की पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, आपका वो क्या है, तो वो आपको हिसाब से ऑफर भेजते हैं, पैसे के लिए भेजते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप देखेंगे उसमें हम लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद पैसा बहुत देते हैं, लाखों रुपए लोगों ने दे रखा है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो आप खुद भी टीचर से हैं, हर आदमी बेटर उसके लिए करता है। तो जस्ट 1 मिनट में, सॉरी कॉल आ रहा है, प्लीज 1 मिनट, एक
सॉरी, ये एक किसी एक ऐसे ही कुछ लग रहा है कि शायद कोई साइबर अटैक किसी को आया है, तो एक, हाँ, तो इसलिए 1 मिनट। सॉरी, अभी इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है हमारे पास कि कोई अटैक तो नहीं था या था। तो मैं आपको कहते हैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था, तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा बड़ा ध्यान रखना है। सॉरी, तो हम उसको कहते हैं, थोड़ा सा ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। मेरे मेरा जो मेन आपको बात कर या ये इसका लेक्चर का था कि थोड़ा सा मैं आपको जो बेसिक साइबर वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो बता दूं, उससे आपको फायदा ये रहेगा कि कभी भी आपको इस तरह की सिचुएशन में ये चीजें अगर याद आ गई तो आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। इम्पर्सोनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट मैंने बताया आपको, बहुत इजी है किसी की भी इम्पर्सोनेट करना। अभी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर मैंने देखा था, मुझे पता लगा कि प्रिंसिपल के नाम से कुछ उनको मैसेजेस आते हैं, मेल आती है कि मैं आई एम आउट ऑफ दिल्ली और ये है, आई एम आउट ऑफ स्टेट, मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत है, एंड पीपल आर पेइंग। किसी को कोई जरूरत नहीं। टीचर्स, मुझे लगता है किसी प्रिंसिपल ने आज तक तो हमें मांगा नहीं, बट these are the things which you have to be remain very careful while all these things, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजों को उनको समझने वाली बातें हैं। अदरवाइज लोग क्या कर रहे हैं आपको कि, सॉरी, तो ये सब चीजें एक बार आपको थोड़ा सा समझने के लिए हम आगे ये सारे साइबर क्राइम में आप देखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नजर मारते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये आप लोगों के बहुत मतलब कि रेलिवेंट चीजें हैं। इसमें मैं आपको जो अगले में है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर बेसिकली एक तरह का अटैक है जो आपके सिस्टम को पूरे के पूरे को हैक कर लेता है। उसको जैसे कहते हैं ना, रैंसम किसी को डरा के पैसे मांगने का होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके जो सर्वर्स हैं बड़े बड़े हैं, आजकल तो सिस्टम्स पे भी अटैक करते हैं ये लोग, उन पे अटैक करके उस सारे के सारे डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। और इनक्रिप्ट करने के बाद पैसे मांगते हैं कि इतना पैसे दो, आप इतने पैसे दोगे तो हम आपको आपका जो क्या कहते हैं, हम आपको कहते हैं इसका डाटा को रिलीज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बहुत है, आपने एम्स अटैक देखा होगा, अगर आप सबको याद है एम्स के, ऐसे बहुत सारे अटैक्स हैं। आप गूगल सर्च करेंगे रैंसमवेयर अटैक इन इंडिया, बहुत सारे, बहुत सारी जगह पर बैंक्स में या कई जगह आते हैं, कंप्रोमाइज हो जाते हैं। उनको बहुत हम तरीके से क्या कहते हैं इनके साथ इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जितना भी डाटा है, डाटा को रखने के 3 तरीके हैं, और तीनों तरीके आपको यूज करने हैं। एक तो जहां पर आपका सिस्टम है उसमें वो डाटा रहता ही है। दूसरा, क्लाउड में रहना चाहिए, क्योंकि क्लाउड के अंदर डाटा वो इनक्रिप्ट, वो साइबर अटैक कभी करेगा तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा, आपको डाटा, और अगर वहां पहुंच भी गया तो आपको तीसरा जो डाटा रखना है वो रखना है आपको आपके एक अलग से हार्ड डिस्क लेके, हार्ड ड्राइव पे अलग से रख देना है। एक दो इश्यूज और बताता हूँ जो मुझे लगा कि जैसे एक बार किसी हॉस्पिटल में हुआ था और एक किसी कॉलेज में भी हुआ कि वहां पर जब साइबर का अटैक आया, रैंसमवेयर में उनका सर्वर कंप्रोमाइज कर लिया। अब वो सिस्टम चल नहीं रहा था, तो वहां पर जो भी उनके सिस्टम को क्या कहते हैं मेंटेन कर रहे थे, उन्होंने क्या करा कि जो उन्होंने एक डाटा अलग हार्ड डिस्क पे बना के रखा हुआ था वो भी सिस्टम से लगा दिया। ऐसे टाइम में बिल्कुल नहीं करना है। उससे हुआ क्या कि जो डाटा जो उनके हार्ड डिस्क में था वो भी रैंसमवेयर की चपेट में आ गया और वो भी इनक्रिप्ट हो गया।
रैंसमवेयर को बहुत मुश्किल होता है डिक्रिप्ट करना। क्रिमिनल अगर करेगा भी तो ये मानिए, अगर उसने सपोज आपने किसी ने पैसे दे दिया और उसने डिक्रिप्ट कर भी दिया, लेकिन मानिए आप ये कि उसके बाद आपका डाटा तो कंप्रोमाइज हो गया, डाटा तो वो अपने पास एक कॉपी रखेगा रखेगा, वो डाटा सारा का सारा कहाँ चला गया, वो सारा डाटा चला गया आपके मतलब मान पब्लिक डोमेन में, कहीं ना कहीं वो ब्लैक जो डार्क वेब में कहीं ना कहीं बिकता मिलेगा। बहुत तरह के वायरस आते हैं, ट्रोजन्स आते हैं, वॉर्म्स आते हैं, ये सारे पता ही वायरस है, आप सबको बहुत ज्यादा डीप पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके फिशिंग लिंक्स आते हैं, बहुत सारे इस तरह के आते हैं। जैसे अभी रैंसमवेयर वेयर का जो सबसे ज्यादा तरीका है कि कहीं ना कहीं जो भी सिस्टम से लगे हैं उनमें मेल आती है, उस मेल के अंदर एक फाइल होती है, जो फाइल दिखने में नॉर्मल सी होती है, जैसे आप उसे खोलेंगे उस फाइल के अंदर कोई ना कोई वायरस या इस तरह की कोई फाइल होती है जो डाटा को इनक्रिप्ट कर देती है और रैंसमवेयर अटैक हो जाता है। बहुत सिंपल सी है। तो माई रिक्वेस्ट है कि जो भी इन चीजों को आप यूज करते हैं घर पे या बाहर, आप इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। ये बहुत ज्यादा आप लोगों के काम की नहीं है, इसलिए रखा था कि टाइम होता है, क्योंकि अब टाइम का भी थोड़ा सा है, आगे और चीजें बताएंगे। सॉरी। नाउ कम टू ये कुछ साइबर वर्ल्ड में अभी आप लोग, क्योंकि आप सारे इंटेलेक्ट लोग होते हैं, आप ये देखेंगे कि इसमें जो आपके राइट टू फ्रीडम है उसका भी किस तरह से हम लोग, मतलब हम लोग भी कहेंगे कि उसका यूज या मिसयूज कैसे हो सकता है, वो भी आपको एक बार देखने की जरूरत है। जैसे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, अगर इंटरनेट में उस इंफॉर्मेशन को दबा दिया जाता है, या जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलनी चाहिए या मिस इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, दैट इज आल्सो ए वो आपका जो ओपिनियन चेंज है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन को बीच में हैक करके उसको चेंज करके वो आप तक पहुंचाते हैं। तो ये फ्री इंफॉर्मेशन जो है, फ्रीडम है जो आपकी, वो उस चीज को कहीं ना कहीं कर्टेल भी किया जा सकता है साइबर वर्ल्ड के हिसाब से। तो आप लोग सारे के सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इन सब को ये है कि इन सब चीजों पे सोचने की जरूरत होती है कि हमें कैसे सही इंफॉर्मेशन जो हमें बुक से ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट एक लिमिटेड होनी चाहिए। बहुत ज्यादा होने से वो आपका कहीं ना कहीं माइंड को मैनिपुलेट करती है। हेलो सर। जी सर स्मॉल डाउट सर। या अभी क्या है कि मान लीजिए घर में बैठ के अपने बच्चे के साथ कुछ अच्छा चैनल देख रहे हैं, मान लीजिए न्यूज़ चैनल देख रहे हैं सपोज, तो सडनली सडनली उसमें से कुछ खराब एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्या क्या आता है, सॉरी? अभी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या कुछ फैमिली मूवी देख रहे हैं, अच्छा सा मूवी देख रहे हैं घर में बैठ के बच्चों के साथ, या तो सडनली वो कुछ मतलब वायलेंशियल ऐड आता है। ओके मतलब मान लीजिए अभी कुछ मतलब मैं बता नहीं सकता, ठीक है, बैड। ओके, आई अंडरस्टूड। सी एक्चुअली आपको पता है कि टेक्निकली ये सारे के सारे ना कि बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं। तो आपको क्या देखना है कि यू हैव ए फैसिलिटी वेयर यू कैन ऑप्ट फॉर ए एड फ्री वर्जन। उनका कोई भी आप ले सकते हैं, जनरली यूट्यूब के अंदर होता है, एड फ्री होता है। यू कांट स्टॉप कि आप ये सोचें कि मैं इस एड को बाईपास कर लूं, बिकॉज आपको फ्री में क्या मिल रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग in free, you are nothing, we are not getting anything free. For that we are paying our time, our resources, our information. So आपको फ्री नहीं है, उनका वो आपको एड दिखा के पैसा ले रहे हैं, उस पैसे से आपको फ्री दिखा रहे हैं, जो आपको लगता है फ्री है पर एक्चुअली में फ्री होता नहीं है वो। तो वो आपको देखना है। तो उसके लिए यू कैन सिंपली गो एंड आस्क ऑप्ट फॉर ए एड फ्री चैनल। जो भी चैनल आप लेना चाह रहे हैं, जो भी आप सर्विस लेना चाह रहे हैं,
अगर ऐड आ रही है तो यू हैव टू बाय दैट वन, वो फिर पैसा आपसे लेते हैं। अदरवाइज और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। अगर आप उसकी ऐड बंद करेंगे तो पता लगेगा वो भी बंद हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि वो जो आपको जो भी मूवी दिखा रहे हैं, अगर आप समझे आप बाहर जाते हैं, 2 3 4 5 लोग जाते हैं मूवी देखने, अगर 100 रुपीज की भी टिकट है एवरेज, जबकि ज्यादा ही होती है, तो वो 500 रुपीज की टिकट हो गई और आपके हो गया, और एंड यू आर गेटिंग फ्री, तो वो पैसा कहाँ से निकालेगा? तो दैट फॉर दैट व्हाट ही इज डूइंग, वो आपको वो पे कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा अगर कोई इस तरह की है तो यू कैन मेक ए कंप्लेंट आल्सो, बट वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, बिकॉज इन साइबर में नहीं, साइबर इज ए साइबर में कोई बाउंड्री नहीं है, इट्स ए बाउंड्रीलेस थिंग। तो आपको बहुत मुश्किल है कि कहाँ से आप, अच्छा नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप वो देख कहाँ से रहे हैं, वो मूवी देख कहाँ से रहे हैं, मतलब कि वो कौन सा आप किस सर्वर पे आप गए हुए हैं, क्या आप अमेजन पे हैं, या आप क्या कहते हैं आपका नेटफ्लिक्स पर हैं, या कोई ऐसे कुछ इस तरह के हैं, जैसे आप अगर देखेंगे ये आपका इसे बोलते हैं टेलीग्राम पे बहुत सारे पायरेटेड मूव आते हैं, नहीं नहीं, ये सारे पढ़े। टेलीग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपने जैसे बोला इट्स ऑन अमेजोन और दैट कॉल नेटफ्लिक्स, और इवन sometimes as you told that for YouTube we can opt for a price not going for free version, but TV9 जो है एक न्यूज चैनल है। कौन सा? TV9? या न्यूज चैनल। ओके। सो न्यूज चैनल में भी बीच बीच में आ जाता है, सडनली मान लीजिए कोई खराब ऐड आ जाता है कॉन्डम का, ऐसा वैसा कुछ ऐड आ जाता है, तो फॉर दैट यू कैन मेक ए कंप्लेंट। मैं आपको अभी इसका लिंक बताता हूँ एंड में, आई विल टेल यू इन द एंड कि आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है वेयर यू कैन फाइल योर कंप्लेंट। ओके, एंड यू कैन एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी एक ना BCIA ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके एक इनकी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, वो लोग भी इस चीज पे चेक रखते हैं कि ये ऐड ऐसी आई या ना है। बट आई विल लेट यू नो बिकॉज फिर रह जाएगा सारा, बिकॉज वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इसको भी बहुत सारा है। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नाउ आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट वन थिंग कि आप ये देखेंगे कि हम टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा माइंड पे हमारा असर कर रहा है। इफ यू सी अभी इस साल में ही स्टार्टिंग में 3 बच्चों ने सुसाइड किया, सिर्फ इसलिए कि उनको मोबाइल एक्सेस मना कर दिया था घर वालों ने। 3 साथ है, और उन्होंने अगर आप देखेंगे 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। 8 पेज सुसाइड नोट लिखने के बाद दे ऑल सिस्टर जंप फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ देयर हाउसेज। सो टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा हमारे पर इम्पैक्ट आ रहा है, वी हैव टू बी सी। और हमारे साथ साथ सेम थिंग विद अवर किड्स आल्सो। अगेन द सेम थिंग की कहते हैं, मैंने आपको एक ये दिखाया था कि एक बच्चे को AI से दोस्ती हो गई, ये character.ai करके एक वो था AI टूल, और उन्होंने बात करी, सारा कुछ करता रहा। एक टाइम पे वो AI भी फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने कहा यू आर स्टेन एंड यू गो एंड डाई। और बच्चे ने इतना मान लिया, 14 ईयर चैप, एंड ही ऑन 28th of February 2024 he committed suicide. So that sort of things we are facing in this cyber world. So बच्चे इतने ज्यादा उनको इंगेज कर लिया कि दे थिंक कि जो जो ये AI टूल्स हैं यही इनके कहते हैं सब कुछ है, भाई बहन माँ बाप सब कुछ यही है। दे आर नॉट इनटू अस, कहीं ना कहीं हमारी गलती पे, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग टू देम इन रियल वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग द shoulders of this AI. So this thing we have to be very see, and we have to remain very careful. तो आपको ये एक बार देखना जरूरी है, एंड द सेम थिंग विद योर स्टूडेंट्स आल्सो। ये आपका वो था। नाउ अगेन आई एम सेइंग कि ये दीज आर सम है कि आजकल ट्राई के नाम पे, पार्सल के नाम पे, डिजिटल अरेस्ट के नाम पे, फैमिली मेंबर अरेस्ट कर लिया है, इन सब के नाम पे इस तरह के बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं। और अभी इसमें आप देखेंगे कि कई बार आपको देखेंगे कि कोई भाई आपका कोई टैक्स रिफंड आ रहा है, बिकॉज नाउ अभी ये आने वाला है, इट इज गेटिंग स्टार्टेड। जुलाई के में आपको देखेंगे यू विल रिसीव, एवरीवन रिसीव मैसेज और मेल, इवन हमको भी आता है कि हम आपका टैक्स रिफंड आ रहा है, तो प्लीज लिंक दिस, क्लिक इन्फॉर्म एंड अपडेट योर इंफॉर्मेशन, ऑल दिस थिंग, दिस इज ऑल ब्लडी नॉनसेंस। अगर पैसा आना होता है ना तो टैक्स का डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। देयर इज नो नीड टू फाइल ऑल दिस थिंग टू अपडेट योर इंफॉर्मेशन इन सम रैंडम लिंक्स।
KYC एक्सपायर हो गया है, गलती से पैसे मैंने आपको भेज दिए हैं, आपके अकाउंट में आ गए, डोंट डू। अगर आपको कोई इस तरह की आती है, प्लीज कॉन्टेक्ट योर लोकल पुलिस स्टेशन। अब नाउ दिल्ली में तो हमारे पास है और स्टेट्स के अंदर भी होता जा रहा है। वट वी आर डूइंग कि हमने एक इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क बना दिया है। यू गो एंड टॉक टू देम, और उसके बाद हम उसे कर लेंगे। एक मिनट, एक और फोन आ रहा है, प्लीज, सॉरी। सॉरी, अभी मैं ये किसी किसी सीनियर ऑफिसर्स का फोन आ रहा था। ठीक, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी इनका एक पासपोर्ट आना था, पासपोर्ट का इन्होंने भरा, कल इसकी वेरिफिकेशन हुई, सारा कुछ हो गया। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी इनको एक मैसेज आता है कि जी ये पासपोर्ट आपका डिलीवर होने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये है, इसे लिंक को ऑन करिए, वो करिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सी हाउ फास्ट द क्रिमिनल्स, हाउ क्रिमिनल्स कितने फास्ट, इतने जल्दी हैं कि इन्होंने क्या करा कि कल इन्होंने अपना भरा, आज वो पासपोर्ट अभी निकलना है। इन्होंने एक मैसेज बनाकर, क्रिमिनल ने इनको भेज भी दिया कि आपका मैसेज आ रहा है, इसी लिंक है, आपको हम इसको दबाइए और इंफॉर्मेशन भेजिए, हम आपको पासपोर्ट भेज रहे हैं। आप देखेंगे विद इन 24 आवर्स, विद इन, कल इसी टाइम पे इनकी एक पुलिस वेरिफिकेशन हुई है, आज 24 आवर्स में अभी पासपोर्ट वहां से रिलीज होगा। लेकिन उससे पहले क्रिमिनल, तो ये इन्फॉर्मेशन निकली कहाँ से, ये क्वेश्चन है। ये अभी आपके सामने ये जो कॉल आ रहा था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद इन 24 आवर्स क्रिमिनल कितने फास्ट है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन पता लग गई कि इनका पासपोर्ट आने वाला है। दे क्रिएटेड वन फेक लिंक और उनको भेज दिया। अब इन्होंने ऑन कर दिया, तो अभी मैंने इनको सिर्फ ये सजेस्ट किया कि आप इसको अपने फोन को वो करा दीजिए, सॉरी अपने अकाउंट को ब्लॉक करा दीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा 15 मिनट बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितनी तेज और कितनी क्राइम का क्या पैटर्न चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है ये क्राइम, ये आपको समझना है। एक इसमें आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप FIR दर्ज कराते हैं, सपोज आपने ऑनलाइन FIR दर्ज कराई है, ऑनलाइन FIR की एक इंफॉर्मेशन अभी तक ये चल रहा है। अभी हम इसको हमने कुछ जगह ठीक कर दिया, कुछ जगह करना है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपको मोबाइल नंबर होता है, उस पर डिटेल होती है। तो व्हाट क्रिमिनल आर डूइंग, वो आपके फोन को, जो हमारे ये पोर्टल होते हैं, ओपन होते हैं, उनको चेक करते हैं, उनको उनमें से आपकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर आपको पुलिस अफसर बन के कॉल करते हैं। FIR दर्ज होने के बाद अगर कोई कॉल आती है, माई सजेशन इज प्लीज गो टू योर पुलिस स्टेशन डायरेक्टली बिफोर एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन यू रिसीव वन फोन। उसका एक थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इट्स वेरी, और खासकर ये जब आपका मोबाइल फोन चोरी होता है उसमें ये ज्यादा आता है। जब मोबाइल चोरी हो रहा है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है कि मोबाइल का आपको बताएंगे कि हमें मोबाइल मिला है, जस्ट पे अस सम अमाउंट, हम आपको रिटर्न कर देंगे, ये है वो है। और वो आपको अपना आपका ही फोन दिखाएंगे, मीनिंग दिया वो आपको फोन भी दिखाएंगे, बिकॉज जिसने फोन चोरी किया है वो आपको एक तो चोरी करके ले गया, और वो आपको फिर क्या कहते हैं, आपसे वो दूसरी तरह से भी क्या कहते हैं, पैसे लूट रहा है। थर्ड थिंग, इशू एक और आ रहा है, जब आपका मोबाइल अगर बाई चांस चोरी हो जाता है तो देखेंगे मोबाइल चोरी होता है, थोड़ी देर बाद तो पैसे निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं? सो उसमें क्या होता है, क्रिमिनल आपका सिम जो होता है, उस सिम से पैसे आपको वो अपने दूसरे फोन पर डालकर
वहां से आपका जो यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करके पैसे निकालना है। तो माय सजेशन है, जैसे ही फोन चोरी हो, इमीडिएटली ब्लॉक योर फोन एंड योर बैंक अकाउंट। कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा कॉमन सा है, तो यू हैव टू बी रिमेन वेरी केयरफुल। तो ये है, ये आपके सारे वही चीजें हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट। अगेन डॉट एपी के फाइल्स होती हैं। डॉट एपी के फाइल्स जब भी आएंगी वो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज करेंगी। आपके डाटा सर्वर हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, सबको सर्वर को कंप्रोमाइज करेंगी। जहां पर भी डॉट एपी के फाइल लिखी है, प्लीज डोंट ओपन दैट फाइल। चाहे कुछ भी आ रहा हो, प्लीज डोंट ओपन। अगर किसी आप ग्रुप पे कभी आता, लोग क्या करते हैं, ग्रुप पे डालते हैं, सबने ऑन किया, आजकल आंख बंद करके ऑन करते हैं, सबके फोन कंप्रोमाइज होंगे। तो जैसे अगर किसी को आता और आपको लगता है कि यह इमीडिएटली अलर्ट कर दे। हमारे पास भी कई ग्रुप में आ जाता है, कई पुलिस के ग्रुप में भी, कि कोई ना कोई किसी का फोन हैक हो जाता है, वो खुद ही डालता है, पर कोई फोन हैक हो जाता है, तो जस्ट डू वन थिंग, अलर्ट कर दो कि इट्स डेंजरस फाइल, प्लीज डिलीट इट, और कोई इसको डाउनलोड ना करे। ओके, ये सारी चीजें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। इनका काम क्या, आपकी इंफॉर्मेशन चुराना होता है, हरासमेंट किया जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों से कनेक्टेड है। व्हाट्सएप पे आजकल बहुत कुछ चल रहा है। व्हाट्सएप पे आजकल ये डॉट एपी के फाइल्स आ रही हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट का आ रहा है, ओटीपी आपका चुराया जा रहा है, फिशिंग लिंक मेलवेयर आ रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, उन सबको अवॉइड करें। व्हाट्सएप आज के टाइम में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है साइबर क्राइम फैलने का। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कोई आपका सीनियर बोल रहा है कि आपको पैसे दे दो, नहीं देना। कोई आपके बच्चे के या आपके परिवार के आ रहा है, तो माय सजेशन है, फोन काटें, दोबारा उनके नंबर, अपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाके उनके उस नंबर पे कॉल करें। कॉल करके उनसे कंफर्म करें, उसके बाद करें। उसी कॉल को मत वो करें, जो कॉल आई ठीक है फोन काटें, दोबारा उसको अलग नंबर से अपने फोन से कॉल करें। अगर कंफर्म है तभी उनको करें, नहीं तो आजकल आवाज और नंबर करना बहुत इजी है। ये सब वही चीजें हैं। तो अगर आपका कई बार आपका व्हाट्सएप भी अकाउंट भी हैक हो रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड लॉग आउट होगा। उसके लिए आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और आपको ईमेल, हर मोबाइल आपके व्हाट्सएप पे ध्यान रख लीजिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और आपका ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए। ये नहीं होगा तो बहुत चांसेस है आपकी आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट हैक होगा। और इसलिए बोल रहा, उस अकाउंट से बहुत सारे क्राइम हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, बात अलग है। जैसे मैंने आपको बताया है, अकाउंट में आप जो एक फर्स्ट ये है अकाउंट जहां पर आपका आप इसे खोलेंगे, सेकंड स्टेप पे आप जाएंगे तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन लिखा है। इस पे आप बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। ऊपर ईमेल एड्रेस लिखा है, इस पे आप अपना ईमेल डालें, आज ही डालेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्रिमिनल बहुत अधिकतर लोग कंप्रोमाइज होते हैं इन सब चीजों से। सेम चीज फेसबुक के साथ भी है। फेसबुक भी इस तरह से ही काम करता है, उस पर भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड अदर यू आपको बड़ा ध्यान रखना है, इन सबका बना के रखना है। ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये हैक करना इजी होता है कि अगर आप इसमें इसके वो नहीं रखेंगे। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये सारे ये सब फेसबुक के हैं, क्योंकि आपके लिए भी हम वी हैव ओनली 10 मिनट, तो फिर आप क्वेश्चन आंसर को रह जाते हैं। हम उस पर आगे नहीं जाएंगे। आगे हम आपको लेके चलेंगे सीधा ऑनलाइन गेमिंग पर। तो आई डोंट नो हाउ मेनी यू आर इनटू दिस। बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ऑनलाइन गेमिंग इज ए वेरी वेरी डेंजरस। ये बहुत नया तरीका है आज के टाइम में साइबर क्राइम क्रिमिनल द्वारा आप लोगों को विक्टिम बनाने का। क्या इसका मेथोडोलॉजी है, क्या इसका तरीका है, आई विल नॉट गो इनटू दैट, टेक्निकल है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आई विल नॉट, बस ये है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो यू आर एट रिस्क। इसमें दो तरीके से रिस्क है। एक तो आपका जो कंप्रोमाइज होता है, सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी जो कंप्रोमाइज होती है वो तो होती है। आपका डाटा, आपका बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाती है। सेकंड, इसके अंदर क्या दिक्कत आती है कि सपोज आप पे कर रहे हैं, उनको कुछ पैसा पे कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आप गेम खेल रहे हैं, आपने पैसा लगाया, 10,000 लगाया, 15,000 जीत लिए, बट सम टाइम यू, और वो पक्का है आपका होगा ही होगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। क्योंकि साइबर क्रिमिनल हैं, वही गेमिंग चला रहे हैं, वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं, सब ऊपर एक ही है।
तो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि वो जो पैसा चीट करते हैं लोगों से, डिजिटल है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, दूसरे में वो पैसा वो खर्च कहाँ करेंगे? बहुत कुछ तरीके से बहुत कुछ करते रहते हैं, बाकी बहुत सारा चंक वो क्या करते हैं, आपसे जो पैसा ले जाएंगे वो क्लीन अकाउंट पे लेके जाएंगे, लेकिन जब आपको पैसा देंगे वो फर्जी अकाउंटों से देंगे। तो हमारा एक सिस्टम होता है जिसमें हम फर्जी जो पैसा होता है, चोरी का पैसा या चीटिंग का पैसा, तो ट्रैक करते हैं। तो वो करते करते अगर पैसा आपके अकाउंट में आ गया तो आपके अकाउंट को हम ट्रैक करते हैं और उसको हम फ्रीज कर देते हैं। सो ये बहुत खतरनाक चीज है। आप इसको मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, पर्सनल फाइनेंसिस लॉस हो रहे हैं, आप देखेंगे कितनी प्रॉब्लम है। आई कैन, मुझे पता है कि आप सब ने कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर आया होगा। तो ये आपको देखना है। हम ये गेमिंग पे बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि फिर आगे की तरफ चलेंगे। इट्स ए वेरी वेरी लेंथी सब्जेक्ट। और आप भी देखेंगे प्रॉब्लम कितनी है, ना नींद आ रही है, डेली लाइफ डिस्टर्ब है, कोई मोटापा हो रहा है, कोई कई तरह की प्रॉब्लम्स है, तो वो आप समझ सकते हैं। अगेन कम टू द अनदर थिंग कि अभी बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती हैं ये फर्जी वेबसाइट आ रही है, तो वो अब आजकल HTTPS वाला इशू खत्म हो चुका है कि भाई आजकल सारी फर्जी अकाउंट HTTPS ही मिलेगी आपको, जिसपे सिक्योर हम होता है, जिसपे लॉक बना होता है। कई ऑफिशियल साइट HTTP भी हो सकती है, पर अब HTTPS तो फर्जी तो सब वही बना के भेजते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीजों का, इसको चेक करने के लिए फिर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि फर्जी है, इसको कैसे करना है आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी आप साइट पे देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट हमारी लिखी हुई है https://जीवन प्रमाण.gov.in। अब उस पर उन्होंने क्या करा, सब कुछ वही बना के .online कर दिया। अब ये अलग है, अब लोगों को लगेगा कि ये एक्चुअल साइट है, तो उससे और बिल्कुल उसके जो डिस्प्ले और उसका जो पोस्टर सब आपको प्रॉपर मिलेंगे। बहुत इजी है, आप भी जानते हैं AI से कितनी जल्दी आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, वो अपने आप को होस्ट भी कर देगी उसको। तो ये रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। तो ये है अगेन ऑनलाइन मैचिंग का आजकल टिंडर बब्बल, हम मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने साइबर क्रिमिनल पकड़े थे, हमने उनसे पूछा था कि इन्फॉर्मेशन आप कैसे लेते हैं, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है। तो उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा सोर्स है जो ये इस तरह की आपके जो ये टिंडर और इस तरह की जो मैच मेकिंग जो कहते हैं साइट्स होती है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम वहां से उठाते हैं, मैट्रिमोनियल साइट से उठाते हैं, फेसबुक से उठाते हैं, जो भी जिस तरह के कह रहे हैं, इस पे हम सबको लेके एक जगह इकट्ठा करते हैं और हमें बड़े आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक आदमी के बारे में। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल अपलोडिंग एनी सच इंफॉर्मेशन टू सच साइट्स। अभी ये फेक सर्विस, अभी जैसे गर्मियों के होटल्स के, धर्मशाला का, हेलीकॉप्टर, रेलवे टिकट, इन सब की बहुत बहुत ज्यादा फेक वेबसाइट चल रही हैं। तो प्लीज बी केयरफुल। उनके जो नंबर भी होते हैं वो भी मिलेंगे आपको, फर्जी मिलेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि अब वही है कि क्या क्या होता है वो बहुत एक बहुत बड़ा हो जाता है। आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे, और जब भी आप करेंगे और आप देखेंगे कि अगर सपोज आप मेक माई ट्रिप को पेमेंट कर रहे हैं सपोज, या तो वो जो आप पेमेंट करेंगे वो अकाउंट नंबर से भी एक बार आ जाता है कि क्या अकाउंट में, किस अकाउंट में जा रहा है। अगर वो अकाउंट में नहीं जा रहा जो जिस नाम से आप सर्विस ले रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये फर्जी अकाउंट है। ये एक छोटा सा एक मैंने आपको टिप दिया है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसे मैंने आपको मैट्रिमोनियल का बताया था, इसके अंदर भी बहुत सारे फेक लोग ऐप बनाकर वो अपना प्रोफाइल बना के लोगों को चीट करते हैं, और लाखों लाखों रुपया इसके अंदर चीट होता है। तो प्लीज बी केयरफुल। जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड में लोगों से नहीं मिलते हैं, प्लीज डोंट, वो जीरो ट्रस्ट पॉलिसी है, डोंट ट्रस्ट देम, कुछ मत दीजिए। आपको लगेगा ऐसा कि ये सब कुछ ठीक है, पर होता नहीं है। तो अगेन वाईफाई इज फ्री वाईफाई इज वेरी बिग बिग चैलेंज। don't my suggestion is don't use free Wi-Fi if certainly you want। सपोज आप होटल में कोई लोग बोलते हैं हम जा रहे हैं या क्या करेंगे, माय सजेशन इज कि चलो फ्री कुछ जब आपको सर्फिंग करनी नॉर्मल कर लीजिए, बट व्हेन यू वांट टू पे, यू वांट टू यूज बैंकिंग सर्विस और सब इस तरह की सर्विस है, दैट्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम वाईफाई, फ्री वाईफाई, एंड जो आपका मोबाइल डाटा उससे आप उसको यूज करें। ये अगेन सेम चीजें हैं, हम आपको बहुत ज्यादा नहीं है। हनी ट्रैप का एक इशू है, अगेन द सेम थिंग। ये सारी वही चीजें हैं जो थोड़ा सा घूम फिर के हम लोग इसे करते हैं। हनी ट्रैप का भी है, तो कि अब नेक्स्ट भी आ रहे होंगे।
आज के टाइम में फेक शॉपिंग बहुत चल रही है, शॉपिंग साइट्स हैं ये। आप जब भी करेंगे तो फिर वो एक सबसे बड़ा है कि जब पेमेंट करने जाए जो अकाउंट आता है उसको भी अगर आप वेरीफाई करेंगे तो पता लग जाएगा कि वो सेम है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर रखना पड़ेगा। अगेन कम टू दिस थिंग कि आप सबको पता होगा नेवर शेयर ओटीपी। जनरली बहुत सारी चीजें ना, अगर आप देखेंगे हमारा ओटीपी कहीं ना कहीं सेव भी तो होता है ना। तो बैंक के अंदर बहुत सारा डाटा ऐसा होता है वो भी कंप्रोमाइज हो जाते हैं। गूगल का डाटा कंप्रोमाइज हो जाता है, फेसबुक का डाटा कंप्रोमाइज हो जाता है, ये होता रहता है। तो इसीलिए जो आपकी तरफ से अपनी है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है या कुछ हम बदलते रहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं ये आपको करनी पड़ती है। हम लोग अवॉइड करते हैं कि चलो छोड़ो करने दो यार, लेकिन ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी एक्टिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि वो रियल टाइम में हमें एक वो दे रहा है, या हमारे बायोमेट्रिक्स को हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखेंगे जो पासवर्ड हमारे पास हमने बना रखे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज जरूर हो जाते हैं। कहाँ होते हैं वो आप देख सकते हैं। साइबर बुलिंग का मैंने आपको बताया, लॉटरी स्कैम, सेम फाइनेंशियल फ्रॉड, सेम थिंग इज देयर। सिर्फ मैं आपसे एक चीज बड़ी बताना चाहूंगा इसमें कि वाई वी नीड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर कोई हमारे क्राइम भी हो जाता है तो एज पर लॉ, लॉ में ही लिखा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज क्यूर। Prevention is better than cure. Everything is permanent. Again, I want to say one more thing कि सब whatever you are uploading, you may delete it, but it is permanent. आप डिलीट कर भी देंगे वही परमानेंट है। एक बार आपका डाटा जो भी वो हुआ इट्स परमानेंट, वो फिर कभी नहीं हट सकता। आपको बता दिया कि स्टॉक, फाइनेंशियल, रेपुटेशनल, बिजनेस लॉसेस हैं, हरासमेंट बहुत है। सपोज आपके कुछ आप कॉलेज का डाटा आप मेंटेन कर रहे हैं, कुछ इशू आ गया, कंप्रोमाइज हो गया, बहुत ज्यादा आपको लोगों को दिक्कत हो जाएगी। फिर आप सब भागते रहते हैं पुलिस ये, और बहुत लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। और अगेन वंस अपलोडेड कांट बी डिलीटेड। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमने आपका इन्हीं चीजों पर थोड़ा सा बनाया था। ये सारे आप लोग समझदार लोग हैं तो आपको थोड़ा सा इन सब चीजों में ज्यादा पता होगा, फिर भी इतने हैं। एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इवन वन थिंग आई वांट टू से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आपको बता दें, इवन स्टोरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन योर डिवाइस इज ऑफेंस। ये इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि अगर आपके मोबाइल में या आपके डिवाइस में किसी में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाई जाती है देन यू आर लायबल फॉर ए ऑफेंस। तो अगेन द सेम थिंग। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, नेवर अलाउ योर एनीवन टू यूज योर बैंक अकाउंट। नेवर शेयर एनी क्रेडेंशियल, इवन योर इन फैमिली, योर पासवर्ड और your credentials of this, because what criminal are doing, criminal are they are alluring people कि आप हमें अकाउंट ला के दो, तो अकाउंट लेने जाते हैं आप लोग। किसी को भी आपके जानकारी, कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी, वो आपको आपका दोस्त हो सकता है। ये रियल इंसिडेंट है जो जिन्होंने लोगों ने अपने रिलेटिव्स के, अपने कजन्स के, अपने भाई के अकाउंट भी क्रिमिनल्स को भेज दिए थोड़े से लालच के अंदर। तो माई रिक्वेस्ट इज नेवर अलाउ एनीवन टू यूज योर बैंक अकाउंट। दूसरा एक चीज और है, आप ध्यान रखें कि कभी बैंक आप जाएं, अगर कभी कोई अकाउंट खोलता है या खुलवाता है, आजकल ये बहुत ज्यादा क्राइम चल रहा है, कई लोग मिले हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कौन कौन है पर बहुत सारे हैं। तो जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, चेक योर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। खासकर उसमें दो चीजें जरूर याद करिए, पहला एक उसका मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ये दोनों आपकी होनी चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल क्या करते हैं, कैसे ना कैसे करके यंगस्टर को भी या किसी का अकाउंट खुलवा लेते हैं। उसमें चालाकी से क्या करते हैं, साइन तो करते हैं, सारी डिटेल आपकी होगी, ईमेल और आपका मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे और उसको खुद यूज करेंगे। और उसको करने के बाद वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि क्रिमिनल जितना पैसा करता है वो म्यूल अकाउंट बोले जाते हैं, ये सब खुलवा के ये लोग पैसा बाहर ले जाते हैं। और फिर पुलिस आएगी तो वो जिसके नाम पे अकाउंट है उस पर आएगी, फिर बाद में चेक किया जाता है। तो ये सब रियल है, ये सब चल रहे हैं क्राइम, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये सारे के सारे वो मैंने आपको बताई दिए। पहले एआई का बहुत ज्यादा नहीं है, नाउ टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया। एंड में 2 मिनट में आपको बता दूंगा
if you want to remain protected in cyber world, use some free of this apps हैं। ये संचार साथी ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बहुत अच्छा ऐप है। आप ये देखेंगे, ये मोबाइल पे भी इसका है और इसका ब्राउजर पे भी मिल जाएगा। तो इसमें कई सारी फैसिलिटीज हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी सस्पेक्टेड कॉल आती है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका कोई फोन चोरी हो चुका है, खो गया है, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं, किसी ने फर्जी तो आपके नाम से नहीं करा लिया, वो पता कर सकते हैं। आपका जो मोबाइल सेट है वो जेन्युइन है, कोई चोरी का तो नहीं है, या आप खरीदने जा रहे हैं कोई चोरी का तो नहीं है, यू कैन इजिली चेक। और कोई आपको कोई इंटरनेशनल कॉल आती है, फर्जी कॉल आती है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगेन मैंने बोला कि आपका ईमेल कभी कंप्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आप, ये साइट है हैव आई बीन कॉल्ड, इस साइट पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, उसको चेक करिए, उसको चेक करिए, उसको आप चेक करिए। क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका डाटा कितना कहीं कहीं कंप्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ है, ये बता देंगे आपको। तो आप उसको, ये फ्री है, सारी फ्री के साइट है ये सारे। आपको कोई लिंक आता है, कोई वो लिंक में आप उसे खोलना है नहीं खोलना समझ में नहीं आ रहा, कोई वायरस है, कोई फाइल है, उसको उसमें कोई वायरस तो नहीं है, उसका बिहेवियर क्या है, तो ये वायरस टोटल करके एक साइट है, इस पे उसको लिंक को कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। ये बिल्कुल सिंपल सी है, ये आपको उसको बता देगा कि फर्जी है या उसका कोई बिहेवियर इस तरह का नहीं है। इसमें थोड़ी सी एक है, कई बार क्या होता है, क्रिमिनल क्या करते हैं, जनरली इमीडिएटली कोई लिंक बनाया और भेज दिया। उसका नुकसान ये होता है कि उसको थोड़ा सा पता करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको काफी आइडिया 90% पता लग जाएगा कि ये जो लिंक है ये कोई फिशिंग लिंक है या क्या नहीं है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं। एक बहुत अच्छी साइट है, ये भी है, ये stopncii.org है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी आदमी, खासकर लड़कियों के लिए, कोई आपको ये कह रहा है कि मेरे पास आपकी कुछ ऐसी फोटोज हैं, प्राइवेट फोटोज हैं, मैं उसको शेयर कर दूंगा किसी को, सोशल मीडिया पे कर दूंगा, अदरवाइज वो कुछ भी उसके बारे में बकवासबाजी करके कुछ एक्सटॉर्ट करना चाहे या किसी तरह का फेवर लेना चाहे, तो आपको कुछ नहीं करना, पुलिस में तो रिपोर्ट करनी है, पर उसके बाद आपको क्या करना है, इस साइट को खोलिए, इस पे अपना केस बना के इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद जो होगा कि अगर ये फोटो कहीं पर भी सोशल मीडिया पे होगी वो डाउन हो जाएगी। आप तो कोई इसको अपलोड करना चाहेगा तो वो फोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। अगेन, आपके फोन में कितने ऐप्स हैं, क्या बिहेवियर है, कोई मैलिशियस तो नहीं है, कोई आपके लिए डेंजरस तो नहीं है। ये एम कवच 2 करके ये टीडक का एक ऐप है और बड़ा सिंपल सा फ्री का ऐप है, इसको आप डालिए। इसको आप क्या कहते हैं, अपने फोन पर डालिए, ऊपर इसको क्लिक करेंगे, ये आपके पूरे मोबाइल को स्कैन करेगा। इसमें कुछ परमिशन मांगेगा, दे दीजिए क्योंकि सेफ है, वो स्कैन करेगा। आपके फोन में कितने सारे ऐप्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं या मेलिशियस हैं या डेंजरस हैं या सेमी डेंजरस हैं, क्लीन है, सब बता देगा। जो डेंजरस है उन्हें रिमूव कर दीजिए। और कई बार ये कुछ ऐसे भी दिखाता है, वो एक बार आपको पता लग जाएगा, कुछ तो डिफॉल्ट आते हैं, अदरवाइज उनका बिहेवियर सबका बता देगा। बड़ा अच्छा ऐप है, ये फ्री है। अगेन लास्ट ये है कि अगर आपको साइबर क्राइम में कभी भी कोई साइबर क्राइम होता है, कुछ जैसे अभी राव साहब ने पूछा कि वेयर ही कैन फाइल ए कंप्लेंट, सो www.cybercrime.gov.in है। इस पर आप सारी की सारी साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर सकते हैं, टोटल कहीं से भी कर सकते हैं। बट अनदर थिंग इज, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो, जहां पर आपका पैसा गया है, अटेम्प्ट हुआ वो नहीं, जहां पैसा गया वहां 1930 को कॉल करें। www.cybercrime.gov इन पे आप सारी कंप्लेंटें कर सकते हैं, फाइनेंशियल भी कर सकते हैं, पर फाइनेंशियल मेरी सजेशन है कि 1930 पे करें, क्योंकि 1930 पे जैसे ही आप करेंगे तो पैसा, आप, हमें पता लग जाता है कि आपका पैसा कहाँ गया है। 3-4 इंफॉर्मेशन मांगते हैं हम, आपके बैंक का नाम, बैंक का अमाउंट कितना था, यूटीआर नंबर क्या था, डेट एंड टाइम क्या था। उसके बाद वो सारा का सारा हम उसको ट्रैक करते रहते हैं। ट्रैक करने के बाद उस पैसे को हम जहां भी होता है रोक लेते हैं, विक्टिम को वापस दिलाते हैं। बाकी जो कंप्लेंट है www.cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करेंगे, उसका फायदा ये है कि आपको कहीं पर भी हो, इमीडिएटली कंप्लेंट करेंगे, उस पर एक्शन शुरू हो जाता है। अटेम्प्ट भी होता है तब भी आप करें इसके ऊपर। अटेम्प्ट भी किया है, क्योंकि अटेम्प्ट करा है, आपके पास सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर पता लगा कोई क्रिमिनल ने अगर क्रिमिनल ने कहीं और अटेम्प्ट करना चाहेगा तो हम उसका नंबर और उसका जो भी फोन नंबर है या कोई लिंक है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा, इस पे cybercrime.gov.in पे एक फायदा एक और भी है कि अगर आपके पास आप चाहते हैं कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता या चाहती,
आप इसको एनोनिमस कंप्लेंट कर सकते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड टूल है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर आप साइबर के बारे में अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं तो आप इसको करेंगे, तो साइबर अवेयरनेस के बारे में हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं, लेक्चर्स, वीडियोज और रीडिंग मटेरियल है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बड़ा अच्छा ऐप है साथी ऐप। अभी इस पे क्या है कि अगर कोई भी आदमी जो भी किसी को फाइनेंशियल फ्रॉड में ना फंसे, उसके लिए सेबी का एक बहुत चेक था ये, कि अगर आपको लगता है कि आप पैसा, आप क्या कहते हैं, कोई आदमी आपसे कह रहा है कि मैं आप पैसा लगाइए और मैं आपको रिटर्न दिलवाऊंगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो कहेगा ठीक है कराइए। तो जो भी वो आपको अकाउंट नंबर दे रहा है और जो भी वो आपको या क्यूआर कोड दे रहा है या जो भी किस टाइप का है, आप इस ऐप के अंदर जाकर, जो ये ऐप आपका है, सारथी ऐप है, सेबी का है, इस पर चेक करिए। अगर वो ऐप, सॉरी अकाउंट नंबर इस ऐप के ऊपर वेरीफाइड है तो पैसे दीजिए, वरना ये मानिए वो फर्जी है। सिंपल सा एक लाइन का तरीका है। चाहे वो कितना ही कुछ कह ले, आपको 1 रुपया नहीं देना। अगर आपने उसकी यूपीआई जो से पेमेंट मांग रहा हो आरटीजीएस से या कोई अकाउंट से कोई भी पैसा मांग रहा हो, बिल्कुल आपको नहीं देना है, अगर इस पर वो वेरीफाई नहीं है। अगर वेरीफाई है तो बिल्कुल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेबी का बिल्कुल बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। आप अगर कहीं दे भी रहे हैं तो आज इस पर चेक कर लीजिएगा, आप जान के आप देखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा ये वो मिलेगा। ये अलग है। फाइनली ये हमारे एक साइबर दोस्त है, जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, इसके बहुत सारे हैं, इस पर आप डाल लीजिए। इसका ये लोगो मैंने दिखाया है, आपको डेली अपडेट आएंगे साइबर के बारे में, क्या क्या क्राइम चल रहा है, कैसे बचना है। सेम दिल्ली पुलिस का हमारा ये है, इसको भी आप अपना स्कैन करके आप डाल लीजिए। व्हाट्सएप चैनल है दिल्ली पुलिस का, बहुत ईजी है। क्राइम से कैसे बचना, कहाँ क्या रिपोर्ट करना है, एवरीथिंग we are providing our, we are updating on this account. तो अगेन यही है, एंड में ये थोड़ा सा हो गया कि गोल्डन आवर है। कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो विद इन 1 आवर अगर आप करेंगे तो हमारी बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि हम पूरा का पूरा पैसा आपको रुकवा दें इमीडिएटली। जैसे ही आप रात को अगर 3 बजे भी कॉल करते हैं तो हमारी टीम उसी वक्त शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरे इंडिया में 24/7 ये एक टीम्स काम करती हैं। बैंक के लोग काम कर रहे होते हैं तो इमीडिएटली हम पैसा रुकवाना शुरू कर देते हैं। तो हम ये करते जा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था cybercrime.gov.in का, ये उसका मैंने आपको फेस दिखा दिया इसका, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड, सॉरी 10 मिनट लेट हो गया, पर ये है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, नाउ यू कैन शेयर। यस प्लीज, एनीवन? Participants, if you have any questions, just type in the chat box. Sir, questions से ज्यादा आप जी, हेलो हेलो, Hello, sir. May I ask one yes question, please, sir? yes. Sir, my name is Dr. Harpreet Kaur. Yes, Sir, ma'am. I want to know, is there any security assessment software or mechanism that should be used before adopting AI tool? AI tool? Yes, sir. Actually, a tool, every tool has a behavior. See, first thing is clear कि every tool is, he is using, taking your data. It's a confirmed. तो आपका वो डाटा लेके जाएंगे। अब नाउ से सेफ और नॉट सेफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो एक्चुअली क्या होता है, सपोज इफ यू आर टेक, हाँ वन मोर थिंग, वी आर जनरली जो ये हम टूल्स या जो इस तरह का लेते हैं, ऐप होता है हमारा, हम गूगल प्ले स्टोर से लेते हैं, तो नॉट एवरी ऐप ऑन प्ले स्टोर सेफ। बट वो जहां पर होता है तो उसके बैक हैंड पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उस डाटा को एनालाइज करते हैं, एंड दे आर चेकिंग वेदर दैट ऐप इज सेफ और नॉट, दैट इंफॉर्मेशन इज सेफ और नॉट, तो वो अपना करते रहते हैं। पर अगर कोई नया आ गया है, सो माय सजेशन इज बिफोर यूजिंग दैट सॉर्ट ऑफ ऐप और टूल,
please go and read something about that product. So that is the best way. Otherwise ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई टूल हो जिससे हम उसको वेरीफाई करा पाए. हाँ, VAPT होता है. सपोज सर्वर आपके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है तो VAP टेस्ट होता है. वो दैट इज फॉर सर्वर्स एंड अदर थिंग्स कि वो चेक करते हैं, बट नॉट इन योर थिंग. बट यू जस्ट गो एंड रीड अबाउट दैट कि उसका बिहेवियर क्या है. यस. Right, sir. Thank you, Sir, sir. may I ask one question? Yes, please. सर, मेरा नाम डॉक्टर पंकज है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने एक पैटर्न देखा है जो डार्क वेब से बहुत से क्रिमिनल्स क्राइम कमिट करते हैं. आपकी डार्क वेब पे. जी सर मेरी आवाज आ रही है अभी? यस यस, आप बताइए Sir, प्लीज. we have seen one pattern of committing the crime. That many times we used to see that they used to commit a crime by way of using dark web. तो ऐसे केसेस में हम कैसे इंश्योर करते हैं कि ऑफेंडर जो है वो बिहाइंड बार होंगे, स्पेशली जब डिफरेंट जुरिडिक्शन से ऑफेंस होते हैं. That is the reason. That is the big challenge. That's what I'm saying. ना कि cyber is a it's a boundaryless crime. So it's a very difficult for them. That's what I'm saying. If you वो हम देखिए, that is the for investigation हम लोग करते हैं, investigation करते हैं. We have tools, we have international treaties between the countries. बहुत सारा डाटा हम उनसे शेयर करते हैं, वो भी हमसे लेते हैं, because इसी तरह से हम क्राइम कर है और वी आर ट्रैकिंग दीज पीपल. काफी लोगों को हम ट्रैक कर रहे हैं, काफी लोगों को पकड़ रहे हैं, बट स्टिल इट्स ए चैलेंज. इतना फिजिकल वर्ड वाला थोड़ा सा दिक्कत है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उसके लिए आपको अपने आप को, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अवेयरनेस इज द की. तो इफ यू आर अवेयर तो उसमें आप फंसेंगे नहीं है. अदरवाइज बहुत सारा क्राइम आजकल जितना फाइनेंशियल फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट है, सब कंप्यूटर से चल रहा है. अभी उसमें वहां गवर्नमेंट को बहुत कुछ किया, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया उस पर. कंबोडियन गवर्नमेंट से बात की और एजेंसी से करी और उनको हमने कर रहे हैं. वी आर डूइंग दैट. यस. Thank you so much, sir. Yes, please. Sir, I have another question. Sir, Yeah, like ma'am. we are using, we are using different Gmails for my different purposes I am using. So, Yeah. I have also purchased Google Space also. है ना? Yeah. This is a paid thing you have to purchase in Yeah. order to keep your data. Sir, my question is to what extent does Google digital infrastructure ensure our cybersecurity, privacy, and data protection, sir? See, Google actually again was the same thing. How safe? We can say safe because Google is a big company. But अगर आपको, if you know, Google का 16 बिलियन जैसे credentials compromise हुए थे. So nothing is safe in digital world. One thing is very clear. Okay, sir. So अगर 16 billion means 8 बिलियन तो पीपल है. वी हैव 8 बिलियन पॉपुलेशन है. तो आप बताइए 16 बिलियन वाले की हमारे जैसे 2 3 4 चीजें हैं. ये सब चीज चल रही है ना. दैट ही वी हैव टू सी. तो बट क्वाइट सेफ फिर भी है. वो रिस्टोर करते हैं. दे हैव बैकअप प्लान, सब कुछ है. सो that we can say, but we have to trust because we are buying the facilities. पर ये है कि रिस्टोर करते हैं. तो भाई आपको मैंने बताया ना कि you just check, you can check your email from that the website. Have I been pawned? So if you see कि आपका डाटा कहीं compromised है, it will show. Even dark web पे भी है तो it will show कि your data is leaked, your password is leaked. So आप you can change it. That is the only way. Otherwise उसके अलावा और कुछ ऐसा लगता नहीं है कि होगा. Yes. Because individuals Gmail with individual Google Space is bit safer, sir. Because otherwise, yes. Compromise तो yes. Every data है ना. Google हुआ, Facebook हुआ, Meta का हुआ था, even X का compromise हुआ, बहुत सारे हैं. LinkedIn का भी सुनने में आया हुआ है. So these are the things. It's a continuous. It's a sort of की एक competition है criminals and the between these some companies. Everyone is doing all these things. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. जी सर, जी ये जो हमारे इंफॉर्मेशंस जो है लीक होती हैं जिन साइट से, जिन ऐप से या
इस तरह की जितने भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और जो है क्या कहते हैं, इस तरह की साइट हैं, तो क्या हम इन साइट्स को बाउंड नहीं कर सकते कि आप कुछ इंफॉर्मेशन के अलावा और सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते? वो इंफॉर्मेशन देखिए दो तरह से लेते हैं, एक तो होता है डिक्लेयर्ड, एक होती है अनडिक्लेयर्ड, दोनों चीजें हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप देखेंगे अभी एक नया लॉ आया, डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये दो एक एक्ट में, ये एक ना नया लॉ आया हिंदुस्तान में भी, अभी आया 2023 में, उसके रूल्स अभी फ्रेम हो गए हैं मेरे ख्याल, या होने वाले हो गए हैं। तो उसमें हमने ये क्या है कि अब इसमें बहुत ज्यादा पेनल्टी लगाई, इवन 250 करोड़ तक की पेनल्टी का प्रोविजन है, अभी थोड़ा सा चल रहा है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या कहते हैं, अगर आपको डाटा सेव करने के लिए पूरा, जो भी कंपनी डाटा ले रही होगी उसको पूरा सेफ रखना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल भी है, या दैट्स वी आर डूइंग। अब कितनी इंफॉर्मेशन लेनी है, इस पर भी बहुत कुछ अभी चल रहा है, जितनी जरूरत है उतनी लेंगे, फालतू नहीं ले सकते। यस, उसमें डीपीडीपी एक्ट में बहुत सारी चीजें इस तरह की आई हैं। यस, लॉ इज देयर, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ये। जी, थैंक यू सर। Sir, I just want good to evening. share. Sorry, ma'am. Please go ahead. नहीं नहीं, आप बोलिए फिर मैं पूछती हूँ। Oh, so thank you so much. Sir, just I want to share one experience of mine, why I am so much worried about Google Space. Because sir, once I lost my data from my laptop. So Yeah. it was crashed. I don't know how come, though I also save equally on one, on another, this hard copy also. I don't know, unfortunately, that was also not working, and most of 50% data of mine was lost. So my, my higher authorities, they suggested me to now start working and shifting all of your work on Google Drive. But the space was very limited, and I purchased the space from, Google Drive. I lost my 10 years of my own pics also, sir, my family pics, everything, every memory of mine, it was lost, almost of 1 decade. Sir, now when I usually, after a week, I uploaded everything, whatever I am doing my work on my, laptop. Yes, yes, So it yes, always, sir, it always asks before, uploading my, any kind of my own family pic, they always ask from me that, are you reliable? Do you feel reliable on this very Google space? So are you ready to upload your, this pics or not? So that's why I'm asking, if my pics are not safe, how come my data is safe in Google Drive? So this was my concern, sir. Actually, the concern is, that's why I'm saying that if you want to keep your data safe, I think my suggestion is you go for some hard disk, you buy a hard disk and transfer all the data into that. That is the best way. Otherwise, it's a cloud. Means what is cloud? It's a server somewhere in outside your city or your country. See, every device is hackable. I told you. Okay. So my suggestion is to keep your personal photos or all these things. You can you can take one hard disk and you can transfer all your data into that and keep updating after some time. That is the, I think, best way. Otherwise, Google is even my data is also on Google. I have some pictures, my family pictures are there. बट ये है कि उनके पास ये होता है कि सपोज वो दे नेवर कीप वन प्ले। वो अगर आपका जो आपका डाटा है ना, इट इज सपोज गूगल एक सर्वर पे है, बट उसकी 2 या 3 या 4 कॉपी उन्होंने कहीं ना कहीं बैकएंड पे भी रखी होगी। सपोज somebody or you lost your data from this thing from your Google space, so they will provide you from the backend. तो ये उनका एक फैसिलिटी होती है। बट माय सजेशन इज if your pictures are something, some private pictures are कईयों की अपनी फैमिलीज की अपनी होती हैं, तो don't put that pictures on your that cloud. It is better you keep in some hard disk. That is the best way. Yes. Yes. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Good evening, sir. Yes. My name is Priyanka Yadav. Yeah, ma'am. Sir, I want to know that how is safe about how is it safe about this that locker, DigiLocker? How much safe it is? Ma'am, DigiLocker is a government. DigiLocker is quite safe, but it depends. Suppose if I ask you how safe is your house, it depends, not your house. It depends how you protect by putting locks and other things also, camera and all these things. So that is the same way that the DigiLocker is safe. But if your passwords and other things are weak,
then it's a weak. Otherwise, if you have protected well, like WhatsApp, I told you, if your WhatsApp is fully two-factor authentication and all these things are right, and your OS operating software, your app is updated, it's safe. But if you are not caring, मैंने कई बार देखा है लोगों के पास they don't use वो 1 2 3 4 डाल दिया पासवर्ड and doing all these things है. कोई कॉल करता है कि मुझे आपका अपना पासवर्ड देना, उसको दे देते हैं. If you're doing that, so the thing is safe. But if what do you say, passwords and other things are as per norm, it is safe. Nothing to worry about that. DigiSafe is safe. Yes. Because we are keeping our Aadhaar card, PAN, everything yes. important document in that. So if the security is so much now, that is a challenge in today's world. So this can hike by the hiker. Yeah, actually, what I told that if Google is compromised, Google is making everything. Now you can understand. So Google is suppose is compromised. So we can say कि everything is compromised. But ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है. बहुत हमेशा टाइम पे गवर्नमेंट are doing many taking steps to protect all these things. So it is quite simple. बल्कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है. मेरे हिसाब से ये अभी काफी सेफ है, कोई ऐसा इशू नहीं है. तो nothing to worry. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Yeah, good afternoon, sir. I have one query. जी. Sir, myself Rishabh Baghel, assistant professor, DVC Jalo. Sir, क्या कह रहे I have a query regarding spam calls. Spam calls. Yeah. I have activated full do not disturb from my call service provider, that is you. But still I am getting so many spam calls. So how can I avoid that? Actually, that the spam, how it works, spam is work. Suppose a person is reporting it's a spam call. So criminals, what they are doing, they are procuring new SIMs from different number. जब तक उनको spam के अंदर उनको registered होता है ना, before that what they are doing. So, but for that, what you can do, you can activate one facility in your phone. I don't know you have. कि वो क्या होगा कि जो भी unknown number होगा ना, it will unknown number को वो मिस कॉल के अंदर ले जाएगा and it will not वो आपको शो करेगा उस पे, but call will not come to you. That is the best way. So that you can do. और जब वो अगर what is the name of that application? Pardon? So what is the name of that application? And that application is the facility is provided by the phone company only. You can find out. तो वो आपको क्या करेगा इमीडिएटली आपके जो अननोन नंबर होगा जहां पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल सेव नहीं है उसको वो चेंज कर देगा, वही ले जाएगा. यस. ओके राइट सर सर मैं संघर्ष मिश्रा सर, असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से. जी सर एक्चुअली एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था, वो गूगल पे से. तो गूगल पे से उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड. एक मिनट, जस्ट टू सॉरी मनोज सर, आप अपना टाइम देख लीजिएगा. क्वेश्चंस तो काफी बहुत आ रहे हैं. जी चलिए कोई नहीं, आप देख लीजिए कोई दूसरे हमारे कोई और भी एक हमारे. हाँ, तो आई थिंक वी कैन टेक दिस एज अ लास्ट क्वेश्चन. सर इस लास्ट देख ले. यस प्लीज. यस. हाँ ओके सर, आप कंटिन्यू करिए प्लीज. थैंक यू मैडम, थैंक यू. तो सर उन्होंने बैंक में इन्फॉर्म किया, तो बैंक ने उसको कंसीडर नहीं किया. बोला कि हम ये जो अलग अलग यूपीआई आईडी है, यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इन सबको हम कंसीडर नहीं करते हैं कि फ्रॉड हुआ है, तो हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे. तो ये कहाँ तक सेफ है सर कि हम अलग नहीं सेफ नहीं है. बैंक एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी कर रहे हैं. एक बैंक आरबीआई में एक एम्बर्समेंट होते हैं, आरबीआई में आप उनको कंप्लेंट करिए. ऐसा नहीं है कि वो हम उन्हें नहीं मानते, वो सारी फैसिलिटी देते हैं. आपने कंप्लेंट तो करनी है पुलिस को. एक ना आरबीआई में ऑम्बड्समैन होते हैं, उनको आप कंप्लेंट कर सकते हैं. आरबीआई की साइट पे उनका सब कुछ दे रखा है, तो वो फिर उसको डिसाइड करते हैं. बैंक नहीं करता, बहुत बार होता है वो पैसे देते हैं उनको. ठीक है, तो फिर उनको बहुत सारे लोग वो करते हैं, मतलब कि वो फिर वो पैसे दिलवाते हैं आपको अगर आपका अकाउंट में आपके कोई फॉल्ट नहीं है. बल्कि अब तो ये फैसिलिटी आ रही है कि अगर आपको चाहे आपकी गलती भी हो, क्योंकि आपने पैसा बैंक को दिया है और उसके बाद तो बैंक लायबल है. इस तरह की भी कुछ इस तरह की इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उनको कहिए बैंक में वो आरबीआई में कंप्लेंट करें
आने के बाद आप उसको देखेंगे तो वो आपको क्या कहते हैं सेफ, मतलब कि पैसा मिलने के चांसेस है। आई डोंट नो हाउ मच अमाउंट दिस बैंक इज लायबल देन, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो कई चीजें होती है, देखनी पड़ती है, बट ऑम्बड्समैन उसको डिसाइड करते हैं। दैट इज द बेस्ट वे। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। यस ओके मैम। Yes, sir. I think we'll just end it with there's a participant who will be giving the vote of thanks for you, sir, especially. So Sunny, sir, are you there? Ma'am, I'm here only. Okay, I think we have a lot of questions. So on that note, I request responsibility. Vineet Pratap Singh, sir. I request Vineet Pratap Singh, sir, to please propose the final formal vote of thanks. Good afternoon, sir. I hope I'm audible to everyone. I hope I'm audible to everyone, sir. Yes, Yes. sir. Yes. Vinit, sir. Good afternoon, respected speaker, distinguished panelists, and fellow participants. On behalf of the organizing university, I would like to express my sincere gratitude to Shri Manoj Kumar sir, who is currently serving with the Securities Development of the Supreme Court of India, for delivering his enlightenment lecture on cybersecurity, educational ecosystem through generative AI integration. As such, valuable insight on generative AI and cyber literacy and deepfake technology and digital identity, especially cyber frauds and online job and investment scams, and cyberbullying of the children and data privacy breaches, like with the help of the software authentication, has and sharing the personal information have greatly enriched in our understanding of the cybersecurity and the challenges in the present digital age. Your practical examples and expert guidance has provided us and all the fellow participants with the important lessons on staying safe and with the responsibility in the cyberspace. I would also like to express my heartfelt thanks to the management and the chief panelist and the faculty members of the organizing teams and all the participants for making this event successful. Thank you, sir, once again. Thank you for your valuable time sparing and delivering a wonderful lecture to us, sir. Thank you so much, sir. Manoj sir, this was from our participant, and especially we would like to thank you from Jamia Hamdard. Your lectures have always been so informative, and you can check the chats. They are all full. How participants have enjoyed your interactive lecture. So thanks a lot, sir. बहुत ज़्यादा आपके लिए thank you. आप इतने अपने busy schedule में से निकाल के आप आए. So sir, thanks a lot for you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. So Sunny sir, what we have aligned with the next session? Yeah, ma'am. So for next session, as we have, I have already told you people that we will be discussing two very important things. First is your assignment. Second is your any tools you find it difficult till now. We can have a hands-on work on that. So we have a very small. We have already 30 minutes infused in the previous session. So we are going to be very quick on that note. Just give me a minute. I'm just sharing my screen. I hope my screen is visible. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So participants, the assignment which we have already discussed, that the assignment will not be very critical. All the activities which you have done previously in your sessions, those things will be shared as an assignment with you people. So there are only two activities which is to be done through an assignment. First is you need to make an interactive video.
what you need to make, you need to make an interactive video either using Nearpod or Edpuzzle as per your comfort zone. What do you need to do? A 3 to 10 minutes video. Then you need to identify 5 questions, and those 5 questions are to be integrated in the Nearpod or that interactive lesson, and you need to share us the link of that thing. Second part is you need to make a quiz, a simple quiz, gamified quiz. I should gamified quiz using booklet. These two are the simple assignment questions which is to be made. So simply what and how you're going to submit us. So I have already provided then Google form. Once you click on the Google form, you'll excuse me, sorry to interrupt you. Just a minute. Try. Let me complete. Just give me a minute to complete. Once I complete, I will be restating everything in Hindi also. Please give me a minute to complete. My question is it compulsory to prepare the quiz on booklet if I want to make it on quizzes or background, whatever? No, ma'am, it is not compulsory. I was telling that only. So that's why I'm saying all the queries, all the questions you are having. Yeah, I'm going to answer each and every query of yours, but please wait for a while. Just let me complete how you are going to submit the things. Else it will become very tedious for you as well as 21 participants who are available in the meeting to understand everything. I hope you understand that. So please be patient. I will be answering each and everything. I hope it is clear to everyone. Okay, so once you are done with your assignment, we have made this Google form. This Google form consists of 2 parts. One is your personal details. You need to specify your personal details. Since it is a long group, you need to find your name. This is your enrollment number and this is your name. You need to find it out. You need to click. When you are clicking this, please be very vigilant. If you are clicking on, if your name is Jayanti, please click on Jayanti also. I don't use click above or below. That will hinder your submission. Once you choose that information, you will get on the next page. Okay, you need to have your email also. So I will just putting my email right now. Once you put on that, you need to, this is your actual submission page. You need to identify what are the actual, what is the subject area for making that interactive video, the link of your Nearpod or your Edpuzzle, and you need to make a document or you need to Word file. You need to upload that Word file over here. In this Word file, we require all the questions actually which you have made now. We require those questions. So those questions to be uploaded over here. And okay. Was deleting this. And finally, you need to upload the link for जो उन्होंने कल बताया था ये करना है वही बोला है उन्होंने करने का। मैडम प्लीज आपका आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज आप अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो अपना माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए। प्लेट और प्लेग्राउंड / any other gamification quiz tool. I was writing that, so I have just updated that only right now over here. So is it clear to everyone कि आपको जो भी आपका वीडियो जिस सब्जेक्ट एरिया से बना रहे हैं वो सब्जेक्ट एरिया, देन उसका नियरपॉड क्विज, नियरपॉड वीडियो का लिंक, देन आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं जो आपने क्रिएट करे हैं,
वो क्रिएटेड 5 क्वेश्चंस वो भी हमें चाहिए, और फिर आपका एक आप एडिशनल क्विज जनरेट कर सकते हैं, दैट विल बी जस्ट गेमिफाइड क्विज, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते Please हैं। in English, sir, please. Ma'am, just give me a minute, ma'am. I'm repeating everything in English too. So, what I was saying, the assignment will contain these 3 parts. First, what is the subject area? If you belongs to commerce, then if you are making something about fiscal policy, then you have to make your subject area over here. Then the video link of Nearpod or Edpuzzle, whatever tool you are using, you can use over here. Then the questions which were created by you, those questions you need to upload those questions in a single PDF or Word file. You can upload over here. And finally, a gamified quiz with 5 questions. I will be sharing this document with you people. This document which I have created, I will be sharing. Each and every detail is shared over here. So that will be also shared. You need to put the link of your booklet, playground, or any other gamification quiz tool over here. So once you are done, you need to click on the submit button and your assignment will be submitted. This is the basic which is required from our side. I hope it is clear to everyone. Yes, Okay. sir. Now, Yes, if you have for your queries, the floor is open. If you have any queries, I am happy to answer those questions. Sir, good. Please Sir, share if- the document please and share the link in link for this WhatsApp group. submission. इसका सर टाइम बढ़ाने का करिएगा। सर टाइम मैंने आपको 6 तारीख का दिया। 6 तारीख को आपके जो है 6 तारीख को आपको सबमिशन करना है। तो 6 तारीख को, क्योंकि आप लोग एटलीस्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी भी 350 प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं। 350 प्रतिभागी का असाइनमेंट एवेल्युएशन के लिए एवेल्युएटर के पास जाएगा, वो लोग चेक करेंगे। Madam, please don't be worried about link part. All the individuals who are very worried about the link part, the things will be shared in your WhatsApp group. You need not to be worried. Everything will be shared. I have repeated it multiple times. हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मैं बोल रहा हूँ। Okay. Thank you, sir. Sunny sir. And sir, Ma'am, one individual at a time. Just request for one individual at a time. बताइए। अलका मैम बताइए। Sir, I was saying that whatever AI tools and platforms have been shared by the guest, if you can just prepare one doc file, and you can just share it with us, that will be very helpful. Ma'am, I will try. I cannot commit that since multiple things are going on right now. I have around 4 programs which are running. So it will be a typical task for me. So, but I will try that. What I can provide you, okay, just wait for today. I will do that. Okay, sir. Sunny, hello. You can please send the PPTs of the Ma'am, I haven't received any PPTs yet. I have requested our resource persons, but I haven't received any. On that day, he was saying that he will be sending, so that will be really grateful for us. YouTube link at least we can get, sir. YouTube link. Yes, you can, if you can possibly send the videos which are there, so we can see that through video and do the activities. That will be also easy for us. Sir, I understand that. I will be sharing that also. Yeah. Thank you very much, Sunny. तो सर मैं एक्चुअली हम लोग सब लोग ये जितने भी टास्क थे सब टास्क तो सब लोग पूरा कर रहे थे, लेकिन किसी का वो केवल लिंक देख करके कह दे रहे थे गलत है ये सही है। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने उतना प्रैक्टिस नहीं किया है उस पे, और अच्छा इतने AI टूल्स उन्होंने बता दिए कि उस एक पे प्रैक्टिस करते गए अब कौन सा चीज कहाँ पे है। अब ये तो मान लीजिए कि हम लिंक में कुछ बना के आपको भेज भी देते हैं तो ठीक नहीं रहा, तो फिर कैसे करेंगे फिर सर? सर ये तो उसकी प्रैक्टिस के ऊपर है। लिंक की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना। लिंक का प्रैक्टिस मैं कैसे कराऊंगा? मैं आपको इसलिए आपका जैसा यहाँ से आया है कि आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप एक बार उसको चला के देख लीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बार शेयर करके देख लीजिए। इफ एवरीथिंग वर्क्स फाइन देन आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ये बेसिक है सर, बेसिक सबमिशन क्राइटेरिया है ये। सो कुशल सर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं एक प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर मैं आपकी बात भी सुन लूं, है ना? तो बेसिक क्राइटेरिया ये होता है सर कि हम लोग इसको एक बार यूज करें। और सर आईसीटी टूल्स, एआई टूल्स का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब तक आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करेंगे वो नहीं बनते। तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल,
आप उसको एक बार चूज कर, आप चेक कर लीजिए, और नहीं होता है तो देन व्हाट द मैक्स आई कैन डू, कि आप मुझे एक बार सेंड कर दीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, मैक्स आई कैन डू दैट। ओके सर, थैंक यू। जी सर। Sir, I have a query. सर जस्ट ऋषभ सर, जस्ट अ मिनट, कुशन सर आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। नहीं, मैं सर ये कह रहा था कि जैसे कल सब बता रहे थे तो कुछ उसमें लिंक हमारे पे टैब पे काम नहीं कर रहे थे, तो वही मैं बार बार कह रहा था, तो बोले थे बाद में कर लेना उसको, लेकिन कुछ बाद में भी ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाए थे। सर क्या नहीं हो पाया था? इस पे नियर पोर्ट पे कुछ बताया था उन्होंने बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग सर के लिए। आपने उसको साथ साथ प्रैक्टिस करा था या नहीं कर पाए थे, आपने मेरे को बताइए। सर एक्चुअली उस रूम की जो लिमिट थी ना वो 50 ही थी, तो सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें अकोमोडेट नहीं हो पाए थे। दो चीजें, एक चीज नियर पॉड पे मैं वीडियो क्रिएशन का आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, और वो आपने प्रैक्टिस करा हुआ है। सर ने आपको वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया था कि आपके 50 इंडिविजुअल वहां पे ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एज ए क्रिएटर आप उसको क्रिएट करके लिंक हमें भेजें। मैं आपको वो सेकेंडरी पार्ट वाले पोर्शन पे नहीं सेकेंडरी वाले पार्ट पोर्शन पे नहीं जाना चाह रहा। हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि आप उसको क्रिएट कर लीजिए। ठीक है सर। और व्हाट एल्स आई कैन, कि मैं आपको ये जो लिंक्स है, वीडियो लिंक्स है, वो भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको कोई सा टूल में डिफिकल्टी आती है तो इसका स्पेसिफिक ट्यूटोरियल भी आई विल फॉरवर्ड यू। ओके Sir, what is the deadline? Date? What मैडम is the date? Sujata ma'am, the dates, everything will be shared in the document. Just wait Okay, for the thank you. document. Okay, thank you. Yeah. Sir, I have a related query to nearpod task. Yeah, sir. Sir, can we upload the sample video of the related topic from the internet, or do we require to create our own video? Sir, the thing is that I don't said कि you need to record a video. You can use a video pre-recorded which is available. You can directly use that. You need not to make the video from scratch. You can use a pre-recorded video, pre-existing video. There we don't have any issue with that part. Just confirm that should be since nearby when you use nearpod na, only the videos which are CC license, those are usually it takes. So you any video with a CC license, you can do that. Right. Thank you, sir. Yeah. Okay. Dr. Vyas, please आपका ये सर जो ब्लूकेट में जो क्विज है सर, तो वो हम मतलब जो आगे नोटपैड में वीडियो है उसके रिलेवेंट नहीं होगे, वो कुछ अलग भी होगे तो चलेंगे ना, मतलब चलेगा, चल सकता है। हाँ मतलब वो ओके वो हमारे हिसाब से कोई भी क्विज हम अटेंड वो उसमें डाल सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। बिल्कुल, it works. यस, थैंक यू सर। ठीक, लोअर सर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कुडोज टू योर एफर्ट्स। काफी एफर्ट लगता है ये सब कराने में, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर इफ यू डोंट माइंड, तो अगर कुछ लोग देखना चाहें तो मैं उनको बता दूं लिंक कैसे शेयर करते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि वहां पे लिंक शेयर करने का इशू आ रहा था। So I'll just take few minutes because आपने we can have that session after this. You can have that thing. Just we can I am available, you are available. You can just demonstrate to our participants कि वो link कैसे create होगा. What I can do अभी के केस में मेरे पास अभी nearpod वाला setup नहीं है, since I am doing something else. So मैं demonstration video I will create और आप बता दीजिए, there are no issues. We can take it after in the later half, in later 15 minutes you can. It's okay then. Yeah. Okay. So else any queries if you have, since we have a volunteer, Dr. Praveen, who has already said that he's going to share how you are going to share the exact video. Sir is going to share with us, so you can attend that. That thing will be today only after around 4:30 we will do that. Meanwhile, if anyone have any queries regarding anything else. Okay, I will just check in the chat box also. Okay. Assignment link I have shared already. Excuse me, sir. Yeah, ma'am. Sir, I have the problem of logging into Nearpod. So I shared my concern yesterday also. I was not able to log in after 11:45. I have checked all the possible solution to it. I've tried with 3 different
email IDs and also on two devices. But I'm not able to log into Nearpod. You can use Edpuzzle. Edpuzzle works exactly same like Nearpod. That tools, both tools are for making interactive videos only. So you can use Edpuzzle. No issues on that note, man. The key criteria is interactive videos, not the tool part. Okay. 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 Thank you, sir. Yeah. Hello, sir. Yes, ma'am. Sir, please share a Word file of assignment and submission link on the WhatsApp group. Ma'am, I have repeated it around thrice or 5 times that I will be sharing it on the WhatsApp group. Just you need to wait since I am right now in a Okay, sir, discussion thank part. you. Yeah, okay, sir. Thank And you. certain update after your suggestions, I will make certain changes or updates in that that very document. That's why I am not sharing that. That is the basic reason I haven't shared it yet. Okay. Any more queries? And again, from my side, I have 3 points to make. One is you need not to be worried on what tool you are using. The criteria is what things you need to do. One thing is you need to make an interactive video, since normal videos, our students will not fall attracted and they will not get involved. So for having that involvement of your students, you need to make interactive videos. And for making those interactive videos, we have a tool. And for asking questions regarding that, you need to use AI part. For that reason, we are telling you to use a prompt. You can use any of the LLM model for creating your quizzes. We need not to be worried on that. The second part is the second question is about gamification. How well you can use your gamification mechanism in your subject area. Your subject area is your core competency. How you use it. So for that very reason, we have used any of the Wayground you can use. You can use so I'm sorry, I have written playground. It is Wayground. Wayground you have to use. Bouquet you can use. Any other tool which you like is good for gamification, which you have been using. You can use that. We don't have any problem regarding the tool usage part. Okay. I think everyone is clear on that note. And third point is that still we are standing on day 3, and I have multiple individuals who are not using their valid screen name. I can see one user who is available right now in the screen, my screen, and he's using he or she, I'm not aware. They are using Zoom user. Sir or ma'am, whoever you are, I will not be able to provide you attendance for that day. Multiple times I have repeated that you need to check your screen name before you join the meeting, and while you join the meeting, then also you need to be very conscious about your screen name. All the individuals who are not using valid screen names, we will not be able to find and provide you with the attendance part. I hope it is clear to everyone. Bhagyalakshmi ma'am, you have any query? I just go through in message. What part you didn't get? Sir, if anyone expert in this assignment area, please give step-by-step instruction. Means it will be helpful for us, sir, for preparing assignment. Madam, I have already the document which I shared. It has all these steps specified. I have already demonstrated you how you can fill your form. So you need what you need that I should make a interactive video, and then you need to step-by-step tutorial for that. Yes, sir. Yes, sir. Ma'am, that will be very tedious for making. So Lohar sir is there. He has volunteered that I will show you how you can share the link. I hope sir is there. He will share that. And if else you have any query, we can use the later half of tomorrow after 5. I can show you the exact. I will have all the equipments, my system with me. So then I will be sharing you how to use Nearpod and create questions, and then submit that thing. Okay, sir. Thank you, sir. Ahmad, I have received a question that, sir, please share the attendance till today if possible.
Sir, I can share the attendance part, but these are just raw files from Zoom. So it will be very difficult for you also. I have no issues. I will be sharing since their compilation require a lot of time. So we are going to share that compiled report, or the raw files I will share by today only. Okay. Any more questions? So I have one thing that today Loharsal will be sharing you how you can just go through your Nearpod, create your link and share your link. And if anyone finds it difficult again, then tomorrow after 3 o'clock or in the lunchtime, I will have that 15-minute session that how you're going to create your assignment or how you're going to exactly do what we are willing you to do. I hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So Lohar sir, I think we can proceed with your demo part right now. And Sure, I'm sir. just modifying the assignment document as per the requirement thing. So I will be Sure, sir. sharing it again. Sure, sir. So again, with your permission, I think I'll have to Please, send a please. request. Earlier it was available. I have sent a request to the admin so that I can share my screen. Sorry, I was sharing my system. That's why you are not able to share that. I have Okay, stopped my now it is Now visible. you Yes. can share. Yeah. Right. So I'll be sharing the whole screen of mine so that I can toggle between windows. I hope my screen is visible now. Yes, sir. Right. So obviously, people were asking about Nearpod. So let's say, when you search for Nearpod, I'm opening this web page. And since I have already logged in, so how I have logged in? So I've used my Gmail account. So maybe I can show you once again. I'll just log out and show you how I have logged in. Right. So there is a login option. And if you have not logged in last time when the session was going on, you can sign up with the help of Google account. And as sir has demonstrated that we should have a separate Google account. In the same way, I generally use a separate Google account to log in into such tools, websites. So now once you log in into this, let's say you're doing it for the first time, go to this three horizontal lines icon. You can find create a new lesson option. I hope I am clearly audible and my screen is visible. Yes, sir. Right. So just click on create a new lesson option. Create a lesson from scratch. Yes, sir. Now, obviously, sir's window was different. When sir was demonstrating, he had a different window. All of you would be having this kind of window. And the thing that I suppose we need to use is blank slide and activities. So just click on this blank slide and activities. And obviously, in this assignment, we have to do only one thing. We have to create an interactive video. So we can scroll down. So can you see a video option in media? Yes, we can see that. Just check this out. And yes. So this video option is getting activated. Now, first thing that we need to do is maybe give a proper name to our lesson. So let's say I would be giving, UGC training Indore, and maybe my identity as PKL. All right. So I have given a name. Now there is a video library which corresponds to the video which are already there in your Nearpod. But as sir demonstrated, we may go to YouTube and then we may use this YouTube safe search option. And again, this is something that I am not aware whether it will only pick up CC BY license videos. But for that matter, you can check the video license later on. For that, I'll just use one. Let's say I'm using a keyword deep learning. Maybe this is my area of interest. I am doing a search, so I'll come across a lot of videos pertaining to this topic.
So let us say I'm picking up one video from this. Wait, just a minute. Everybody's. I think my screen, I need to move this. Okay, I'll need to say save. So once I click on save, I hope this video is visible to you. This video has got added. Now the thing that we need to do is we have to make it interactive. So obviously once we play this video, let's say if this reaches this point, I can add an activity at this particular point in time. So when I am adding an activity, I can add a multiple choice question. I suppose as per assignment, we just need to add multiple choice question. So I can pick up a multiple choice question. I can type my question here, type my options below it. Let's say what is... Sir, could you please go back once? How you added Sure, the activity Sure, by ma'am, using sure. this? Sure, ma'am. Obviously, I'm also not an expert. I learned this tool in the same workshop, but You are then doing I'm very using good some other work, sir. tools. Yeah. So what I need to do is, I suppose you understood now what has happened because I have already created this activity or this lesson. Can you see this lesson on this web page? UGC Training Indoor PKL. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. But then, if you want to see it from the start, I'll have to just, use this create a new lesson thing. And then I have to pick this option. That part was clear, sir. Just a minute. I need to move this window. Yes. So I have to go over here, create a new lesson, create a lesson from scratch. Then as I told you, we have to choose this blank slide and activities. I hope this is clearly audible and visible. Yes, sir. Once I do this, yes. Yes, sir. Once I do this, now this Yes. is the most important part. Scroll down and choose this video option. I hope this is clearly visible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, Yeah. Yeah. So now let me move this. Then I just need to click on this add selected. Okay. Is this okay? Yes, sir. Now after this, it seems pretty straightforward. But then, what you can do is you can choose your grades. You may choose high school. You may choose. Just a minute. You may choose higher ed. So all these options are there. Let's say I am choosing higher ed. Perhaps this will allow me to select those kind of videos. So there is a video library wherein some videos are already inside near a pod. But then if let's say you want to choose YouTube videos, you can choose YouTube video option. Type in your keyword. Let's say artificial intelligence. But we can take video from the library also, no? Yes, ma'am. There is no, I don't think there is any constraint with regards to that in assignment. So let's say I'm using artificial intelligence as a keyword for search, and let me pick up a video. Let's say if I pick up this video, I just need to say save. Right. Now this video is of around 53 minutes. So there is one option that sir taught us. We can trim this video as well. So can you see a trim option on the right hand side, bottom right hand side? Let's say I Yes, want sir. to limit it to 10 minutes. Yeah. So I can scroll it to 10 minutes. Or let's say, let us keep it shorter, with respect to students' attention spans. So let's say I'm keeping it around 7 minutes, 40 seconds. I can say trim. Now the video that will be available for me to create an interactive video is 7 minutes, 40 seconds video. I hope you're able to see this. Now, I can play this, and obviously after reaching a certain point in time, I can add an activity. I hope you're able to see this, because Yes, every yes, time we are Yes, able sir. to see. We are able. I can add an activity Yes, sir. after, let's say, 34 seconds. And this activity which is expected by us is multiple choice questions. So I'll just click on multiple choice questions. I'll just move this ribbon somewhere else.
I can add, let's say, definition. Okay, what is not an AI application? Okay. Let's say ChatGPT. Ion getting on and off based on float type. Some other option, let's say autonomous cars. And let's say we want to say this is our correct option. And we can go back to the video. Can you see this? Now this is where some people were confused when this was being demonstrated. Yes, so I have created a question, and what do I need to do is just say back to the video. Can you see? I've gone back to the video and a question has been added. Can you see? Once I move my cursor to this, a multiple choice question is there. Now this is all about creating a video. I hope you were able to see what I've done. Yes, we are able to see. Sir, this Okay. was done, but if I want to add two questions, let's say. One more question or two questions at the same In the location, same ma'am? No, not at the same location, at a different location. Yeah, let's say, so I moved on, let's say I moved on to this particular point in time. Again, I need to click on add activity and do the same thing. Does that work, ma'am? Were you able to see? Sir, in my screen, it is, I can show it to you. It is showing on each point the same question, same multiple choice question. No. You need to add this question, right? So I'm adding a question now. Okay. So now Okay, you sir. need to add a new question, so on and so forth. So logically it will get added, right? So it is now just showing a blank multiple choice question because I have not added anything. I can edit this. Could you see this, सर ma'am? ये हाँ जाफर सर सर बोलिए. मल्टीपल It's clear, sir. It हाँ is सर very clear. ऐड करने Thank you. जो करेक्ट आंसर होगा वो हाँ किधर हाँ ऐड करना है वो सर वहीं पे ऐड करना है. मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से Then we अगर have मैं to इसको click on एडिट करने save and जा रहा हूँ, exit. हाँ, तो अगर आप देखेंगे, इफ यू आर एबल टू सी दिस, इफ लेट्स से आई आस्क, when was AI term coined? So let's say post 2000, between 1940 to 1950, between 1970 to 2000, something like that. Let's say I want to choose this as a correct answer. आपने देखा सर जफर सर? मैंने यहाँ पे टिक किया है. लेफ्ट हैंड साइड में इट गिव्स यू अ चेक बॉक्स, यू नीड टू टिक द करेक्ट आंसर. ओके सर जो मैंने टिक कर दिया है. और बैक टू वीडियो में कहूंगा तो दिस क्वेश्चन विल गेट एडेड एट दिस न्यू पॉइंट इन टाइम. So can we add more questions to the same location? Same आइडियली time वी frame? शुड बी. आई डोंट नो, मतलब यहाँ पर मैंने ऑब्वियसली मैं भी आपके साथ ही सिखाऊं, तो मैं तो अभी जैसे लेट्स से यहीं पे देखते हैं, कोशिश करते हैं उसी लोकेशन पे मैं हूँ. आई एम सेइंग ऐड एक्टिविटी. मेरे ख्याल में वी कैन ऐड मल्टीपल क्वेश्चंस. सो ये दूसरा क्वेश्चन भी मैं ऐड कर पा रहा हूँ. तो आई थिंक ऑन द सेम लोकेशन वी आर एबल टू ऐड मल्टीपल क्वेश्चंस. कुड यू सी? Okay, right. Okay, now the next thing we need to do is, now this was where many people were faltering. मैं save and exit कर रहा हूँ. I am doing save and exit. यस Okay, exit lesson कर रहा हूँ. I am doing exit lesson. Sorry to the faculty colleagues and seniors from those places who cannot understand Hindi. Pardon me for this, but then I hope you were able to understand whatever was demonstrated. Now let's say if I'm saying save changes to any of these, right? So these are the lessons created by me. Yeah, Bhagya ma'am, are you able to see and follow? Yes, sir. Yeah. So let's say if I'm saving changes to this lesson,
let's say, let us pick up this lesson. Got it. Or for that matter, this lesson wherein I have created an interactive video with at least 2 questions. Got it. Sir, how to share the link of this lesson? Yeah, If I wait. want to share So it. that's where Okay. I'm trying it out. Okay, got it. It is saying there are certain things which are remaining. Let me check out. Maybe I have to say save Sir, and you exit. need to, sir, maybe do, you read the question. लाइब्रेरी में जब आप Yeah. अपना Maybe my questions are not complete, perhaps. sir, might be your questions are not completed, or also you need to rename your the file. Okay. Yeah. Just give a proper name. So might be an issue over that. Okay, maybe I'm doing this. Let's say save and exit. Some of the slides are incomplete and it will be saved as a draft. Okay. Maybe because of that incomplete question only, it is creating a trouble. Exactly, sir. Yeah. But just you go on. This question is completed. This question is completely fine. Just go on the another question. I think I tried to create 2 questions over here, right? So maybe Sir, that is a problem. you need for the all the participants who are asking that, can I add 2 questions at a same point? Yeah. So there are 2, I think. Exactly, sir. Exactly. So the basic criteria for creating a question, you need to make make the basic. You need to understand why we are actually creating these interactive videos. Videos were already available, but we are making specifically videos so that you need to understand that if a person is actually going through the video, he's not just dropping and he's just swapping the video away. He need to look after the video in a very in such a manner that he or she should understand that. So that's why these reflect the points or activities you are adding now. These things are known as reflection points. So usually, what reflection point means, if I add this video, this point at an this reflection point after 50 seconds. So the question will be based on the first 50-second video, then only a question will be made. So that's why multiple questions at the same point usually we don't use that. And when you talk about the acceptancy part, that it will be there or no, it can be done. But you need to be aware that whenever you are an activity is made now, all the it should be completed. So as you saw that when sir has made 2 questions at a same point, it was contradicting. One question was completely made fine, and other was remaining. So you people need to understand that whenever these kind of these are SaaS based tools. Basically, these tools are hosted somewhere else. You are just logging in. So they have a restriction at that point that these points are to be done. So that's why you people find it somewhat difficult. Now, sir, I think this has been done. Please, can you just share the link with you with our participants? Yeah, so I think, sir, after video, I don't know whether it expects something else, because when I have created this thing, right, wherein when sir was demonstrating, so what I did after video, I have added certain more things. So in this case, I will just show the people what happens once your lesson is created. So can you see a teach option? Let's say this is a lesson that was created last time. So there is a teach option when you scroll onto this particular icon. So once you click on this teach icon, it shows you 2 things: live participation and student pays. So I would recommend you people to use student pays, because when sir would be reviewing our links, so ideally it should be student pays. So I'm choosing student pays option. I would say continue. Sir, sorry, my data drip in between. Can you just explain this again? Yeah, so ma'am, once your lesson is created, Right, sir? and when you scroll on to your lesson icon, sorry, you will find a teach Okay. tab. Yes. So once you click on teach tab, my recommendation would be, because sir would be reviewing our submissions, use student paged option. And in student page, okay, launch new student page, because I am doing it
second time in a short period of time. So you will find this window once you go on, moving through the new tabs, you will find this copy link option. Can you see, ma'am, copy link option? Yes, It will sir. give you a link that can be posted. I'll just try and post it in the chat. Let me see if I can, or otherwise I'll have to say stop sharing and then I'll post. So the Sir, link should look like this. I'll just post it. So can you see a pin is equal to some code is there? If your link looks like this, that means this is the valid link. So just one more question. Yes, Once ma'am. we have created the link for student page, can we edit it again in case we want to No, change this something? link cannot be edited because this link is getting created at Okay. that particular point in time. So pin will be different because But every we time. can edit our video and we can create the link again. Yeah, you can edit your lesson. So your Okay, lesson can lesson, be yeah, edited done. and this link can then be, exit. So ideally, ma'am, to be very frank, I have used Wayground a lot, which is quizzes. So whenever I, create a new, let's say I want to execute a quiz every new time, the link changes. So, it might happen that you might think that the same link might work if you are making some modification. Okay. My suggestion would be whenever you're modifying something, recreate the link, and that is what I can suggest, because I have not used Nearpod, but what I know from quizzes or Wayground, whenever we are doing some edit, or for that matter, whenever we are reusing the same quiz, the link or the code changes. So my Sir, suggestion would be to I do like this. to intervene on that. I like to intervene on that. Yes, sir. As you can see, when you go for the teach option, there are two types of thing. One is your live stream. When your participants are sitting in a synchronous mode, when you are yeah. Sir, can you just please go on the teach option? I will just Sure, sir, sure. So, ma'am, there are Live two things. One is your live participation. In this live participation, the thing sir is saying that the link might change every time. So you need so that's why you can see that the joining quiz, the joining link, link, the code which we are talking about now is different. If I change it, it again might get different. So this is how the things work. And once you are sharing for a self-paced, so for self-paced, the link will remain same. You can change your content. It's similarly like your Google Docs. You people must have used Google Docs. If I share a link with you people, then also I have that authority that I can change my stuff at Google Docs. So you can see that. Yes, it is giving 29 days, period. That means that link will remain valid for 29 days. Perhaps, Okay, so 29 days is not the limit of using this app. Yeah, only for that link, perhaps. Okay. Specific link, ma'am, specific link. Done, sir. Thank you. Yeah. I hope सर ये बोलिए प्रवीण सर, ये जो इंदौर डेमो में बना, इसमें टीच का ऑप्शन देगा कि नीचे वाले में देगा, पीकेएल इंदौर में? सर, तो मैं क्या चाहूंगा, नहीं, आप जब टीच पे क्लिक करेंगे, आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, राइट? तो स्टूडेंट पेज, नहीं सर, आपने जो क्रिएट किया है वो इंदौर डेमो है। हाँ, और उसमें टीच का ऑप्शन दे रहा है सर? नहीं दे रहा है उसमें। इसमें नहीं दे रहा है, क्योंकि सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव जस्ट एडेड अ वीडियो हियर, राइट? नाउ दिस इज फॉर ट्रायल एंड एरर फॉर ऑल ऑफ अस. So what you can do is, maybe after a video, include something else, because if you recall, during the session when sir was taking, we have added multiple other things as well. Let's say a PPT was added after a video. So I don't know, maybe we can add one more resource and perhaps save and exit and see if teach option is coming up. So that is something that we need to try ना. अभी मैं वो सब ट्राई नहीं कर रहा हूँ, अगर चाहे तो हम कोशिश कर सकते हैं। हाँ सर, एक बार करिए सर, क्योंकि Yes, ठीक है, मैं देखता हूँ सर। definitely. एडिट, The purpose is to learn the platform. okay, We'll try let us do it, no problem. Let's add new. So let's say I am adding. Sir, sorry to disturb you, but sir, the question is कि why we are going to select some more files? We can complete with video only, na? If we are able to launch or we are able to teach only video, or the content is only video, then why we should add some other things? Yes, logically that makes sense. If we want to only keep an interactive video, no other additional things should be added. But just to give it a try, I'm just trying it out. Loharkar sir, I'll just like to intervene on that.
Just stop this for a while. Just stop this. We'll resolve that query. Just go on the video part only. Just okay. We have added an activity. Just can you just scroll it down for a while? This question has been added. Okay. हाँ, यहाँ पे one question has been added. Added. I So think just edit कुछ ये edit का option दे रहा है. Okay. It's fine. Super fine. Okay. Just go back. Go back to video. Just click on that save and edit. Save and exit. Just a minute, sir. I think there is some blank quiz which is there. Okay. I need to delete this activity. Let me see. Some. I suppose there were two clicks. Two duplicate entries were there. That's why it was. Yeah. So maybe that could be the reason. Let me save and exit and see. Because I also had the same doubt कि पहले कुछ. Now let me hover over this icon. Teach आ गया. So yeah, sir. The only issue was there was twice there was a 2-click. Yeah. For creating an activity, one remained blank. Yeah. Now I'll just see if you people can access this link. Maybe you can try and open it. You also know the answer. ये कैसे हुआ? आपने जो एक ही पॉइंट पे 2 क्वेश्चन क्रिएट कर दिया था इसीलिए ब्लैंक था। एंड वन रिमेन ब्लैंक। हाँ संघर्ष सर, और एक ब्लैंक रह गया था तो उसको पीछे वो ड्राफ्ट में रह गया, तो मे बी इट वाज क्रिएटिंग अ ट्रबल। यस, सो अभी मैं देखो आई एम कॉपिंग दिस लिंक, sorry, I am copying this link and I am I think I'll post it in the chat box. See if you can access the lesson. This is a new lesson, a different lesson. You can give a thumbs up once you are able to access this lesson. And by the time you are doing so, sir, with your permission, Sunny sir, I'll also demonstrate Wayground thing, because people were not able to again share the proper link of Wayground. No issue, sir. You can do that. Participants, sir has demonstrated perfectly fine. The links sir has shared is perfectly fine working. So just a suggestion from my side. Whenever you are using these kind of tools now, these are definitely these kind of tools are hit and trial tools. You need to try it for once or twice, 1, 2, 3 times. In none of the workshop or in a training session, we can completely cover a tool. You need to go through that tool and you need to practice it out. Once you practice it out now, whenever you practice, you will find something new. Okay, this thing has been newly added, and I also like to tell you that as these products which you are using, these products are on a continuous upgrade. So many times this might happen that the thing which we have taught a day or after 2, there might be an update for that app, and the entire UI of that app might get changed. So that's why it's a humble request from all that you need to work on the basic criteria. Yes, Sadhana ma'am, please mute yourself. Basic criteria. Sadhana ma'am, please mute yourself. Sir, for the sharing link part, what need to be selected, live stream or student based? Sir, student based. You need, Lord sir, let me answer that. Sir, there are 2 mechanisms. You need to understand that why those 2 mechanisms are there. One is live stream, or sir, can you just hover on that teach icon? Sure. Just a minute. I'll just teach. Live participation. That specifically means that I am sitting over here and you people are sitting over there. So though we are, this is for synchronous mode. There are 2 types of teaching in online mechanism. One is synchronous mode, in which you and me are. So we are all sitting in a single unified platform, which is Zoom. And if right now I wish to have a quiz of your people, so that you can go through my interactive video and answer those queries. So that's why I will be using live participation. Else,
Student page means you and the student are not in synchronous medium. You just send a link, and as per student's time zone, as per his or her comfort, as per his or her availability, that individual is trying to access that quiz. So that's why we need to use the second part. And as you will be submitting the link to us, and our evaluator will be going through that link, you will not be in synchronous. So that's why the synchronous part will not be there. So that's why instead of a live participation, you need to share the student page link. I hope it is clearly understandable to everyone. Yeah, thank you, sir, for the clarification. Yes, Yes, sir. Yes. So moving on, there is another, Wayground is something wherein we can also create our assessments. Yes, sir. One more point, which I wanted to convey to all the participants, because this was not conveyed earlier. So same like, what we can do in Nearpod, same facility is available in Wayground as well. So whenever we are, let's say, when you sign in Wayground, जब आप Wayground में sign in करते हैं, so maybe I'll do it, from the scratch for you all. So let's say I am searching for Wayground. Its earlier name was Quizzes. Now it is Wayground. So when you open this window, right? So obviously you will find this create option in front of you, and if you create multiple quizzes, you will have all those quizzes stored in my library. And many of you are asking the limit of how many quizzes we can create, or how many tools how many assessments we can create. So there is a limit of 20 in the free account. So when you go to my library, as you can see, let me open this Sorry my to library. interrupt. If we create, let's say, 15 or 10 quizzes, will they be available throughout the time, or like? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Throughout the time. Okay. It is actually, they say it is free for faculties or teachers. So they Okay, are giving us a facility like this. So can you see, I have multiple quizzes created over here. And whenever I want to create a new one, I will delete the earlier one. So let's say beyond 20, you can delete, so on and so forth. Now, let's say if I want to, now this quiz is created, most of you would recall, many of you have created quiz at that point in time, but you were not able to share a link. So whenever a quiz is created, whenever it is created, once you publish, you will be able to play the quiz. Or for that matter, if you don't want to play it at that point in time, just go to my library. You will be able to see the list of quizzes that you have created. For that matter, if let's say I want to share this link with the participants exploring generative AI application. So what I can do, I can go to play and start now or assign. There are two options, start now or assign. Assign is, again, as sir has mentioned, it can be done at a self-paced mode. And if you want to start now, you can just click on start now. And it can be again student paced. So again, you choose this option only, student paced option. Start now, use student paced option, click on student paced. And these are certain defaults that you can keep, and choose the classic mode. And there are certain defaults which you can keep as they are. Just go to start. So you'll find the same code and link that sir was sharing with us on that particular day. But what we are supposed to do in the assignment, we have to go to this copy link option. And again, in front of you, I'll share it in the chat, and you will see the nature of this link. So again, there is a code at the end of the link. Can you see? So if So this this is is a the small thing that you want, suggestion. In the Google form, there is no this code wala section nahi hai. If we can add that, it will help the instructor also to see this. We can put the link. Yes, sir. Let me complete. Ideally, this is expected, ma'am. I suppose this is expected in the form of submission, right? So once you click on this, you'll be able to get, people are clicking on this and they're, coming inside as a participant, which is not required today, but that is how all these things work. Let me share my screen again. Yeah. Gupta ma'am, I was just trying to say that these kind of code options is just for that reason. If you are sitting in an environment where the individuals are not directly, you are not directly connected with that individual, you cannot see the link directly.
That's why what I can say कि आप जाइए सब ये जो हमारा quiz myquiz.com है आप इस पे directly जाइए और directly put on my code. Then Okay, in sir. that code is important. Else, if a link gets shared, nothing is better than that link. Yes. Okay, sir. Got it. So let's say you're displaying it in the class, you won't be sharing it on student mobile. If you're not using an LMS, wherein students are directly connected I at think, that sir, point in this time. is just like Kahoot. Kahoot also Yeah, works Kahoot like also works like this. It is a Okay. gamified quizzing platform. Okay. But this has a lot of many facilities, ma'am. You can explore. I think you were asking about Mentimeter that day. So Mentimeter is also there. Yes, sir. Mentimeter is similar to I this, but then frequently it has a use lot more Mentimeter. facilities. Yes. Yes. Done, Praveen sir. sir, I have one question. Yes, ma'am. As I have joined your link, I can see my name is displayed here, right? And there is written waiting for the host to start. Yes. So it Yes. means when you start quiz, then I will be able to answer. Yes. So it's like live activity. Yeah. Students are not synchronized. Still, it is commanded by you. You have to monitor it on live base. Yes, ma'am. So there was one more option when I had clicked on play, if you recall. Let me. Yes, sir. Suppose one question he answered, then you have to put another question immediately. Means or after the timer, then only No, he ma'am. will. So if it is teacher led, there are two options, right? Teacher led and student paced. So in student paced, I need not have to put the second question. Student can answer on their own, and it will again depend on the time limit, right? If I have given 30 seconds to a particular question, the question will be Okay. in front of the student for 30 seconds. And So it once will come the student automatically. answers, yeah, that way it will work. Okay. We will practice it. I can also share it with the teachers. They can copy the same quiz and they can run it. Ma'am, All those anytime these kind of tools you are using now, it will be available in a student pays mechanism thing. So whenever these kind of stuff are there, you need to always go in a asynchronous mode only. So student pays will be the criteria for sharing. I will add that thing also in the on our assignment details. I will be again sharing that, and how you are going to share. I have those issues with me. I will be updating that document and will be sharing that how you are going to share it with us. Okay, sir. Thank you. Okay, ma'am, just one more thing, before I end this. So can you see I have used this thing, wherein I can just copy this joining link and not have to run it now. Let me see if you people are able to start the quiz without me starting the quiz. Because I am doing an assignment now. This is like an assignment thing. Let me know if you're able to access the quiz. With this link, because this is like an assignment. I think you have started, right? It is working. It is working. I think you people are able to access this, right? Like an assignment? Yes. Yes, sir. Great, then. Perhaps this is something that might be required in the assignment submission. I will add that, sir. I was by default I was expecting that you people are aware, so I will specify that you need to share the link in that student pays mode only. I will be Asynchronous mode. Asynchronous mode. I will be sharing that. So participants, whenever you are using this kind of tools, you need to identify basic methodology on which these tools work. Simply, there will be a login. Simply there will be a sign up. You need to do the sign up part. Once the sign up is done, you need to go through that UI fully. Since these tools are comparatively very intuitive, so by default they will be they would be highlighting the options that these highlight option is to be clicked, and you need to follow these options. Then I will just like to give an example of this quizzes only.
I haven't used it in recent times. I have used it previously, and as on Bayground, and now it is called Bayground. So the video part has been recently added. Previously, the video part was not available. So it is an update. I think it's a recent update only. So this thing will happen with each and every tool. Whenever you use a tool, there will be updates for that. So extensive training or what do you say, tutorial for a specific part might not be available. You cannot find that. But if you understand the basic methodology of using a tool now, that will be very helpful for you. Since these tools are, you'll say, every we have multiple n number of tools. There's a website known as futurepedia.io. If you go through that website, futurepedia.io, in that every day around 100 or 200 new tools are added. That is specifically an aggregator website where if I develop an AI tool, so I can list it over there. So from that list, you can find n number of tools. So whatever your criteria is, whatever your problem is, you can have that tool for that reason. So you need to be not worried on the specific usage of the points or the utilities. You need to know how actually this general purposely these tools are working and exactly what is the need for using those tools. I hope these two things are clarified by the demonstration part. Then also, if you have any queries, any issue regarding the usage of that, tomorrow evening also we can have half an hour. In half an hour, if you are having some problem that some of our resource of our participant, she was facing that she was not able to log into Nearport. So what we will be doing, we will be taking your screen share. You can just do your screen share, and we can check out that if a problem is there, and if it is resolvable at our end, we are going to resolve it. I hope this will work for everyone. Okay. Tomorrow also we can have, and tomorrow after this meeting for 10-15 minutes we can do that. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. All right, sir. Thank you for the opportunity. Thank you so much, sir. Thank you so much. Right, today something happened to my system. It is giving a lot of glitches. As you can see, I am not able to open my camera, and I didn't have my laptop, my alternative machine today available with me. That's why I have requested you to do the No things. problem, sir. Thank you so much for that. Thank you. That, and all the participants, thank you so much for joining us. Was there for tomorrow's link we'll be sharing on the WhatsApp group only. And the assignment details I have already shared, but I will revoke that and again be changing the contents according to your queries right now. I will be updating all the things, how you're going to submit your stuff, and then re-uploading the assignment details. And as you have gone through that, the submission deadline is 6th of January, 6th of June by 5 p.m. You can submit that. Okay, so thank you so much, everyone. We are going to meet tomorrow exactly at 10 o'clock. Thank you so much. Sure, sir. Thank you, sir. Very, very Thank thank you. you. अच्छे से समझाया।